back for the second match of this prestigious BPL 2023 Baithurli Premier League 2023, which is organized in this most beautiful Panjarail cricket ground here in Kudupu. And match number 2 will going to start here. And the news here is that after winning the toss, captain of team Panjarail 11 elected to field opening batters of Dream 11 Chowki came into middle. Lokesh as well as Praveen are the two opening batters will going to start the innings, open innings for Dream 11 Chowki. And just coming back to the weather condition, of course, it's not that kind of condition what we are expecting when in a city area. But here in this particular cricket ground, we are having a temperature which is just recorded 25 degrees Celsius. It's not hot. It's it's a cool weather condition in the morning here. And but time progresses, it's going to be a little bit hot, but I don't think it's going to be that much of hot because of the nature's beauty, the ground which is covered with beautiful greeneries in this very beautiful Panjarail cricket ground here in Kudupu. And umpires for this match, umpire Jayant will going to join. One more fantastic all-rounder, the wicketkeeper batsman, along with him Purushottam at strikers and square leg. And umpire just suggesting that to note the time, it's 9:05. 9:05 is the time. And the first ball and wicketkeeper behind the stump fields. The striker, Loki the striker. So next one, which is a dotted delivery, again nicely place it down to mid-on region for a single. With that single, Loki is off the mark, and first run from the bat, and scoreboard is 2 on the board. 2. Ball is just missing the bat. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. The very good start there from Sunil. So one more dotted delivery. Scoreboard remains on 3 on the board. The one in the form of by, one in the form of wide, one in the form of the bat. Altogether 3 runs scored in this particular over. And now it's a little bit conversation between Lokesh and Praveen. And Praveen will going to take the strike. Again, nothing much to do with the delivery, which is going further away. No ball call by umpire. It's a huge one. Ball pitched outside the pitch, so that as far as rules and regulation of the cricket is concerned, the first impact of the ball, which is outside the pitch, means it's a no ball. Free hit delivery. Batsman coming down the track using his feet. Obvious that is the call, but you can't get the wicket unless the run out. But the out will going to be a not out because of that free hit delivery for the batters. One more single. With that single, scoreboard numbers on to 4 on the board without loss of any wicket. Sunil again, right arm over the wicket, delivers. This time leaning into that one, pushing the ball, half a push, half a drive. Just wanted to play that one on the front foot in the irrigation. Ball didn't carry to that fielder at backward point. One more single. So after completion of first over, it's a good over there from Sunil. Just considering the fact that he bowled a power play over. So in this most beautiful and beautiful cricket ground, Panjarail cricket ground, we are witnessing the day number 1 of this prestigious BPL
And we are having some fantastic awards for this cricket tournament. The winners will going to get rupees 33,333 along with the attractive BPL trophy. The first runner-up will going to get 22,222 along with the trophy. This time, a first ball batsman using his feet. Gentle leg spin bowler has been introduced. Little bit short base delivery. Batsman Loki coming down the track. Try to use his feet. This time going for the extra run in the form of overthrow. The appeal for run out. Umpire says it's not out. The batsman out is a shot of his crease. He's short of his crease and one first wicket is back into pavilion of Dream 11 Chowki. Have lost their first wicket. At the run a score of 7. Luke is very much interested for the run, but his partner Praveen is not interested. But there is a run there, but Praveen is not really knowing that. And he responded a little bit late, so that a little bit is short of his crease and pays the penalty for that. Ritik is a new batsman in as a number 3 batter. Is in non-strikers end and the bowler Steven. Balls lofted at one, but not quite enough. Not quite enough to clear the field at Cow Point region. The batsman is back into pavilion. Is a back 2 wickets here. And Steven strikes with a gentle leg spin deliveries. The batsman going for the mighty stroke on the extra cover region, but not quite getting that distance what he's looking for. Dream 11 have lost their wicket number 2 at the score of 7. So new batsman in is Shashank with the jersey number 18. He'll go into face his first delivery. Steven. Right arm over wicket balls. This time going for the off drive. Beautiful delivery there from Steven. He's just getting his line and length. After that, little bit slower one he started with. Now it's bowled a quicker one outside the line of off time. Flighted delivery. Batsman completely missed out. Steven again. Right arm over wicket. Drives that one down to deep long on region for a single. Not more than a single here. With that single score, Namuzan to 8 on the board for the loss of 2 wicket. Dream 11, of course, has got a little bit of dream that they wanted to start this BPL with the victory. And but here is Panjirail. Definitely, they will not going to give this match very easily for the opposition. So far, it's a good going from the bowling department of Panjirail. This time, lofted at what a mighty stroke. That was the first sixer of this tournament. And batsman Ritik is a tall man. He plays it beautifully down to deep between fine leg and square leg. Absolutely right from the middle of the bat. And it's a huge six, absolutely huge one. Ball is disappear into that, of course, deep square leg region for many a miles. Magnificent struck there from Ritik, and scoreboard jumps into 15 on the board for the loss of 2 wicket. This time again drives that one down to deep long on region, not more than a single there. And it's one big shot will going to change the picture of this over, because the Steven is bowled really well, but one delivery which is Steven is bowled a short pitch delivery for the batter, and after completion of over number 2, it's 15 on the board. 15 for the loss of 2 wicket. They're going exactly 7.5 runs per over. (15) in the sense 9 runs which is came from that over of Steven. Arshit brought into attack. Two very tall Ritik is looking so good.
The intention is very clear that you need to take the advantage of that dimension of this cricket ground. Nice looking drive there from Ratik. Technical cricketing stroke in that occasion because the all ball is just around the mid off and just outside the line of off stump, and batsman off the front foot plays it down to mid off region for a single. With that single, Skobar Namuzan to 16 on the board for the loss of 2 wicket in the over number. Second is in progress. Third is in progress. Let me correction. Arshit bowls. Batsman drives that one down to cover point region for a single. Before that, mid-off fielder to run across is left to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. So with that single, Skobar Namuzan to 17 on the board. 17 for the loss of 2 wickets. Good going here for Dream 11. This time paddled that one, appeal for leg before wicket, but umpire rightly so. It's not interested because it's from the bat, not from the pad. And one more single is added total. With that single, Skobar Namuzan to 18 on the board with for the loss of 2 wicket. Again now going for the quick single, chance of run out, throw which is not quite enough. The throw which is not quick enough as well as not accurate enough to make this run out because the Ritik is always looks like is struggling to reach his home. If it is a right direct hit or it is a good throw, it might be end of the innings of Ritik. And Skobar Namuzan to 19 on the board. This time going for the sweep shot, missed it completely. A good line which is bowled there by the bowler Arshit in the occasion. And there is no chance at all for any run. Arshit again bowls with a short run off. Right arm over the wicket delivers to Ratik. Ratik this time lofted that one down to deep long off very safely. With that single, Skobar Namuzan to 20 on the board. Very decent over from Arshit. He bowled very well, tidy over, especially for team Panjirail, the kind of over which is required. After that, a little bit expensive over, which is the second over. So after completion of over number 3, searching for the right track, and Dream 11 Chowki are 20 for the loss of 2 wicket. Now last over remaining. Last over remaining. In the innings of Dream 11 Chowki, and wait and see how Ritik will going to take this last over. This time looks like it's going to be a full toss, but batsman almost looks like he's bending down. Looks like umpire just oh my goodness, I think is a non-strikers and the stumps which is uprooted. That means a no ball. As per the rules and regulation of cricket is concerned, when if the the bowler hits the stumps, it's going to be a no ball. And some players not aware of that because of course that was a new rules. Before it's a dead ball, umpire calling it's a dead ball, but as for the new rules and regulation of cricket is concerned, if a bowler hits a non-striker stumps, it's going to be a no ball, and umpire rightly so called it's no ball, so that free hit delivery for Ritik is a golden opportunity for him to take the advantage of that free hit delivery. Sachin to Ratik. Ratik going for the mighty stroke, but not quite getting hold of that properly. Charging for the second. In comes the throw. Chance of run out, and he's gone. Of course, Ritik is desperately wanted to back into strike. He wanted to retain the strike. That was charging for the second run. Even it's a tough one for the second, but they wanted to get the second run, and they wanted the second run, but I think they couldn't manage to complete that second run now. It's a 22 for the loss of 2 wickets. Next match, Shining Boys Jyotinagar takes on Samrat United. So that I request all the players of both the teams, kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. This time again a lovely delivery, absolutely perfect one, and Ritik is completely missed out the delivery. Wicketkeeper behind the stump completed the job in a fraction of a second, but not getting the result in the favour because Ritik's back foot is safe in the crease. Ali Daimadi, Shining Boys, Jyotinagar Ago,
ಸಮರ್ಥ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್, ಶೈನಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. The next match will be played between these two teams. So here is again Sachin balls to Ritik. Ritik drives that one. They're going for the quick single. Direct hit. But umpire rightly so. It's not out. And chance of run out in the non-seconds end. And wicket. One more wicket is back into pavilion. And Gautam is the batter. A little bit unlucky without facing a single delivery is back into pavilion. Quite understandable. It's the last over. The batsmen have to look for the runs. So by doing that, wickets are tumbling. Dhanush is the new batter in, walking towards the middle. So runs which is 23. And the last over is in progress. Sachin round the wicket. Balls, oh, that was far outside the line of off-time. Batsman going for the mighty stroke. Short pitch delivery. Ritik wanted to swing that one, but unfortunately for the batsman, ball is going further outside the line of off-stump, and wide signal. The score numbers on to 24 on the board. Sachin again. Pass umpire. Round the wicket. Drives that one. But protection has been given in the deep so that he has to settle for the single before the fielder from long off to fix that one. Ample time for the batter to complete the single. So with that single, score moves on to 25. Quarter century coming up. 25. There's some going for the quick single. Chance of run out in the non-strikers and it's gone. One more wicket is back into pavilion and a lot of run outs second place because it's the last over is in progress and last delivery remaining. So new batsman in, jersey number 21. Sainija, Talaja, this time going for the drive and again it's deflected from the leg. So the leg by call by umpire. That's it. Looks like going for the second and chance of run out and that's all. The one run and a wicket in the last ball. So the total score is at 26 and they set a target of 27 to win the match for team Panjirail. And wait and see how Panjirail batter will going to give the reply against team Dream 11 Chowki. It's going to be a very fantastic match. Of course, just we're talking about this particular tournament, BPL Baithurli Premier League 2023 Season 3, which is proudly organized in this prestigious cricket tournament under the leadership of Santosh Kudupu and all the organizing committee. You've done a great job to organizing such a fantastic cricket tournament in this most beautiful Panjirail cricket ground. And under the blessing of Sri Kudupu Ananta Padmanabh as well as Sri Kudupu Bedra Prasanna and under the blessing of all the gods, we are into the third match of the day number 1 and that match will go into commence between Shining Boys Jyoti Nagar versus Samrat United. The news here is that captain of Samrat United won the toss and they elected to field first. And before the innings will go into start of Shining Boys Jyoti Nagar, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश. So 27 the target in 4 overs. For Jay Panjirel said by Dream 11 Choki at batted first, they managed to score 26 runs in their stipulated 4 overs by Dream 11 Choki, and now the target for Jay Panjirel is 27. They have to score for victory with a required run rate of exactly 6.75 runs per over with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. Meantime, their innings are going to begin. Innings is going to begin, and openers are walking towards to the middle. Kishore and Sachin, the opener, and the bowler Shashank will start the fresh proceedings, and the first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार शशांक और 27 रनों का लक्ष्य इस वक्त जय पंजीरेल के लिए इस वक्त रखा है. तो टाइमिंग्स इस वक्त नोट किया जाए और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज शशांक इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज किशोर सचिन माफ कीजिए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ओवर की पहली गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा. बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद जब तक शॉर्ट क्षेत्र पर पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. 1 रन 90 रन के नुकसान के गेंदबाज शशांक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट किशोर के लिए. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है. किशोर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया स्ट्रेट ओवर द बॉलर सेट डाउन टू लॉन मिड ऑन. इन फैक्ट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. It's 3 without loss in the first over. They desperately have to make a strong start if they have to reach the target of 27 in 4 overs for Team Panjirel. और गेंदबाज की गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ. गेंद जाते हुए इनटू द गैप एज वेल. एक्स्ट्रा कवर के दिशा में गेंद का पीछा करते हुए फील्डर, और जब तक गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद लॉस्ट इट स्पीड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, बल्लेबाज फील्डर के द्वारा फील्ड और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. गेंदबाज की ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट. बेहतर गेंद थी ऑफ स्टंप पर आते हुए विकेट कीपर चूके कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और सीधे शॉर्ट मैन फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. बीपीएल 2023 बैतुरली प्रीमियर लीग 2023 का दूसरा मैच यहाँ पर प्रगति पर. गेंदबाज शशांक का दाहिना हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए शॉर्ट फाइन लेग फील्डर चूके और रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज. 1 रन इस बीच पूरा कर चुके हैं. 1+1. 2 runs added to the total in the face of wide, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के. गेंदबाज शशांक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में. कांट फिनिश द गैप एज वेल, एंड मिड ऑफ फील्डर कलेक्टेड द बॉल. रन से स्पीच गेंद को बल्लेबाज को नहीं मिला. अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी. लास्ट बॉल नाउ रिमाइनिंग इन दिस ओवर. शशांक गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला एक्स्ट्रा कवर के दिशा में. गेंद का पीछा करते हुए फील्डर, और जब तक गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर फील्ड और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करेगा. जस्ट अप्लाइड दैट वन स्क्वायर ऑफ द विकेट, जस्ट लॉफ्टेड दैट वन क्लियरिंग द इनफील्ड, and because of that he's got a couple runs for that stroke. First over completed, and after first over pretty good start for Team Jay Panjirel. In fact, it's a 9 without loss. They scored chasing the victory target of 27 in 4 overs. तो जहां तक सवाल है बचे हुए गेंदों का, तो 18 गेंदें बाकी और 18 रन और चाहिए विजय के लिए. 18 balls remaining in their innings, and now 18 more runs now they have to score for victory. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज ऋतिक, और नया ओवर उनकी पारी में शुरू होता हुआ सामना इस वक्त करने के लिए तैयार. किशोर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. 18 गेंदों पर 18 रन बनाने. ऋतिक की गेंद, ये गेंद बैकफुट पर गई. गेंद को खेला इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में. नॉट मोर देन अ सिंगल, एंड a slight bit of fumble there. In fact, they come back for the second. They come back for the second. This is an absolutely fantastic running between the wicket. वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई मिड ऑफ पर फील्डर द्वारा, और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने तेजी के साथ दूसरा रन चुरा लिया. यहाँ पर
बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और इन 2 रनों की बदौलत स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 11 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज की ओर के अगली गेंद दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, हल्के से गेंद को पुश किया, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए और 1 रन इस बीच बल्लेबाज पूर्ण कर चुका। मैदान पर जो धुंध ड्यू इस वक्त मौजूद है, इसकी वजह से गेंद ज्यादा तेजी के साथ ट्रैवल इस वक्त नहीं कर रही है और इस बात को जानते हुए बल्लेबाज यहां पर सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए गैप पर गेंद को भेजकर इस वक्त स्ट्राइक रोटेट करते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद फुल टॉस, पुल दैट वन बट कांट फाइंड द गैप एज वेल। ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, वन बाउंस कलेक्टेड बाय द फील्डर जस्ट इनसाइड द फेंस और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 13 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर गेंदबाज ऋतिक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद और इस बार बल्लेबाज की पारी समाप्त। गेंद को पुश करके रन चुराना चाहता, क्रीज से आगे निकल चुकी थी और विकेट कीपर ने काम तमाम विकेटों के पीछे किया। स्टंपिंग की बदौलत ये विकेट गिर चुका है और 13 रनों पर पहला विकेट खो चुका है यहाँ पर जय पंजरे। It's 13 for the loss of 1 wicket in the over number. Second is progressing here for the 14 balls left in overall calculation in their innings and 14 more runs now they have to score for victory. और किशोर आउट होने के बाद एक अच्छी पारी खेलने के बाद पवेलियन वापस लौटते हुए और पहला विकेट यहां पर गिर चुका है 14 रनों के ऊपर। It's 14 for the loss of 1 wicket. New batsman Sandeep, the number 3 batsman, is now comes out to the middle. 13 the score in fact and 14 runs more required in remaining 14 deliveries. और संदीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज ये गेंद इस बार हल्के से गेंद के स्ट्रोक को चेक किया और एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को लपक लिया गया। इस वक्त अपने स्ट्रोक को रोक लिया था, चेक किया था अंतिम क्षण में और आखिरकार गेंद हवा में उछले और एक बेहतर क्या शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर ने आगे की ओर आकर लपका। तो इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। 13 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार ऋतिक और नए बल्लेबाज प्रशांत नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और ऋतिक हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त तैयार और देखना यह है कि वो अपना हैट्रिक परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं। फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए और बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ऋतिक की गेंदों का दाहिने हाथ ऊपर द विकेट हैट्रिक गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, चूंकि गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। बेहतर ओवर की समाप्ति, जस्ट 4 रन्स कंसीडर्ड बाय द बॉलर ऋतिक इन दिस ओवर। सो 2 overs completed, 13 runs on the board, 2 wickets lost and 14 more runs now they have to score for victory in remaining 12 balls. With a required run rate of exactly 7 runs per over. Meantime, the next match, Shining Boys Jyoti Nagara will going to face Samrat United in the next match, and because of that, I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. Match number 2 of BPL Baithurli Premier League is now progressing here, and a fantastic live coverage giving by the team of Bedra Media under the great leadership of Mr. Irfan, and this tournament is now progressing along nicely. Third over starts. गौतम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद पैरों पर गेंद टकराई, अपील नकार दिया, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 13 to get now from remaining 11 balls. Still the match is now equally balanced और गेंदबाज ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गौतम प्रशांत के लिए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, ठीक तरह से मोड़ नहीं पाए, डॉट गेंद और 13 रन 13 रन बनाने हैं, 10 गेंदें बाकी, 13 रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 10 बॉल्स। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से डॉट गेंद, कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स एंड नाउ द इक्वेशन सीम्स टू बी स्टिफर अ लिटिल बिट फॉर जय पंजरेल। 13 रिक्वायर्ड ऑफ 9 बॉल्स,
गेंदबाज गौतम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, एक बार फिर से डॉट गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस continuing here from Gautam. 3 consecutive dot balls and now 13 required of 8 deliveries. The equation seems to be stiffer now. तो गौतम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फ्लाइट हेड ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद जाती हुई, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन बल्लेबाज पूर्ण नहीं, यहां पर अंतिम क्षण में देखना यह है कि दूसरा रन वो पूर्ण कर चुके हैं यहां पर, और 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 16 रन बन चुके हैं, 11 रिक्वायर्ड एंड 7 बॉल्स टू गो। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, कुल मिलाकर 7 गेंदें उनकी पारी में बाकी, 11 रन बनाने हैं इन बचे हुए 7 गेंदों में। और गौतम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज गौतम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद स्टंप्स पर टकरा चुकी है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। तो बेहतरीन ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है गौतम का, जिसमें सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए, और अब अंतिम ओवर बाकी, 11 रन चाहिए विजय के लिए, 11 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग लास्ट 60 डिलीवरीज, दैट मींस इन रिमेनिंग लास्ट ओवर। और यहां पर प्रशांत आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हुए, दक्षित नए बल्लेबाज के रूप में, और संतोष गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए। निस्संदेह कम से कम एक चौके या छक्के की इस वक्त सख्त जरूरत टीम पंजीरेल को इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। 11 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट ओवर, और अपनी ओर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर। 1+1 इनफैक्ट 9 रन रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 6 बॉल्स। और संतोष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद ड्राइव किया लंबॉट की दिशा में, फील्डर काफी पीछे मौजूद, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, 1 ही रन से बल्लेबाज संतुष्ट इस वक्त, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 8 रन चाहिए विजय के लिए, 5 गेंदें बाकी, गेंदबाज यह गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन दिस टाइम फ्रॉम द बॉलर, एंड 8 runs required of 4 deliveries. So the equal battle is now continuing here. संतोष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर डाइविंग स्टॉप लगाने के बावजूद गेंद को रोक नहीं पाए, वाइड का इशारा। 1+1 2 runs added, 21 6 required in remaining 4 balls. और संतोष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद बेहतरीन और शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन मिलेगा। इस बीच गेंद को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाया विकेटों के पीछे विकेट कीपर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का बाई के रूप में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर, 3 गेंदें बाकी, 5 रन चाहिए, 5 टू गेट फ्रॉम 3 डिलीवरीज। इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट फील्डर काफी पीछे, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और थ्रो पहुंचा, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज दूसरा रन प्राप्त कर चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर, 3 रन विजय के लिए चाहिए, 2 गेंदें बाकी, 2 balls and 3 runs. What a fantastic match is now progressing here. The equal battle is now continuing. और दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और संतोष इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए संतोष सामना इस वक्त करने के लिए तैयार।
सचिन जो कि एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए 3 ऑफ 2 डिलीवरीज. Here we go. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज की ओर की अगली गेंद. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर. गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर वाइड. एंड नाउ विद दिस वाइड 2 runs the scores are now leveled. Just a single run required of remaining last 2 deliveries. 9 runs, in fact 10 runs scored already in this over. और अंतिम रन इस वक्त चाहिए. 2 गेंदें बाकी. लक्ष्य इस वक्त आसान होता हुआ जय पंजीरेल के लिए. इस बार लेग स्टंप से बाहर फाइन लेग पर वाइड. और इसी के साथ जय पंजीरेल आर won the match. Thrilling victory for them against Dream 11 Chowki, the second match of DPL 2023, and with that thrilling victory they back the complete points. तो बेहतरीन मैच यहाँ पर समाप्त हो चुका जिसमें जय पंजीरेल ने ड्रीम 11 चौकी को रोमांचक तरीके से हराया सिर्फ 2 गेंदें बाकी रखते हुए. और इस विजय के साथ वो परिपूर्ण अंक यहां पर प्राप्त कर चुके हैं. अगला मैच शाइनिंग बॉयज ज्योति नगर विल टेक्स ओवर सम्राट यूनाइटेड, एंड दैट मैच इज नॉट कमिंग अप लाउड एक्सक्लूसिवली राइट इन फ्रंट ऑफ यू. टिल देन वेटिंग शॉर्ट ब्रेक, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब अगले मैच की शुरुआत होगी. यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी छोटे से ब्रेक के बाद. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. So here is the time to announce the man of the match. Of course, every match there will be a man of the match for this BPL. The first match, man of the match, and the first match which is played between Tatvamasi versus team Temple Square, and Temple Square, I think they are won the match. Little bit correction. Tatvamasi has won the match, and the man of the match which is goes to the all-round performance by Nagendra. Nagendra one was scored valuable 7 runs and he bowled one very good over where he picked up 1 wicket as well. So that I request Nagendra, please come and collect your man of the match award in our presentation dice from our chief guest. ದಯವಿಟ್ಟು ತತ್ವಮಸಿ ತಂಡದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚೌಕಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ So man of the match of the second match, which is goes to the player Sachin of team Jai Panjirel. Sachin of Jai Panjirel will going to get the man of the match award for his all-round performance. And match number 3 will going to start. Umpire Jayant signaling towards our scorer to note the time. It's 9:43, which is the time, and they have to finish their
4 overs within 18 minutes. And first ball looking for reverse sweep. Leg by call by umpire. One more addition to total. With that leg by, they started their journey. And the first run comes up for team Shining Boys. Jyotinagar, they got their first run in the form of extra. One without loss of any wicket. Bowler Praveen, right arm over the wicket bounce. This time, top edge. It's going to be opportunity for the fielder at the backward point. Making no mistake at all. Extra bounce in that occasion. The batsman couldn't manage to tackle that extra bounce there from Praveen. And Vishal is back into pavilion. Is out for duck. Charan is back into pavilion. First ball and backward point fielder making no mistake at all. The wicket number first is back into pavilion. So Praveen has got a very important breakthrough as he got some lucky delivery which is got extra bounce. The batsman going for the drive but couldn't manage to control that stroke because of that extra bounce. New batsman in is Dikshit with the jersey number 11 will go into face Praveen. Right arm over the wicket balls. Praveen this time nicely plays it down to backward point region for a single. And they're trying for the run out. And not a mess done. Score moves on to 2 on the board. And batter Dikshit is off the mark with a single. That brought Vishal into strike now. 2 for the loss of 1 wicket. Praveen. Right arm over the wicket balls. Far away outside the line of off stump. It's going to be a punishable from umpire. Jayant has got no hesitation to call that wide. One more extra. Score moves on to 3 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. For the late comers, you're watching match number 3 of the day number 1 of this prestigious Baithurli Premier League 2023 season 3 is in progress. Appeal for leg before wicket. Loud FL but ball just going down the leg stump, going to miss the leg stump and leg by call by umpire. And with that extra score moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket in the over number the first is in progress. And looks like it's not a bright sunny morning. Absolutely the sun is just playing with the hide and seek with the clouds, but it's a fantastic weather condition here in Panjirail cricket ground here in Kudupu. Next ball outside the line of off time but well within the reach of the batter. Batter completely missed out delivery. Off stop by wicket keeper behind the stump and there is no question at all for any run. Score remains on 4 without for the loss of 1 wicket. Again, now straight to the hands of cover point. Loose stroke play there by the batter. Not enough power. Just he wanted to time that one. But not quite able to keep it down. Ball went straight to the hands of cover point. Wicket number 2 which is back into pavilion of our Shining Boys. It's 4 for the loss. 4 for the loss of 2 wicket. Just talking about this cricket ground. One of the most beautiful greenery cricket ground. In the name of Panjirail cricket ground here in Kudupu, and have a look at the ground just behind the cricket ground, and it's the goods train which is passing just behind this cricket ground. One of the more rare scenario we can get that kind of scenario only in Adimaheshwari Mahakalipadpu Jappu cricket ground. We are having the same scenario and with the train which is passing behind the cricket ground, and here in Panjirail we are having some beauty of the nature. Along with that, of course, the goods train which is passing in this beautiful Panjirail cricket ground. Of course, the cameraman of Bedra Media will definitely go into cover this one because one of the most beautiful scenario we can get in this particular cricket ground. So, Bedra Media having a live telecast of this prestigious BPL, one of the most popular YouTube live telecast channel. Again, first ball starts with a fantastic flighted delivery with the pace. The batsman going for the drive, misses the line completely and there is no chance at all for any run. Pushparaj is the bowler, has been introduced by the captain of the side to bowl the second over. Right arm over the wicket bounce. This time nothing much to do with the delivery which is going far outside the line of offside, going for the quick single. The very good judgment of the run in the occasion. 1+1, 2 wides with that 2 extra score, but moves on to 6 for the loss of 2 wicket in the over number second is in progress.
Sachin is on strike. Pushparaj bowls again. That ball is going outside the line of off time, far away outside the line of off time. The wide plus one. After he got a very good start in the first ball, the two consecutive wide deliveries which is bowled, and with that extra runs, the shining boy started to shine in the second over with extra, and scored Namozan to 8 on the board for the loss of a 2 wicket. This time, I think going to be one more wide, consecutive 3 wide, hat trick wide, bowled by the bowler. And Pushparaj is really struggling to get his line and length. A very interesting bowling action as he got 9 on the board. Right now over the wicket, bowls again, taps that one down to backward point region for a single by the batter Vishal. Vishal picked up a single then scored Namozan to double figure 10 on the board. 6 runs already conceded in this over. And they're going for the try, appeal for leg before wicket, but ball just going to miss the leg stump and leg by call by umpire Arish. And with that extra scored Namozan to 11 on the board for the loss of 2 wicket. The match number 3 is in progress. Next match will be played between Jai Vasuki versus Amazing Kongur Warriors. One more daughter delivery, so that daughter delivery score remains on 11. And good comeback. Pushparaj after that is struggling to get his line and length, then he bowled 2 very good deliveries after that. Again outside the line of flex stamp, but well within the reach of the batsman. Batsman shuffled across the line after delivery. Vishal, but misses it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest, and back to his bowling mark. Returns the ball to the bowler, and the bowler back to his bowling mark, and he bowls right arm over the wicket. This time again appeal for leg before wicket. They're going for the quick single, and they completed in the form of leg by. With that leg by, scored Namozan to 12 on the board, and over number 2 which is completed. 8 runs came from that over of Pushparaj. After completion of 2 overs, Shining Boys managed to get 12 runs by losing 2 wickets. They're going exactly 6 runs per over. Please note that the playing 11 players are not allowed to enter the ground. Only the extra players, the 12th man, need to enter into the ground. Please be careful. The 12 runs, they're going exactly 6 runs per over. Dheeraj is the bowler. So as per the rules and regulation of this cricket tournament is concerned, and just one bowler has to bowl 1 leg spin. That is compulsory, the mandatory, that one bowler has to bowl 1 leg spin ball over. So I think it's a very good concept by the organizers to get 1 leg spinner, because the leg spinner in this present cricket, we are not having that much of leg spin bowlers, so that it is a traditional bowling. Absolutely, the leg spin always is going to be a very useful the bowling action, but sometimes this kind of bowlings is not going to help the team. The wide ball called by umpire, ball going down the leg stump, and batsman going for the mighty stroke. Just he missed the golden opportunity to hit the ball, and looks like the batsman not happy with his bat, so he wanted to change the bat. Vishal. So scoreboard is 13 on the board. Dheeraj is the bowler, leg spinner. Vishal facing Dheeraj. Beautifully ball, absolutely perfect one. This is a line. This is a line what leg spinner has to bowl. Little bit outside the line of off stump. Almost looks like it's a fuller length delivery, but it's a Yorker length. Outside the line of off stump, and batsman completely missed out. Deep long on mid wicket, square leg. Long off is there, and there's a short cover point, short backward point. Again, lovely delivery indeed. Beautifully bowled there by the bowler. After that, wide ball. Then he's completed 2 very good deliveries in this particular over number 3. Dheeraj again.
Right now, over wicket bounce. This time again outside the line back stamp. Again, even a change of the bat. The Vishal. Now he wanted his partner's bat. The three times he changes his bat. But I think more than the bat, I think the technique, which is more important. The batsman might be little bit early into the stroke every time. Ball which is not coming to the bat. You need to wait for the ball to coming to a bat. And here is again. There's balls. This time again the problem continues. This is what I'm talking about. More than the change of bat, the change of technique is more important. And its score remains on 13. And four fantastic deliveries ball there by Dheeraj. This time Iche is breaking the shackle. This is what I'm talking about. The more than the change of bat and with the change of your technique and attitude is so important. And this time he is just waiting and waiting. The waiting is all over. I want to break the shackle this time. I've crossed the line of the delivery, swinging that one down to deep square leg boundary for a youth six. Second sixer of this tournament. 20 on the board. Again, outside the leg stump, going to be a wide frustration and the pressure straight away into the bowler Dheeraj. The very next ball, he ball outside the leg stump. Batsman going for the swing, misses it completely. Umpire not missing his opportunity to signal the wide. 21. This time, looks like it's going to be one more six here. Absolutely fantastic. So at last, Vishal finished this over with the two magnificent sixes. And score jumped into 27. Now, Sachin doesn't want to give his bat to his partner after that. And he wanted to change his bat again. The Vishal. After hitting two sixes from the bat of his partner. And partner wanted to back his bat because he's on strike for the last over. So 27. And the run rate is exactly 9 runs per over. 9 runs per over, the run rate progressing. The last over will going to start here. The bowler bowls first ball. One more leg spinner is in action. The nicely driven down to mid-wicket region for a single by Sachin. So with that single score moves on to 28. Right strategy from Sachin to pick the single. Very interesting bowling action, and even that way that is bowls that one beautifully bowled. Appeal for leg before wicket. The umpire says it's not out. Leg by call by umpire. Might be that ball has got a little bit extra turn, going to miss the off stump. And one more single. With that single score moves on to 29 on the board for the loss of 28 correction. Right now over the wicket. Bounce. This time lofted but not quite getting the distance right. So one more wicket is back in the pavilion. It's a 28 for the loss of 3 wickets. The batsman is back in the pavilion. Sachin looking for acceleration of the run rate but not really getting that one over the mid wicket. The fielder in a wideish long on, in fact, if takes the catch. The new batsman in is Akshay. Sushant is the bowler, and again that ball which is looks like the batsman is a little bit upsetted because Vishal is the batsman is back into pavilion. No, not the Vishal. I think the striker is definitely going to be out. And the batter wanted a single here, non-striker end. Batter Vishal desperately wanted to back into the striker's end because quite understandable. You know exactly. He's got 2 sixes in the previous over, so that he wanted to back into the back into this striker's end, so to get some acceleration. But so far, I think Sushant is bowled very well. And this time I paid plum, absolutely plum. Now 3 wickets in the 3 deliveries
and one in the middle of that, one run out, so that 2 wickets for the bowler Shashank, and absolutely good going here from a bowler. Last over is definitely is in a favor of team Samrat United. The much required good over is in progress. Scoreboard is 29. Nikhil will going to bowl last over, and the last over is in progress. New batter is in his Bharat with the jersey number 8, Nikhil. Right arm over the wicket balls. Bharat this time, oh, ball is just falling short of the fielder that, and they're going for the second run before the fielder from extra cover to. They're going for the third run as well because quite understandable. Vishal wanted a strike. The Vishal wanted a strike, but it's the last delivery of the over, so that even though that a couple of runs has been taken in the last ball, but Vishal is out of the strike in the last over, quite unfortunately. So 4 overs completed, and after their completion, of completing their quota of 4 overs, they scored 31 runs in the stipulated 4 overs, and they set a target of 32 to win the match for Samrat United. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಜೈ ವಾಸುಕಿ ಮತ್ತು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಕಾಂಗೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಜೈ ವಾಸುಕಿ ವರ್ಸಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಕಾಂಗೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್. ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ "31" is a target. Please note a little bit of correction in the scoreboard. 31 is going to be a target, and in the stipulated 4 overs, 24 balls, 31 required for the victory. And the wait and see how well team Samrat United will going to get this total score of 31 to win this match. And we'll take a short break here. After the short break, my friend Gopi will going to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you very much. धन्यवाद सतीश. So the second session of the match number 3 of BPL 2023 is now going to start, and the target is 31. So please note the stipulated time to complete their 4 overs quota. 31 the target for Samrat United, set by Shining Boys Jyoti Nagara, and their innings now going to start. First ball of their innings is now coming up. और दोनों आरंभिक बल्लेबाज निखिल और पुष्पराज आरंभिक बल्लेबाज, जबकि किरण गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, और गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, जहां पर रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। निस्संदेह बेहतर शुरुआत की इस वक्त जरूरत है सम्राट यूनाइटेड को, अगर उन्हें 31 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है। द टारगेट फॉर देम इज 31 इन 4 ओवर्स। और गेंदबाज इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, हल्के से गेंद को इस वक्त स्वीप कर दिया। अंतिम क्षण में 1 रन न मिला।
और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। 1 रन बिना किसी नुकसान के, 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। इन द नेक्स्ट मैच, जय वासुकी आफ्टर वन द टॉस दे इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट अगेंस्ट अमेजिंग Kongur Warriors. 31 the target in 4 overs. They have to score for victory. 31 the target in 4 overs. So 2 deliveries gone in the innings and 1 without loss in the first over. गेंदबाज इस वक्त किरण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पुष्पराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया। इस वक्त शॉट कवर पर बेहतर फील्डिंग फॉलो थ्रू में गेंदबाज द्वारा रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त किरण गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, शॉट कवर की दिशा में रन के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए और वहां पर मिसफील्ड होता हुआ अगर रन के लिए दौड़ते तो निस्संदेह यहाँ पर उनके लिए खतरा पैदा हो सकता था स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन वहां पर शॉर्ट कवर फील्डर ने मिसफील्ड की और इस वजह से बल्लेबाज अपने क्रीज पर सुरक्षित वापस। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, 1 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज की ओर के अगली गेंद, दाहिना तो ऊपर विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए काफी बाहर की ओर, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। गेंदबाज किरण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव किया, गेंद को मिड ऑन की दिशा में गेंद पहुंची, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। थोड़ी सी मिसफील्ड के बाद गेंद को बैकअप जब तक किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 3 रन न मिला किसी नुकसान के। एक बेहतर ओवर इस वक्त प्रगति पर किरण द्वारा अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। किरण अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद थी, एक्स्ट्रा बाउंस ब्रिलियंटली टेकन बिहाइंड दिस आर्म, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच। और जैसे ही गेंद विकेट कीपर के हाथों से चूकी, अंतिम क्षण में अपनी दाईं और डाइविंग लगाते हुए खूबसूरती के साथ इस गेंद को उन्होंने लपक लिया। एंड दैट इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय द फील्डर, बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट विकेट गॉन। Nikita Man dismissed, caught behind the wicket brilliantly by wicket keeper of the bowling of Kiran, and the first wicket lost for Samrat United. It's 3 for the loss of 1 wicket after completion of first over. A fantastic over came to an end from Kiran, and 3 for the loss of 1 wicket, and 28 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs with a required run rate of exactly 9.33 runs per over. Still they got 9 wickets kept intact. और जहां तक सवाल है तो यहां पर पहला विकेट गिर चुका है और दूसरा ओवर शुरू होता हुआ भरत गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, और निस्संदेह ये जो कैच विकेट कीपर ने लपका है बेस्ट फील्डर के कैच के लिए नामांकित यहां पर हो चुका है। और देखना है कि बेस्ट फील्डर ऑफ द सीजन का अवार्ड किस खिलाड़ी इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में प्राप्त करता है। तो और ओवर की पहली गेंद लेकर भरत इस वक्त तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर दूसरा ओवर उनका शुरू हो चुका है। भरत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद ड्राइव किया, इस वक्त नॉट क्वाइट मिड विकेट, इन फैक्ट द बॉल रनिंग डाउन टू अ मिड ऑन एरिया, इन फैक्ट दे कंप्लीटेड वन लुकिंग फॉर द सेकंड but won't get it, and in fact they finally satisfied with a single, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। बैतुरली प्रीमियर लीग 2023-2023 का तीसरा मैच यहां पर प्रगति पर। शाइनिंग बॉयज ज्योतिनगर और सम्राट यूनाइटेड के बीच गेंदबाज भरत की ओर की अगली गेंद, इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, अपील नकार दिया अंपायर ने, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन बल्लेबाज को मिला इस बीच, इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है, लेग बाई का इशारा, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। निस्संदेह एक लंबा सफर अभी भी तय करना बाकी सम्राट यूनाइटेड के लिए। 25 रन और बनाने हैं विजय के लिए। 25 रन मोर, स्टिल दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 2+ overs।
और गेंदबाज भरत इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद उछालना चाहा, इस वक्त रन्स नहीं मिला, लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। भरत फिर से एक बार तैयार, again is bar square of the wicket, not quite mid wicket, in fact they gone through for a single and get it comfortably at last और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 8 for the loss of 1 wicket. Runs are still coming in singles now for Samrat United and a good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Shining Boys Jyoti Nagar। अगली गेंद ड्राइव किया, गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 9 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Still the batsmen of Samrat United struggling for runs और गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी जरूर लेकिन शॉर्ट थर्ड बैट के फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर बोर्ड स्टेज एट 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अंतिम बार इस ओवर में भरत गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। इस बार फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बिहाइंड द स्टंप्स, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर उनका बैकफुट जो कि क्रीज पर मौजूद है और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। सो second over came to an end, 2 overs gone and struggling time continuing here for the batsmen of Samrat United. It's 9 for the loss of 1 wicket, 2 overs completed, 22 to get from remaining last 12 balls, that means in 2 overs। 22 रन और चाहिए विजय के लिए बचे हुए 2 ओवर में और निस्संदेह जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा सम्राट यूनाइटेड को कुछ चौके और छक्कों की इस वक्त सख्त जरूरत इस मैच में कमबैक करने के लिए। और गेंदबाज विशाल इस वक्त गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हुए नया ओवर शुरू होता हुआ सम्राट यूनाइटेड की पारी में। यतिराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और मैदान की बाई और जो रेल की पटरी है वहां से गाड़ी इस वक्त गुजरती हुई सुपर फास्ट और जहां तक सवाल है एक सुंदर सा नजारा हम यहाँ पर देख रहे हैं, रेलगाड़ी वहां पर गुजर रही है और यहाँ पर गेंद को उछाल दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी एंड ही जस्ट डिस्पैच दैट वन इन स्टाइल और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ बल्लेबाज यतिराज के बल्ले से और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। 16 रन और चाहिए, 11 गेंदें बाकी और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। 10 गेंदें 16 रन चाहिए, 16 रन टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 10 बॉल्स और विशाल इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद बेहतर गेंद, जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मोमेंट, बोल्ड प्रीटी स्लो वन और इस धीमी गेंद पर स्ट्रोक्स लगाने में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और एक बार फिर से विशाल एक बेहतर कमबैक कर चुके, छक्का प्रदान करने के बाद अपनी पहली गेंद पर गेंदबाज विशाल और यह गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई विकेट कीपर चूके 1 रन मिलेगा, इट्स इन द फेस ऑफ बाय इन फैक्ट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर। इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस, 8 balls to go and 15 more runs now they have to score for victory। 15 रन चाहिए, 8 गेंदे बाकी उनकी पारी में। गेंदबाज विशाल एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त पैरों पर टकराई, शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद पहुंची, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और अंतिम बार इस ओवर में विशाल तैयार। 14 रन टू गेट इन रिमेनिंग 7 balls नाउ और अंतिम बार इस ओवर में विशाल गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज
इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। विशाल दाहिना हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद उछालना चाहा, गेंद इस वक्त अपील जारी है बोल्ड आउट के लिए, लेकिन वहां पर इस बीच यहाँ पर विकेट गिर चुका है, रनआउट के रूप में विकेट गिर चुका है। जब विकेटें उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज का बल्ला हवे में था, द बैट वाज इन द एयर व्हेन द बॉल हिट टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट, और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 3 overs had been bowled, last over remaining, 14 runs to get from last over. So next batsman wearing a DS jersey, wearing number 22 number jersey, now comes out to the middle. धीरज इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, और अपनी ओवर की अंतिम ओवर की पहली गेंद इस वक्त उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ, और सचिन गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, जबकि सामना करने के लिए तैयार पुष्पराज, और 14 रन चाहिए अंतिम ओवर में, 14 रन टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार था। इन्हें ओवर द विकेट, फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए फील्डर कप्तान माफ कीजिए शाइनिंग बॉयज ज्योतिनगर के, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त सचिन गेंदबाजी शुरू करते हुए, चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त सम्राट यूनाइटेड को कमबैक करने के लिए। इस बार दैट इज एन जूसी लॉलीपॉप डिलीवरी, और इस बार ये विकेट गिर चुका है, डायरेक्ट हिट ऑन टू द स्टंप्स फ्रॉम विकेट कीपर, और यहाँ पर गेंद स्टंप्सों पर टकराती हुई रनआउट के रूप में ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। काफी ढीली गेंद थी इस वक्त, और इस ढीली गेंद का फायदा नहीं उठा पाया अपना विकेट खोने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए। 14 रन टू गेट फ्रॉम 5 balls नाउ। रोशन का आगमन यहाँ पर होता हुआ, बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है, सूरज जो कि इस वक्त बादलों की आड़ में छिप चुका है, और नीला आकाश से कुछ ज्यादा घने बादल तो नहीं, लेकिन बादलें जरूर इस वक्त दिखाई देते हुए, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा सूटेबल कंडीशंस फॉर क्रिकेट, क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। 5 गेंदें 14 रन चाहिए विजय के लिए। अंपायर विकेटों को सही करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद इस वक्त उछालना चाहा, बेहतर तरीके की विकेट कीपिंग, एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 1 more wicket fallen, brilliant piece of stumping made by wicket keeper behind the stumps, and consecutive wickets fallen for Samrat United in the last over of their innings. It's 17 for the loss of 4 wickets. They are looking deep in trouble. 14 to get, just 4 balls to go in their innings. जीवन the number 6 batsman is now comes out to the middle, और वो इस वक्त सामना करेंगे सचिन की गेंद का। अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ छक्के या चौके ही यहाँ पर सम्राट यूनाइटेड को इस मैच में वापस ला सकते हैं, और गेंदबाज सचिन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ऊपर था विकेट, इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कैच टेकन बाय द लॉन्ग ऑन फील्डर। गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन लंगोन पर जो फील्डर मौजूद थे, जैसे ही उन्होंने भापा की गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए बेहतर तरीके से गेंद को उन्होंने लपका, और यहां पर इस बेहतरीन कैच की बदौलत विकेट गिर चुका है। अब छक्के चौके ही यहां पर विजय दिला सकते हैं इस मैच में सम्राट यूनाइटेड को। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 17, 14 टू गेट, 3 balls टू गो। प्रवीण द न्यू मैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और 14 रन इस वक्त चाहिए 3 गेंदों में। निस्संदेह चौके या छक्के इस वक्त सम्राट यूनाइटेड का भविष्य बदल सकते हैं इन बचे हुए 3 गेंदों में। और सचिन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, और बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर इनके काफी आगे इस वक्त दौड़ाए थे, और इसे देखते हुए गेंदबाज ने अपना रनअप को इस वक्त रोक लिया, गेंद को डिलीवर नहीं किया। एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को बेहतर गेंद, और इस बार ये विकेट गिर चुका है रनआउट के रूप में। हालांकि थोड़े झिझके जरूर विकेट कीपर, लेकिन अंतिम क्षण में विकेटों पर गेंद को शाइन किया, और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका। अब ऐसा कहना पड़ेगा शाइनिंग बॉयज ज्योतिनगर की विजय यहां पर निश्चित है, अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड इन बचे हुए 2 गेंदों में ना फेंके तो। 14 नीडेड इन रिमेनिंग लास्ट 2 balls। अनुष नए बल्लेबाज, लेफ्टी बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और इस बीच सचिन इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ राउंड द विकेट,
और तैयार इस वक्त 14 टू गेट फ्रॉम 2 बॉल्स और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स इस बार स्विंग करना चाह चुके, शॉट फाइन लेग फील्डर चुके, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन का इजाफा, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, 13 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट बॉल. और सचिन तैयार, full toss, top edge, chance and taken comfortably. So 12 runs comprehensive victory for Shining Boys Jyoti Nagar against Samrat United, and with that 12 runs comprehensive victory, they back the complete points. So match number 3 of this tournament is now comes to an end. So man of the match of this match award goes to Sachin, who bowled brilliantly, captured 4 wickets in this match. Sachin of Shining Boys Jyoti Nagar adjudged man of the match. I request is adjudged man of the match, Sachin of Shining Boys Jyoti Nagar. So the 4th match of this tournament is now going to start between Jai Wasuki versus Amazing Kongur Warriors. And in this match, Jai Wasuki, after won the toss, they elected to field first. And the first ball of the 4th match is now coming up right after the short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the next match will going to start. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಡಗೌಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So thank you very much, Gopi. So welcome back for the match number 4 of day number 1 of this prestigious BPL Baithurli Premier League 2023 Season 3. Jai Wasaki versus Amazing Kangaroo Warriors. After winning the toss, captain of Wasuki elected to field first, and here is a pass ball. Nicely driven, right in the gap. 1 bounce, 2 bounce, into the fence for 4 runs. So amazing start for Amazing Kangaroo.
In the first ball itself, the batsman Karthik Rohit hits the ball nicely towards a mid-wicket boundary for 4 runs. Off the toes, little bit ball is dripping down the leg stump, and batsman immediately off the toes plays it beautifully down to mid-wicket boundary for 4 runs. Four without loss of any wicket for amazing Kangaroo. Beautifully bowled, good comeback here by the bowler. After that, he is bowled outside a little bit on the legs of the batsman. He quickly learning from his mistake so that he bowled outside the line of off stump and there is no chance at all for any run. Again, outside the line of off stump, it's going to be a punishable not from the batsman but from the umpire. Umpire Arish has got no hesitation in his mind to signal the wide because the ball is going far away outside the line of off stump and nothing much to do with the delivery. Left the ball, wide call by umpire. 5 without loss of any wicket. This time bowler's back dry, off stop, chance of run out in the striker's end. It's absolutely unnecessary. The batsman Rohit has got a very good start from the bat, but this time it's absolutely bad judgment of the run. After a bowler's back dry, bowler off stop that one, ball which is not far away from the bowler. Rohit thought he got a single there. His partner is not responded rightly so, but it's too late for Rohit to come back. And wicket number, the first which is back into pavilion. Unfortunately, Rohit, after he got a boundary for the first ball, is back into pavilion. Dikshit is a new batsman in. Sandeep. Right over. They can, oh, what a shot! But I don't think he'll go and get the distance. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. He's just choosing that area. But I think in this morning session, it's not that much of windy morning. There's not that much of wind in the ground. It's very difficult to get the distance. Even the batsman hit that one very well, right from the middle of the bat. Just like I mentioned, the placement is not good. There is nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement as he got the deep long on in the right orthodox region, long on region, and completes the catch. Back-to-back 2 wickets in that over. One in the form of run out and one in the form of catch out. 2 wickets which is back into pavilion in the 2 consecutive deliveries. A new batsman in is Deepak will go into face. Oh, lovely shot, inside out cricketing stroke, down to deep cow point, fielder behind the ball, but Joel just winning the race against the fieldsman. Exquisite lofted cover drive there from the new batsman Dikshit. Magnificently played, up and over. And it's not so easy to get the bound, especially in this grass cricket ground, the greeneries. The outfield is not quick enough, but because of that new ball, which is the first over, I think quite enough for the batter to get the boundary down to deep cow point region. 2 boundaries already in this over. Dikshit improvising nicely down to fine leg region. The fielder behind the ball, just inside the boundary line, they managed to pull the ball. But here is a batsman completed 2 valuable runs. The Sachin, the fieldsman, chasing the ball. And fantastic batting display here from Sachin in the last 2 delivery of this over. He got a 6 runs in the 2 balls. So altogether, after completion of over number first, amazing Kangaroo Warriors has got 11 runs, and amazing start here for amazing Kangaroo Warriors. Even they lost the wicket of the batsman Rohit, but still they got the runs what they really wanted in the first over. 11 without loss of any wicket. This is a new bowler in his Giri. The one more very recognized and popular cricketer, Giri. The very good all-rounder, especially he's got a lot of the left-hand batsman. Giri will go into ball the second over. The pass umpire Purushottam saying the guard from for umpire, so very important because umpire have to tell to the bowler for the batsman what kind of bowler. The left hand round the wicket. First ball nicely plays it down to mid-off region for a single by the batter Karthik. He picked up a single, and with that single scored moves on to 12 on the board. 12 for the loss of 1 wicket in the over number second is in progress. Just I want to see the field set after that fielding restriction. There is a square leg, deep square leg. There is a mid wicket. There is a long off. Long on is there. There is a long off.
Only 4 fielders outside the circle and 5 fielders inside the ring saving the singles. Outside the line of stamp, tapping the ball down to backward point region for a single. Deepak picked up a single. So with that single, Skubana moves on to 13 on the board. 13 for the loss of 1 wicket in the over number second in his progress. Jai Wasuki takes on amazing Kangaroo Warriors. And their first league matches for both the teams, they wanted to start the journey with a victory. And Giri once again, left arm around the wicket, balls outside the line of flex stump. Batsman little bit lazy movement of the feet, couldn't manage to judge the ball. Ball just passing around his legs, and wicketkeeper behind the stump, Santosh, one of the pillar of this cricket tournament, behind the stump, kept the ball very nicely and back to bowler. And the score remains on 13. Giri again back to his bowling mark, left arm. Balls going for the try again, not quite getting that one from the middle of the bat. Missed time that one. No question of any run. Good piece of bowling there from Giri. And coming back to Santosh behind the stump, one who is representative for KCCR Kadri. And a fantastic all-rounder, of course, a very aggressive batsman. The wicketkeeper batter. Representing for Jai Wasuki for this tournament. Again, outside the run of leg stump, going to be a punishable again from the umpire. White call by umpire Purushottam. One more addition to total addition of that single. Scoreboard numbers on to 14. Scoreboard is moving after a long time from 13 to 14 as Giri again balls. Round the wicket, left arm. Looking for the reverse. Ball is in there. They're appealing for a catch there, but umpire definitely they wanted to have a conversation. Oh my goodness. Of course, the wicket, the decision which is pending, so that I think there is no question of run out, but they need to see that whether the batsman has got a glove or not. Yes, he's given out. Yes, he's gone. I think he's out. It's a soft dismissal. There's no question of any confusion because the ball which is in there for a long time, in the sense when the ball is going very high, that means that the bat definitely is going to be involved. Because if it is a hand and arm, I think the ball will not going to go that much of high. So only if the bat is involved, then ball will going to go very high. And rightly so, umpire Arish of Young Friends Rua is saying to the scholar umpire, yes, it's the bat, the wicket number 2, which is back into pavilion. It's 14 for the loss of 2 wicket. Giri strikes with the wicket. The new batsman in is Ramesh. After the dismissal of Karthik Scott at square leg, the previous delivery. So far, it's a very good over. Quite over there from Giri. Left arm. Around the wicket, we ball. Beautifully balled. Perfect one. Just missing the off stump. And fantastic over. It comes to an end after completion of over number 2. And searching for the right track. And team Amazing Kangaroo, they're not getting the runs in the second over. And only 14 on the board. That means 3 runs which just came from that over. So bowling change. The third over is started from the far end. Starts with the wide. Wide plus 1. 2 wides. With that 2 extras, Kobar moves on to 16 on the board. Again, that ball is the same line and length. And going to be 1 plus 1. 2 wides to 4 extras. And with that 4 extras, Kobar moves on to 18. The 14 to 18 without single delivery, conceded 4 runs. Saujan again driven that one down to cow point region for a single. And with that singles, Kobar moves on to 19 on the board. Ramesh going for the cut shot, but ball is going further away. Third wide of this over. Highly indisciplined bowling performance here from Saujan.
Runs are coming very freely in this over. 20 already on the board. That means 6 runs, which is considered already. Nicely driven right in the gap. They're running hard, looking for the second. Fumble from the fielder, grabbing the opportunity by the batter. And they came back for the second and completed 2 valuable runs. With that 2 valuable runs, Kobar Namuzan to 22 on the board. And Ramesh is off the mark with that couple of runs. Saujan balls. The appeal for leg before wicket. How is that? Which is a loud appeal, but umpire not interested. Might be the ball just going to miss the leg stamp. Leg by call by umpire. With that extra score, Namuzan to 23. The over number 3 is in progress. Saujan again. Wow, so lovely shot. What a shot. Down to deep extra cover region. Again, before the fielder from deep long off to run across his left to field the ball. Ample time for the batter to complete that couple of runs. A lovely looking drive there from the batter, Deepak, in the direction. Deepak is playing a very good innings for his team so far. And scoreboard Namuzan to 25. The quarter century coming up here for team Amazing Kangaroo Warriors. Again, this time one more wide. This is the 4th wide of this over. The highly indecent bowling performance there from Saujan is conceding runs in the form of extras. All runs are going to be very crucial. The 26 valuable runs on the board for Amazing Kangaroo. Again, that ball is going to be a wide. The bowler really struggling. He's bowling a prolonged over. 27 for the loss of 3 wickets. Kongura. 28 on the board. Amazing Kongur is about the team which is batting here. I thought it's a kangaroo from Australia, but it's not a kangaroo, it's a Kongur. A little bit correction. So one more over completed. It's a 28. It's a score, a very good score, absolutely big over for Amazing. It's got amazing runs in this 3rd over. After completion of over number 3, it's a 28 on the board. The run rate is progressing very well, 9.33 runs per over for team Amazing. Kongur Warriors are looking in an amazing position. The last over is going to start from the far end. Chirag. This time he lofted handsomely. He lighted on them handsomely. Deepak is looking in the amazing touch for Amazing. Absolutely fantastic cricketing stroke there from Deepak. Straight down the ground, as straight as an arrow, and he got the distance, and score jumps into 34 on the board. Absolutely magnificent struck there from Deepak. Chirag again. The leg spinner, good comeback, forcing the batsman onto the back foot. That's the line he need to bowl. Batsman off the back foot. Deepak plays it quite sensibly down to mid-off. Back to bowler. Picked up a single. This time a short pitch delivery. Batsman early into the stroke. Without seeing the line of the ball, he wanted to play that one very blindly. Misses it completely. And there is no chance at all for any run. Again, excellent comeback. And Boyd, squeezing him up. Leg before wicket is gone. The batsman Ramesh is back into pavilion. A flum in front of wicket. Tried to hit the ball towards the mid wicket. Misses the line completely. And Chirag strikes at last. And it's a 35 for the loss of 4 wickets. So new batsman in is Prakash. Walking towards the middle. Last 2 deliveries left in this innings of Amazing. Kongur Warriors. There is that is a call. Santosh backhand clip flick to get the wicket. Ball misses the stumps. Leg by call by umpire. One more addition. Addition of that single score Namuzan to 36 on the board. This time wide outside the leg stump. Good judgment there from Deepak. Seeing the ball which is going further away outside the line of leg stump. One more addition. 37. Last delivery. Deepak going for the mighty stroke, and unlucky he missed it completely. Leg by call by umpire, short pitch delivery. Deepak couldn't manage to take the advantage of that one. That's it.
The very good finish here for amazing Congoor Warriors has got 38 runs and they set a target of 39 for the team Jai Vasuki, and wait and see how Jai Vasuki will going to get this total. Of course, Jai Vasuki has got some good players in the side, leading from the front, Santosh, of course, one of the recognized player, even Giri, we can be the very effective as a left-hand batter. Wait and see how well they're going to reply, but it's a huge total, and you cannot underestimate that total of 38 runs and 39 to win this match. Almost it was nearly 10 runs per over, the required run rate, just under 10 runs per over. And wait and see how Jai Vasuki will going to get this total. It's going to be very interesting second session. And for that second session of this match, I would like to invite once again my friend Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. Thanks a lot. The highlight of the innings is scored by Deepak. It's 18 valuable runs with the help of one boundary and a 6-6. And because of that, very valuable 38 runs and 39 to win this match. Time for change in commentary box. It's over to Gopi. Thank you. So 39 द टारगेट. धन्यवाद सतीश. और 39 रनों का लक्ष्य इस वक्त जय वासुकी के लिए अमेजिंग कोंगूर वॉरियर्स ने रखा है. अमेजिंग कोंगूर वॉरियर्स इस वक्त 39 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा जय वासुकी के लिए. उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई तो राजू गेंदबाजी इस वक्त रोहित इस बार ऑन साइड पर गेंद को फ्लिक किया. ऑफ द टॉस गेंद पहुंची और जब तक गेंद स्क्वायर लेग पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. रोहित तक गेंदबाजी यहां पर शुरू कर चुके हैं और गिरी जो कि अपना खाता खोल चुके हैं. सुमन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. रोहित की गेंदों का और रोहित इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी. ऑफ स्टंप पर आती हुई कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की और नहीं निकल रही थी और सीधे पहुंची हुई विकेट कीपर के हाथों में रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला. 1 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में और एक बार फिर से सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा और रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है इस वक्त 1 रन बिना किसी नुकसान के. 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. रोहित फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार गेंद को उछाला लंगोन पर और गेंद लंगोन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर. और जहां तक सवाल है इस वक्त छक्के का तो बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है सुमन के बल्ले से और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर. और जहां तक सवाल है 39 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का तो ऐसे ही चंद और स्ट्रोक्स की जरूरत उन्हें इस मैच में कमबैक करने के लिए. ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त
गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो इस ओवर में एक गेंद और बाकी, और 2 गेंदें बाकी है इस ओवर में, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट, बॉल्ड आउट, first wicket fallen, just wanted to go for a big one this time, the ball stuck to his off stump, bells are disturbed, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज सुमन आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 8 रनों पर पहला विकेट खो चुका है यहां पर जय वासुकी। इट्स 8 for the loss of 1 wicket in the first over। संतोष इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, जहां तक संतोष का सवाल है, इस श्रृंखला के मुख्य आयोजकों में से एक संतोष एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। आमतौर पर केसीसीआर कदरी का प्रतिनिधित्व किया करते हैं मुख्य श्रृंखलाओं में, और यहाँ पर उनके इलाके का जो कि मैच इस वक्त चल रहा है डीपीएल, इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाह रनर की मदद से इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, और 1 रन के रनर ने दौड़कर यहां पर पूर्ण किया लेग बाई के रूप में। तो जहां तक सवाल है 8 रन इस मैच के बाद इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह यहां पर होगा, और इस उद्घाटन समारोह के दौरान बेस्ट डिसिप्लिन टीम का खिताब जो कि दिया जाएगा इनॉग्रल सेरेमनी के दरमियान। बेस्ट डिसिप्लिन टीम अवार्ड विल बी गिवन ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेरेमनी, एंड दैट इनॉग्रल सेरेमनी विल बी हेल्ड राइट आफ्टर दिस मैच। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो 9 रनों पर स्कोर इस वक्त रुक चुका है, और गेंदबाज राजू गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए दाहिना तो ऊपर तक विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर। 10 for the loss of 1 wicket एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिना तो ऊपर तक विकेट, ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, मौका फील्डर के लिए, और कवर पॉइंट पर बेहतर तरीके से इस कैच को लपकने में सफल। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया था इस वक्त, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था, और आखिरकार कवर पॉइंट के फील्डर ने बेहतरीन तरीके से अपने आगे की ओर डाइविंग लगाते हुए इस कैच को लपका, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। इट्स 10 for the loss of 2 wicket फॉर जय वासुकी, और यहां पर दूसरा विकेट खो चुका है जय वासुकी 10 रनों के योग पर। इट्स 10 for the loss of 2 wicket। So Sandeep, the number 4 batsman, is now comes out to the middle for Jay Wasuki, और वो इस वक्त सामना करेंगे राजू की गेंदों का। राजू अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, गेंद को ड्राइव कर दिया, नॉट क्वाइट मीटिंग इट एट द लास्ट मिनट, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान, 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। बहुत ही सुंदर सा, विशाल सा, हरा भरा कुडुपु का ये क्रिकेट मैदान, घने घासों से इस मैदान की जमीन इस वक्त ढक चुकी है, और निस्संदेह कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर चल रही हो, और कुल मिलाकर कहना पड़ेगा बीपीएल बैतुरली प्रीमियर लीग ये श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई, गेंद को ड्राइव कर दिया ऑफ द टोज लॉग ऑन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, नो बॉल का इशारा, और 1+1 2 रन्स एडेड टू द टोटल। एक अतिरिक्त खिलाड़ी इस वक्त ऑन साइड पर मौजूद, और बिहाइंड द पॉपिंग क्रीज, और इस वजह से 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, 2 रन का इजाफा हो चुका है। इट्स 13 for the loss of 2 wicket इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। फ्री हिट गेंद, नो बॉल का इशारा था, फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए, और राजू गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद फ्री हिट गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, फ्री हिट बरकरार, और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। फ्री हिट गेंद
लेकर राजू इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर था विकेट, ये गेंद टॉप एज, गेंद को उछाला इस वक्त, लेकिन कैच को लपकने के बावजूद बल्लेबाज आउट नहीं होंगे क्योंकि वहां पर फ्री हिट गेंद है। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है। कुल मिलाकर इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, ये गेंद, दिस इज अ गुड वन एंड दिस इज अ मैसिव वन, इट्स अ बिग हिट। 6 runs came from the batsman. He hit that one pretty hard and finds the gap as well at deep backward square leg fence for a huge one. और इस छक्के के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ गिरी के बल्ले से, और स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे। It's 21 for the loss of 2 wicket. Just 18 more runs now they have to score for victory in 2+ over. इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद को खेलने के प्रयास में चूके डॉट गेंद, 13 गेंदें बाकी और 18 रन इस वक्त चाहिए विजय के लिए। 18 टू गेट फ्रॉम 13 डिलीवरीज। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त खेल दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाते हुए कवर पॉइंट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। दे आर लुकिंग इन गुड सिचुएशन, जस्ट chasing the victory target of 39 in 4 overs. They are 22 for the loss of 2 wickets. 17 runs to get from remaining last 2 overs. And as far as the victory of this match is concerned, still I must say the match is now evenly poised. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए हर्षित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज सुमन इस वक्त गेंदबाजी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, और सूरज हैं गेंदबाज इस वक्त। हर्षित को हटाकर सूरज को इस वक्त मोर्चे पर लगाया गया है और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। 12 गेंदों में 17 रन चाहिए विजय के लिए। ओवर की पहली गेंद लेग स्पिन गेंदबाजी, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। It's 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। 11 गेंदें बाकी है इस वक्त, 15 रन, माफ कीजिए 16 रन और चाहिए विजय के लिए। इस बार गेंद को उछालना चाहा, ढीली गेंद थी लेकिन ढीली गेंद का फायदा उठाने में असफल, और इस बार डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। 16 रन टू गेट फ्रॉम 10 बॉल्स नाउ, और अगली गेंद लेकर के इस बार ढीली गेंद लेकिन उछाल नहीं पाए ठीक तरह से। नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, थोड़ी सी मिसफील्ड, और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर लिए। 2 रन मिले और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 14 रन टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 9 बॉल्स। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो सूरज जिस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन दिस टाइम। लगभग जमीन के सहारे गेंद आती हुई गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से सूरज गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। It's 26 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. ढीले गेंद उछाला, लॉन्ग ऑफ पर मौका, और गेंद सीधे विकेट की सीधे फील्डर के हाथों में। गेंद को उछाला था लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत, और लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे कोई गलती उन्होंने नहीं की, और एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकते हुए और एक और विकेट गिर चुका है। 26 रनों पर तीसरा विकेट खो चुका है यहाँ पर जय वासुकी। 7 गेंदें बाकी, 13 रन चाहिए। 13 रन टू गेट फ्रॉम 7 बॉल्स। और जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, कम से कम एक चौके या छक्के की इस वक्त सख्त जरूरत है जय वासुकी को इस मैच में कमबैक करने के लिए। चिराग नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद, सूरज की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। सूरज चिराग के लिए अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, इस बार दूसरे प्रयत्न में विकेट छटका है, तब तक बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर रख चुके थे, और यहाँ पर
जहां तक सवाल है रनों का, तो रन्स इस बीच नहीं मिले। नॉट आउट इस वक्त घोषित, स्कोर रुक चुका है 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 13 रन टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर। 13 रन बनाने हैं अंतिम ओवर में, और ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही अब इस मैच में जय वासिकी को वापिस ला सकते हैं। हर्षित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और बाएं हाथ के बल्लेबाज सुमन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और जहां तक सुमन का सवाल है, पिछले 2 ओवर पहले जो छक्का वो लगा चुके हैं, उसी तरीके की एक और छक्के की इस वक्त उनको और उनकी टीम को सख्त जरूरत इस मैच में कमबैक करने के लिए। कार्तिक गिरी, माफ कीजिए, इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए गिरी सामना करने के लिए तैयार है, और गिरी को इस वक्त छक्का या चौका इस ओवर में लगाना होगा कमबैक करने के लिए। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 27 रनों पर। 12 रन टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 5 डिलीवरीज। और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार चिराग, और गेंदबाज हर्षित गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बाएं हाथ राउंड द विकेट, गेंद को इस वक्त छोड़ दिया, गेंद शॉट थर्ड मैन पर पहुंची, निशाना चूका, वाइड का इशारा। 1+1, 2 runs now added to the total, and with that couple run the scoreboard moving up to 29 for the loss of 3 wickets. 10 runs to get from 5 balls. और एक और बेहतरीन मैच यहां पर प्रगति पर, और गेंदबाज हर्षित बाएं हाथ राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज गिरी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त विकेट कीपर करने के बाद अगली गेंद लेकर तैयार, गिरी के लिए ड्राइव किया, गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑफ फील्डर काफी पीछे, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वीतम दूसरा रन पूर्ण करते, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड होते हुए, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर। 4 गेंदे बाकी, 8 रन चाहिए विजय के लिए। 8 रन टू गेट फ्रॉम 4 बॉल्स। और हर्षित गिरी के लिए अगली गेंद सफल हुए, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, उछाल नहीं पाए, इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है। बाई डिक्लेरेड बाय अंपायर, और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर। 7 रन टू गेट फ्रॉम 3 बॉल्स नाउ। और हर्षित इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, वाइड लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। अब गेंदे बाकी है 2 और रन से चाहिए 6। 2 balls remaining and 6 more runs now they have to score for victory. गिरी स्ट्राइक पर आ चुके हैं, एक छक्के की इस वक्त उन्हें इस जरूरत है। यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूके बेहतरीन गेंदबाजी, गिरी की पारी समाप्त। अब अंतिम गेंद पर चाहिए छक्का, 6 रन बनाने हैं अंतिम गेंद में। 6 required in the last delivery now. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. सो लिखित नए बल्लेबाज के रूप में छक्के की जरूरत, अंतिम गेंद इस वक्त बाकी, और हर्षित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। लिखित देखना यह है कि लिखित अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को विजय दिला पाते हैं या नहीं। 6 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट बॉल, और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए, और हर्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नॉट कमिंग अप, 6 रिक्वायर्ड, और गेंदबाज हर्षित इस वक्त तैयार। So the last ball is not coming up. Here we go. Left arm around the wicket. Chuke. That's it. 5 runs victory for Shining Boys. In fact, a 5 runs victory for Amazing Kongur Warriors against Jai Wasuki. And with that 5 runs thrilling victory, they are through to the they back the complete points. In fact, for Amazing Kongur Warriors, they back the complete point, defeating Jai Wasuki in a thrilling victory by 5 runs.
Now, the inauguration ceremony of this tournament will be held right now within just a short while. So, man of the match of this match award goes to Deepak, who scored 18 valuable runs, and because of that fantastic batting performance, Deepak
ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿದು ಕೊನ್ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈತೂರ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಸೀಸನ್ ಮೂಜೆತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಪನ್ಪುನ ನಿಡೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೋರ್ಮದ ಚಾವಡ್ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಇವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲೇನು ಅವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೋರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮಾತ ಪದುಕೇರ್ನಕಲ್ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಎದುಕೊ ನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ನಡುವೆ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೋರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೋಕೆದ ಬಿನ್ನೇರು ಓಲಗಾಯರೆ ಪುನಂಚಿನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲು ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಫೀಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೇವ್ ಅನಿಮಲ್ ಅದಿತಿ ಕುಡುಪು ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಮುಲಿಯ ಗಾನರಥ ಟಿವಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಿನಾಲಿಸ್ಟ್ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದಯ್ ಕುಡುಪು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದೇವದಾಸ್ ಅಂಚನ್ ಕುಡುಪು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಸಿಂಚನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಬನ್ ಮೆನೇಜರ್ಸ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ನಡುಮನೆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಭಗವತಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಅಜಯ್ ಮಂಗಳನಗರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಪಂಜರೈಲ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಚೌಕಿ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ರಾಮದಾಸ್ ಬೈತುರ್ಲಿ ದೇಜನ್ನ ಕುಡುಪು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುರು ಬಿಪಿಎಲ್ ಬೈತೂರ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2 ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಯಿನ ಪುರ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪುರ್ಲ ಕುಟ್ಟಗೆ ಸೀಸನ್ ಮುಜೆತ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮುಗಿಡು ಆನಮನದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ತರತಗಾದ ಗಾನಾದಿ ದೇವಿ ಕಲಾಮಂದಿರ ಶಾರದಾ ಜಗದರಕ್ಷಕಿ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಅವರ ಮಾತಿನ ತನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೋಜಾದ ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಅದೇ ಅವನ ಕೊರಲ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಟ ಮಾತ ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಲೇಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿನ ಕೊರ್ರೆ ಪುನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೋಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಬಿನ್ನೆ ಅರ್ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಕುಡುಪು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸರ ಆವಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಊರುಡಾವಡು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದಿಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ನಿಡೆಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಂದಂಡ ಆ ಊರುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಜನತ ಕೈ ಪನ್ಪುನವು ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಗಂದಕೆಂಡ ಆ ಕೈತ ಮುಖೇನವಾದ ಬೆರಿಸಂಗನು ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೋಕೆದ ಕೋಆಪರೇಟರ್ ಆದಿ ಪುನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ಅನ್ನ ಇರನಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟುಗು ಅಂಕಿತ್ ಕುಡುಪು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತರು ಮೇಲೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಅಂಕಿತ್ ಕುಡುಪು ಉಡಲಿಂಚಿನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೇನೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಡನಾಟ ಒಂದು ನೆಚ್ಚನೆಚ್ಚರದ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಳಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಶಕೀಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮುತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರದಲಕ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಾದ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ನುಡಿನ ಕೋರೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ಅಜಯ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನೀಶ್ ಮನೀಶ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ನುಡಿ ಕೋರೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಆಯೋಜನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಾತರಿಗಳ ತೋಜಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಸಿಂಚನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದೇವದಾಸ್ ಅಂಚನ್ ಕುಡುಪು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಶಕೀಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಪುಷ್ಪನ್ ಕೊಡ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡು ಪಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ನಿಗಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ 3 ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೊಲ್ಲೆರ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನೊರಿ ಭಿನ್ನೇರಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ
ಎಟ್ಟೆಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖೇನವಾದ ಸಾಗರ ಕಿನಾರೆ ಭಜಕ್ಕೆ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ರವೀಂದ್ರ ನಾಯಕನ ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಇನಿತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಮುಖೇನ ಬೇರೆಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಟ್ಟೆ ಜಾಗೆ ನಜಾರೆ ಜಾಗಿ ಹವಾ ನೋಡುವ इस बार भी माई 11 सर्कल पे हर दिन 1 करोड़ का प्राइस है। हाँ पर इस बार 1 करोड़ तो सेकंड प्राइस है। तो सोचो फर्स्ट प्राइस क्या होगा। माई 11 सर्कल पे ದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ತೀರಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ ಅರೆನ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಊರದ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ತನ್ನ ಉಗಾರ್ಮೆನ ಪಡೆಪುನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಠಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಂಠಸಿರಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಿತು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಗಾರ್ಮೆನೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅರ್ಧ ಪುದರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡುಪು ಆ ಪುದರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದೆ ಕುಡುಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಪುದರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಕನಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಪಕ್ಕ ಹುಲಿಯ ಗಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಪಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಚೌಕಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪುಷ್ಪನ್ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಲಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಲಾದ ತಿಕ್ಕಡ ಮುಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಅವಕಾಶದ ನಿಡೆಟ್ ನಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುತಿಸವಡು ಮುಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಗುರುತಿಸಾದ ನನ್ನಲಾದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿ ಆಜಿಯೋ ಆಪ್ ನೌ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವುದು ಆಟಗಾರರ ನಕಲು ಗೊಪ್ಪು ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ BPL ಸೀಸನ್ ಆತ್ಮೀಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಕತ್ತಲ ಕೋನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಳಕಿರಿದಲ ಕಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಡರ ಅರ್ಲಂಡು ಬಂದಂಡ ಆ ಕತ್ತಲ ಕೋನೆ ಸದಾ ಬಲ್ಪು ಆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತುಡರಿನ ಅರ್ಲಾವಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಚಿನ ನಿಲೆಟ್ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಬಲ್ಪುದಂಚಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಸುಜ್ಞಾನದಂಚಿ ಬಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ತುಡರಿನ ಅರ್ಲಾದ ಕೊರಡು ಪನ್ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಾಗಿಂದ ವಿನ್ನಯ ಪನ್ಪುನವೆ ಒಂಜಿ ಸಾನಾದಿಗೆ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನವು ಆಸರೆ ಸಾದಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಮಿನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಅರ್ಲಾ ಒಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಡರೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ತುಡರನ್ನ ಅರ್ಲಾ ಉಡು ಪಂದು ಕೇನೊಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोस्तुते ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ
ಮಾತ ಬಿನ್ನರ್ನಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೈತೂರ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಉದ್ಘಾಟನೆ ಲೇಸಡ್ ಅರ್ಲ ಉಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ತುಡರ್ ಆ ತುಡರ್ ಸದಾಕಾಲ ಅರ್ಲೊಂದಿಪ್ಪಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಇಂಕಲ್ನ ಆ ನಿಡೆಟ್ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸೋಲೈತು ಸೋಲ್ಬಡೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಅಂಚಾದ ಪೊರ್ಲ ಕೂಟಡ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಡರದ ಅರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ 2 ಜನನ ಗುರುತಿಸವನ ಹಿಡೇನ ದೀರಿತ್ತ ಐಟ್ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನೋರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಅಭಿಮಾನುಡು ಗುರ್ತಿಸಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ದೀತಿನಿ ನಮ್ಮನೆ ಊರದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವು ಅದಿತಿ ಕುಡುಪುನು ಐಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮನೆನ ದಿಯೋಡು ಪಂದಿಕೇನುವೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮನೆ ಊರದ ಪೊನ್ನು ಅದಿತಿ ಕುಡುಪು ಪುರ್ಲ ಮನೆಟ್ ಒಲಗಾವಡು ಪಂದಕೇನುವೆ ಬಹುಶಃ ಸಂಗೀತ ಬಕ್ಕ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣನ ನಾನಲೆ ವರ್ಷೋಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ದಿನೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಕ್ಲೇಡ್ದು ಪಡೆಯೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ದಿವಕರ್ ಮುಕ್ಲೇಡ್ದು ಐನು ದುಂಬುವರಿತದೆ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮೆರೆಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತಿಕೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಮೆರೆಡ್ದು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ತರಬೇತಿನ್ಲ ಕಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಿಪ್ಪಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಿಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಾದು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ತಾನು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಬಿಫೋರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲಿಯ ಗಾನರಥ ಪಂಪುನಂಚಿನ ರಡ್ ಕಡೆಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಾದು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೊನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಂಠ ಸೇರಿಟ್ಟು ಪದ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಂಡ ಒಂದು ಇಡೀ ಕುಡುಪುದ ಊರುಗು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಆ ನಿಡೆಟ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮನ್ಕೊಡು ಪಂದಕೇನುವೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂದು ಬಿನ್ನೇರ್ದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತನದು ನನ್ನ ತುಂಬಗಲಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಡೆ ನನ್ನ ಲಾತಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಭಾಗ್ಯನ ಅಪ್ಪ ಶಾರದೆ ಕಲಾಮಾತೆ ಕೊರಡೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಊರುದಲ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಲ ಅರ್ನಲ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗಡೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಡ್ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಇನ್ನೇನು ಸನ್ಮಾನ ಅಂದಿ ಎನ್ನಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂದಿ ಎನ್ನುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಪಾತೆರಂದ ಪನೋಲಿ ಬೇಗಂದ ಕೇಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡು ತಿಕ್ಕು ನಾವು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಐನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲೆಡೆ ಐನಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಕುಂಠಿತ ಇರಬಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ದುಂಬುವರಿಯೋಡು ಐಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡೆ ನಡಪಾವನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆ BPL 2023 ಪೊರ್ಲ ಸೀಸನ್ 3 ವೇದಿಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನಡೆ ಅತಿಥಿ ಕುಡುಪು ಮೆರೆನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆನು ಕುಡಲಿಂಜಿನ ಸನ್ಮಾನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲವೇ ಪೊಟ್ಟುಡು ಬರಲಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪುಡು ಬಂದಂಡ ಕುವೆಲಡು ಪೂರ್ತಿನಂಚಿನ ಉಚ್ಚಿತ್ತಂಡಲ ಕೆಲವರ ತೂದು ಪೂಡಿ ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿಕ್ಕ ಅಂಡ ಕುವೆಲಗೆ ಪೂರ್ತಿನ ಉಚ್ಚಾವಡ ಪುಚ್ಚಾವಡ ನಾಯಿ ಅವಡ ಐನ ದಿಕ್ಕದ ಕಾಂಕು ನಂಚಿನ ಬೇಲ ಮಲ್ಪುಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಒಂಜಿ ಐನು ದೆಡ್ದು ಆದಿನದು ನಾಯಿಲೆಗೆ ಪುಚ್ಚೆಲೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ಮುಪ್ಪುನು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಾವು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆದ ಉತ್ತರ್ಮರ ಚಾವಟ ಆರ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರುತ್ತಾರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಣ್ಯರ ನಕಲ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉದಯನ್ನೇ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆಡೆ ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದ ತಾಪ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಟ ದೇವರ ದಾನ ತಂಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ನಿಡೆಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಜಯ ಮೇರುತಿ ಅಂಚಾದ ಅಕೇರು ದಂಡ ಪಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವಂಡ ಅದೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಿತರೆ ಅಂಚಾದ ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ಹುಗರಂದೆ ಬಾರಿ ಮೋಕಿನನ್ನ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಭಾಸ್ಕರ್ BPL ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು
ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದಂಥ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಮನೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ನಿರಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಪಾತಿರೋಂಡೇರಿ ಬಹುಶಃ ಬಿಸಿ ಜನ ಅಂಡಲ ಇವತ್ತು ಅದಿತಿ ಕುಡುಪು ಮತ್ತು ರಜ್ನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮಗೆ ಕೂಡ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಉಡಲಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಬಿಸಿ ತಿನ್ನಡ ದಾತ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿರ್ದ ಯಾಕಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರು ಯಾಪಲ್ಲ ತಪ್ಪವನಾರತ್ತು ದಯಗಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗ್ ಸದಾಕಾಲ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಂದು ಬೈದೇರೆ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲೆ ಇರ್ನ ಸಾತ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಡೆಟ್ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರೆಗ್ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊನುವೆ ನನೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಕಜ್ಜನ್ ನಡಪಾರಂಡು ಆ ಸನ್ಮಾನದ ಕಜ್ಜೆ ಎರೆಗಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೊಂಡೆಯನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಬಲ್ಮಾನ ನಡತಿಪ್ಪು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ ಐನ ನಡಪ ಒಂದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಆ ನಿಡೆಟ್ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠ ಇಡು ಒಲಗಾವಡು ಪಂದಕೇನುವೆ ಒಂತೆ ವರ್ಷೋಡ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಾಹಿನಿಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಪರಿಚಯ ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ಅವೇತೋ ಪಶು ಪ್ರಾಣಿಲೇನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಬಂತೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಬಹುಶಃ ನರ್ನ ಪರಿಚಯನ ಪನ್ಪೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಳದ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಓಡುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲಿಡ್ ಆರ್ಬಕಾರ್ನ ಸಂಸಾರ ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಅವೇತೋ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಪಕ್ಷಿಲೆಗ್ ಸುಮಾರು ದಿನಕ್ಕೂ 500 ಇಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ನುಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ಲಕ್ಕದು ಉಂತದು ಕೈ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಪಂದನಿಗಳ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತನುವೆ ದಾಯಗಂದಕೇಂಡ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೋಲ್ ಎಡ್ಲ ನಮ್ಮ ರಜನಿ ಅಕ್ಕನ ಗುರ್ತಿಸಾದೇರು ಆ ನಿಡೆಟ್ ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಿಡ್ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂದ್ಯ ಎನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲಾಲ್ ಭಾಗದ ಊರುಡ್ದು ಕುಡುಪುದ ಊರುಗೂ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪಡಾದ ಈ ನಿಡೆಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನದ ಸನ್ಮಾನ ಪಂದ್ಯ ಎನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನಡ್ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಲಾತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಲೇನ ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ದುಂಬುವರಿಯಡ ರಜನಿ ಅಕ್ಕ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ನಮ್ಮನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಪಂದರಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅರ್ನ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಟಗಾರರ್ಲ ಅಂದ್ ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರಜನಿ ಅಕ್ಕನ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ಅವ್ರ ಪಾತೆರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಐಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಪಂದಿಕೆ ನೋಡುವೆ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದಿತಿ ಕುಡುಪುಲ್ಲೇರು ಎರಡ ಪಾತಾರ್ಪಾದಿಜ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಪಂದಾರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಓಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾರು ದುಂಬುಕೊಂಡ್ರೆ ಗುಲ್ಲೇರು ಅದಿತಿ ಕುಡುಪು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ
ಗಣಪ ದಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿಮಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿಮಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂಕಾರ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಹೇ ಗಣಪ ಹೇ ಗಣಪ. ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ರಾಶಿಡ್ ಯಾಪಲ ಪುಲಿ ಪುಂಟೊಂಡ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಾಶಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪುಲಿ ಪುಂಟೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಕಾಪವನ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಡೆಟ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುರಂಡು ಐಗಾತ್ರ ಟ್ರಾಫಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತ್ ಕೊರೋಡು ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲ ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊನವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿನ ವಹಿಸುన్నారు ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಆಪರೇಟರ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉದಯ್ ಕುಡುಪು ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದೇವದಾಸ್ ಸಂಚನ್ ಕುಡುಪು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ಸಿಂಚನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಜಯ್ ಮಂಗಳನಗರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನಡುಮನೆ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ಭಗವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮದಾಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶನ ಕುಡುಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಪಂಜಿರೈಲ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಚೌಕಿ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಮಾತ ವಿನ್ಯಾರ್ ನಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಪೊರ್ಲ ಟ್ರಾಫಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಜನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಅದಿತಿ ಕುಡುಪು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಪೊರ್ಲ ಟ್ರೋಫಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ಲ ಟ್ರಾಫಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಕ್ಷಣ ಮಾತ ವಿನ್ನರ್ ನಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ರಡ್ ಸಾರ್ ತೀರೊತ್ತ ಮುಜೆತ್ತ ಸೀಸನ್ ಮುಜೆತ್ತ ಪೊರ್ಲ ಟ್ರಾಫಿ ಲಾಂಚ್ ಆಪಿನ ಪುರ್ತು ಮಾತ ವಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊನವೆ ಅವೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬೆ ಬಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಜನನ ಮರಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಾಂಡ ಐಕ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತರಿಯರಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಘಟಕರ ಆದಿಪ್ಪು ಬಿಪಿಎಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಐಡ್ಲ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಡ್ ರಕ್ಷಣದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಭಾರತ ದೇಶದ ರಡ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ ಪೊಂಡೊಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪುನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ರೈತೆ ಅಂದ ಅಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಗಡಿನ ಕಾಪುದಿದ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ಸೈನಿಕೆಗೆ ಆ ನಿಡೆಟ್ ರೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈನಿಕಗೆ ಅವೇತೋ ಚಲಿಪ್ಪಡ ಅವೇತೋ ಬರ್ಸೈಪ್ಪಡ ಅವೇತೋ ದೊಂಬಿಪ್ಪಡ ಅವು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾತ ಲೆಕ್ಕಿಸ ಅವಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾಪೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬಂದಾಂಡ ಭಾರತ ಮಾತಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರತದ ಪುತ್ರೆರೆಗೆ ಭಾರತದ ವೀರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಭಾರತದ ರೈತರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಲಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ನಮ್ಮ ಏಕಾತ್ರ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎನ್ಮ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನನದುಂಬಾಗ ದುಂಬುವರಿಯರನ್ನು ಮಾತ ಭಿನ್ನರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೈತೂರ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೈತೂರ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗದ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರ ನಕ್ಲೇನೆ ಪದುಕೇರ್ ನಕ್ಲೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕ್ಲೇನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಒಟ್ಟುಕೊನೊಂದು ಬೆದ್ರ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖೇನವಾದ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ಪೊರ್ಲ ಸಾತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬಕ್ ದುಂಬುಕೊರಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ದುಂಬುವರಿಯುಂಡು.
Started very well in this particular tournament. Both the teams have won their first match of the league, so that they wanted to continue their winning track in this second match of the league matches. So batsman is on strike. Kishore will go into face his first delivery. Umpire just suggesting to note the time. And of course, our scorer noticed the time, and it's going to be a start of the match. Fumble from the field. They're going for the quick single. It's going to be a gone. I think it's gone. I think is asking for the third umpire. So this is the first third umpire decision, and which is given for the third umpire and third umpire for this particular match. I think Arish will going to get the exact angle of this run out through Bedra Media. The technicians of Bedra Media, under the great leadership of Irfan, will going to provide different angle to get the right decision whether the batsman is safe or not. But we need to wait for the umpire decision. The third umpire decision will going to decide. That third umpire will going to decide whether the batsman is safe or not. This is the first third umpire decision in the day number 1, and we are just talking about, of course, the beep out, which is a call from umpire, third umpire. So batsman is gone, and first third umpire decision, which is going in, it's went in the favor of fielding team, and the batsman short of his crease. Just we are talking about the felicitation ceremony which is held earlier, and Rajini Shetty Balalbag, and she is feeding animal and saving the animals, and I am talking about her husband Damodar Shetty. He is my close friend. He is represented for same team, Hanuman Cricketers. He is one of the very good all-rounder as well during his engage. This time chance of run out in the non-strikers, and this time again the umpire asking for the third umpire. But now it looks like going to be a very close one. The batsman seems to be a little bit struggling to reach his home, but we need to wait for the umpire decision. The third umpire will going to decide whether the batsman is safe or not. And 2 consecutive times the umpire is referring for the third umpire, and the third umpire Arish will going to give the decision here. We are talking about, of course, Damodar Shetty. Thank you very much for coming here for this inaugural ceremony, along with Rajini Shetty Balalbag, her husband Damodar Shetty, and of course one more talent which is felicitated in the main stage, Aditi Kudupu. And we are just waiting for the umpire decision. Now out, which is called from umpire, and just the body language, seeing the body language of the batter itself, we can imagine that batsman short of his crease, but still umpire, after having that much of technology, why not to ask for the third umpire? And Purushottam at square leg asking for the third umpire to give the decision, and second wicket is back into pavilion, and 2 wickets. Absolutely disaster start here for the team Tatva. Disaster start for Jai Panjirel. They lost 2 wickets in 2 consecutive deliveries in the form of run out. Nicely swept that one down to fine leg region before the fine leg fielder to run across. It's to his left to field the ball. Ample time for the batter to complete that couple of runs. Very good execution there from the new batter. Just let the ball coming to his bat, and just closing the face of the bat, running it down to short fine leg region for a couple of runs. And with that couple of runs, Anil is off the mark, and the scoreboard is 3-2 on the board. Again, the appeal for leg before wicket. Umpire saying that how can I give the decision, because bowler coming right in front of umpire, that is a protected zone. The bowler has to be a little bit careful when coming in front of umpire. Very difficult for umpire to see the line of the ball. Again, right up over the wicket balls. This time up and over, down to deep cover point region. Fielder behind the ball, and just looks like ball is just stopped inside the boundary line by the fielder. And before the throw coming from the deep, ample time for the batter to complete that 3 valuable runs. Lovely looking lofty drive. That's such a useful cricketing stroke to play. Last delivery remaining in this over, and a useful cricketing stroke to play in this power play over. This time plays it down to short mid-on region for a easy single. With that single, score Namuzan to 7 on the board. 7 for the loss of 2 wickets. So equal start for both the team. As far as the team Jai Panjirel is concerned, they got 7 runs, and as far as good start for Tatvamasi 11s is concerned, they got 2 wickets. That means both the teams has got a start here.
and equal battle is on these two teams. The winning teams, both the teams, they have won their first league matches. Manish brought in the attack to bowl the second over, right arm over the wicket balls, and again outside the line of exam, going to be a wide. It's a big wide, Spectra wide, and nothing much to do with the delivery. The batsman left the ball, rightly so, and ball went towards the fine leg region for a wide. It's a wide. One more exercise added, total 8. Once again, identical mirror display of previous delivery, the same line and length. That means bowler struggling to get his line and length. Consecutive 2 wide deliveries, and scoreboard numbers on to 9 on the board. Ganesh. Manish bowled him, cleaned him up. He bowled 2 wide deliveries and then one perfect delivery to get the wicket of the batter. Anil is back into pavilion. Tried to sweep the ball without coming to the line of the delivery, and he just pays the penalty for that. Ball hitting the stumps. The wicket number 3, which is back into pavilion of team Panjirail. So scoreboard is 9 for the loss of 3 wickets. Ali Shining Boys ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ ತಂಡದ ಸಚಿನ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿನಗರ್ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಚಿನ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಪೀಲ್ ಫಾರ್ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಪೀಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೌಲರ್, and the batsman completed a single. With that single, scoreboard numbers on to 11 on the board for the loss of 3 wickets. This time going for the reverse stroke. Again the wide call by umpire, the 3rd wide of this over. The runs are coming in this over in the form of extras, and scoreboard numbers on to 12 on the board. 12 for the loss of 3 wicket. Again going for a quick single, and again that the wicket is short fine leg fielder returns the ball. The wicketkeeper fails to collect the ball, so that ample time for the batter to complete the single. Again that ball went towards the fine leg region. Wide call by umpire. This is a 4th wide of this over, and wide plus 1, 2 more to the total. With that 2 extra, scoreboard numbers on to 15 on the board. 15 for the loss of 3 wicket. The bowler Manish really struggling to get his line and length. Again nicely swept that one right in the gap. Ball running down to define leg boundary for 4 runs. Absolutely perfect placement. Quite easily done, isn't it? Clever and intelligent cricket there from the batter. Just let the ball coming to his bat and just closing the face of the batter, giving the direction towards the fine leg region. Fine leg inside the ring, and the ball went towards the defined leg boundary for 4 runs. Ganesh has got a boundary for that very good sweep shot. Now one fielder is added now towards the square leg region between square leg and fine leg. Again outside and off tempo. One more wide. Lot of extras conceded. Manish struggling to get his line and length. Again scoreboard numbers on to 20 on the board. 20 for the loss of 2 wickets. Again outside the line of off stamp. Batsman misses it complete, but umpire not missing the opportunity to signal the bye. So one more extra. 2 overs completed. Fantastic over here for team Panjirail. They got some runs in the form of extras. Altogether, 1 boundary is also conceded, and the plenty of runs came from that over. Scoreboard is 21 on the board. 21 for the loss of 3 wicket. 21 in the sense 14 runs which is conceded. 14 runs which is conceded in that over of Manish. Highly expensive in this condition, where there is not that much of easy opportunity for the batter to get the big strokes. If you concede the runs in the form of extras, it's always going to be a
Huge runs. Third over going to start, and Nagendra brought into attack. Went for reverse serve and backhand flick there for the wicket keeper, but ball misses the stumps. Lot of innovative works in this present cricket, especially getting some inspiration from some international cricketers doing that job. The flick, backhand flick to hit the stump without seeing the stumps. Wanted to hit the stumps, especially the wicket keeper almost got an opportunity to do that job. And starts with the dotted delivery. Nagendra, second delivery which is dotted. Third one also beautifully bowled. One more dotted delivery, the much required dotted delivery there from bowler Nagendra. You know exactly after that very expensive over, they needed to restrict the runs for team Tatvamasi 11s for team Tatvamasi 11s. Again plays it now down to short mid wicket region. Ample time for the batter to complete the single, and with that single score Namuzan to 23 on the board for the loss of 3 wickets back into pavilion. Nicely swept down to square leg region. They're running hard, looking for the second. Absolutely, there is opportunity of second run because of that slowness of the fielder, the grabbing the opportunity to come back for the second. And with that, couple of runs, Kobar Namuzan to 25 on the board. Nagendra. Right arm over the wicket to Ganesh. Ganesh this time going for the drive. Not quite getting hold of that and properly. Ball is in there for a while, but safely landed. Good over there from Nagendra. After completion of over number 3, searching for that right track. It's a 26 on the board. 26 for the loss of 3 wicket. It's a very good over. And compared to previous over, I think it's 5 runs came from that over of Nagendra. And it's a very economical over from Nagendra. And the last over remaining in the innings of team Jay Panjirel, and wait and see how Jay Panjirel will going to get the runs in the last and final over. For the next match, I request team please get ready. Dream 11 Chowki as well as Samrat United. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಯಕರು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ. ಡ್ರೀಮ್ 11 ಚೌಕಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್. Meanwhile, one more single added to total. With that single score Namuzan to 27 on the board. 27 for the loss of 3 wicket. The very good partnership is progressing here between Ganesh as well as Sachin. The bowler is introduced, Dhanush, for bowling a final over. Second time. Round the wicket. Balls beautifully bowled. Appeal for leg before wicket, but rightly so umpire. Ball pitched outside the line of leg stump. Of course, ball going to hit the stump, but the fact that ball pitching outside the line of leg stump, because bowler bowling round the wicket, and looks like ball definitely will go into pitch outside the line of leg stump, and rightly so umpire Ramachandra is not interested. Leg by call by umpire. One more addition with that single score Namuzan to 28 on the board for the loss of 3 wicket. Dhanush, third time in this over. Driven beautifully, right in the gap. No need to run for that. Ball went like a tracer bullet. You can't do the mistake the bowling that line, because the square leg and fine leg inside the ring. And if you're not having a fielder in that region, I think it's not a right line to ball to the batter. And batsman capitalizing Ganesh. And he got a very important boundary for his team, and scored Namuzan to 32 on the board. They're looking for a couple, but no chance at all for second. One more single. With that single score Namuzan to 33 on the board for the loss of 3 wickets. A very good partnership is progressing here. Right above the wicket. Oh, that was a good one. Absolutely good one there from young Dhanush. Giving some flight in the delivery. Tossed up delivery. Inviting the batsman to go for the big shot. And beaten by the face and by the turn. The batsman completely missed out the delivery. Again, right now round the wicket. Coming down the track. Misses the line completely. Wicketkeeper not missing the opportunity. That's it. 4 overs completed. After completion of 4 overs, team Panjirel, the man is to get 33 runs and set a target of 34 to win the match for team Tatvamasi 11s to win this match. And wait and see how Tatvamasi 11s will go to get this total of 34
5:34 to win this match. Is going to be one more good match here, and we'll take a short break here, and after a short break, my friend Gopi will going to take over the microphone in our national language, Hindi. And for the next match, I've already toss which is completed. Toss which is on by Samrat United, and they elected to ball first. That is the news for the next match. Yet to decide. There's a decision which is not made here by the captain of Samrat United. Decision which is pending. And here is the time for a change in commentary box as well. It's over to Gopi. Thank you. So the match is now going to, in fact, it's a second innings going to start. और धन्यवाद सतीश. तो यहाँ पर दूसरी पारी शुरू होती हुई और इस बीच पहली गेंद ऑफ द बैकफुट गेंद को इस वक्त खेल दिया शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ 1 रन रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. 1 रन तत्वमसी 11 1 रन जोड़ चुका है. रन से बनाने हैं 34 निर्धारित 4 ओवर में और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त अनिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए मनीष ये गेंद चिपके इस वक्त लंगोट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. That is an outstanding strike, absolutely outstanding. Just get that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style our Langon fans for a huge one. और इस छक्के के साथ बेहतरीन तरीके से अपना खाता खोल चुके हैं मनीष और स्कोर बोर्ड छलांग लगाकर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और इस बीच ओवर की अगली गेंद ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रन बिना किसी नुकसान के. गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद एक बार फिर से लंगों पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर. अगेन मैक्सिमम 2 sixes in 3 deliveries. This is an absolutely outstanding start for तत्वमसी. और 2 छक्के इस वक्त मनीष जड़ चुके हैं और इन 2 छक्कों की बदौलत स्कोर बोर्ड इस वक्त पहुंच चुका है 13 रनों पर. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर मनीष नाउ. और स्ट्रेट अवे द बॉलर इज नाउ ऑन अंडर प्रेशर और अगली गेंद लेकर तैयार. दाइना तो ओवर द विकेट बॉल्ड आउट. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कमबैक. दिस इज एन अ परफेक्ट यॉर्कर इन डिलीवरी एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन. सो ही जस्ट टुक द रिवेंज एंड फाइन इनिंग्स केम टू एन एंड फ्रॉम मनीष. एक छोटी मगर बेहतरीन पारी पर पर्दा कर चुका मनीष का. 13 रन उन्होंने बनाए और सिर्फ 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 225 स्ट्राइक रेट की मदद से 325 स्ट्राइक रेट की मदद से 12 रन बनाने के बाद इस वक्त पिवलियन वापस लौटते. सो ही इज आउट फॉर 12 इन जस्ट 4 डिलीवरी पे 300 स्ट्राइक रेट इन फैक्ट. और इस वीक जब मनीष का विकेट गिर चुका उनके छोटे भाई इस वक्त मनु का आगमन होता हुआ और देखते हैं यहाँ पर मनीष के भाई मनु इस वक्त क्या करते हैं. तो अंपायर कुछ बातचीत यहाँ पर करते हुए और इस श्रृंखला के नियम के बारे में दोनों अंपायर खिलाड़ियों से कुछ बातचीत करते हुए और बातचीत करने के बाद इस वक्त
अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और खेल एक बार फिर से पुनरारंभ यहाँ पर होता हुआ 13 रन बन चुके हैं। नए बल्लेबाज मनु का आगमन यहाँ पर हो चुका है और अनिल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला, शॉट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रन, एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अनिल एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला, इस वक्त गेंद निकलते हुए बैकवर्ड थर्ड मैन पर 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यशस्वितम यहाँ पर पूर्ण कर चुकी। जस्ट प्लेड दैट वन विद अ ट्विस्टेड बैट एट द लास्ट मोमेंट एंड फाइंड्स द गैप एज वेल जस्ट वाइड ऑफ द गली फील्डर एंड बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट अ कपल रन फॉर दैट स्ट्रोक और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रन। सो फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर तत्वमसी 11, 16 runs scored in the first over and just chasing the victory target of 34 in 4 overs. They made a terrific start now, 16 for the loss of 1 wicket after completion of first over. 18 runs more now they have to score for victory in remaining 18 deliveries and at this situation the equation seems to be much easier for them. और जहाँ तक गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए हर्षित गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए दोनों टीमें अपने पहले मैच में विजय दर्ज करने के बाद अपने दूसरे मैच में इस वक्त भिड़ रही है और यहाँ पर निस्संदेह यहाँ पर विजय दर्ज करने वाली टीम इस श्रृंखला के टीम के पॉइंट्स टेबल पर टॉपर होगी और यहाँ पर गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेल दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में और गेंदबाज इस वक्त हर्षित गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। पहली गेंद डॉट थी और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद इस बार चिप किया, लंबा ऊपर मौका और ये कैच छूट चुका है, ये कैच छूट चुका है और गेंद सीमा रेखा के बाहर जा चुकी है 6 रनों के लिए। Certainly that wasn't a chance. He's got a hand on to that at the last moment. और लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकते हुए गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त बल्लेबाज मिथुन के बल्ले से लगता हुआ। अगली गेंद, ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी एंड जस्ट ही गॉट रीड ऑफ द बैट्समैन, just gone for off, extra quicker delivery and the ball passed between his bat and leg and stuck to his mid and leg stump. Bells are disturbed and that is the wicket number 2 now, 22 for the loss of 2 wickets and second wicket is now backing to pavilion. It's 22 for 2. 22 for 2 22 for 2 24 के नड़ा तो नए बल्लेबाज नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल। नागेंद्रा इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और हर्षित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। 12 runs to get for victory in remaining 15 deliveries और गेंदबाज ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर। इट्स 23 for the loss of 2 wicket now, 11 runs to get now in remaining 14 deliveries. The equation seems to be much easier for them. और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद स्वीप किया, डेलिकेट शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन का इजाफा। फील्डर ने थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा और यहाँ पर विकेट कीपर उनको डांटते हुए कि उन्होंने क्यों थ्रो नहीं किया स्ट्राइकर एंड पर, वहाँ पर रनआउट का मौका जरूर था लेकिन आखिरकार बल्लेबाज 1 रन पूर्ण कर चुके हैं। फील्डर ने कोई जोखिम उठाना मुनासिब नहीं समझा इस गेंद पर। अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, हल्के से गेंद को दिशा दी गली की दिशा में, थोड़ी सी मिसफील्ड लेकिन इस बार बल्लेबाज को मिलेंगे सिर्फ 1 रन। सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर बल्लेबाज अपनाते हुए दोनों क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज जान चुके हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 6 से नीचे है इस वक्त और इस वजह से हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी बटोरते हैं तो निस्संदेह इस वो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो अब 9 रन चाहिए विजय के लिए, 9 runs to get in remaining last 2 overs. The equation seems to be much easier now for them. और जहाँ तक कमबैक करने का सवाल है इस वक्त कमबैक करने के लिए जय पंजीरेल को इस वक्त चाहिए डॉट गेंदे और विकेट। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर, 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट।
at the start of the third over. In fact, गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप किया इस वक्त डेलिकेटली प्ले डाउन टू अ शॉर्ट स्क्वायर लेग. इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. सचिन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर बोर्ड रुक चुका है 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. फिर से एक बार गेंदबाज सचिन ने इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर काफी बाहर वाइड का इशारा गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. इट्स 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. फिर से एक बार गेंदबाज तैयार. यह गेंद उछाला इस वक्त लंगोट पर 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा तत्वमसी 11 अपने विजय के अति निकट यहां पर हो चुका है. So it's a win. So they won the match with that 6. They won the match in fact with that 6 and the batsman hit that one in a style and finished the match in a style. So comprehensive victory for Tatwamasi 11 in the third over of their innings and with that victory they bagged the complete points. So they registered their second victory in this tournament and the next match is now going to play between Dream 11 Chowki versus Samrat United. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇಂದು ಆಡಲಾದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತತ್ವಮಸಿ ತಂಡದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ ತಂಡದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಜೈ ಪಂಜಿರೇಲ್ ತಂಡದ ಸಚಿನ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ತೆರಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೈತುರ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜೈ ಪಂಜಿರೇಲ್ ತಂಡದ ಸಚಿನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೈತುರ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ತಾನೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ 11 ತಂಡದ ಮನೀಶ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಂಜಿರೇಲ್ ತಂಡದ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಂಜಿರೇಲ್ ಇವರು 4ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದೀಪಕ್ ಇವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸ್ಟೀವನ್ ಪಂಜಿರೇಲ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಕೊಂಗೂರ್ ತಂಡದ ದೀಪಕ್ ಇವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರೀಮ್ 11 ಚೌಕಿ ಹಾಗೂ ಸಮ್ರಾಟ್
United ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. Dream 11 Chowki will take over Samrat United in the next match, and the match is now going to start and will be. And for the next further comments, I would like to invite Mr. Satish in English. Thank you. धन्यवाद. So thank you very much, Gopi. So coming back to the match number 6 here, and Dream 11 Chowki versus Samrat United. After winning the toss, captain of Samrat United looks like they elected the field first, so that opening batsmen of Dream 11 Chowki, they're in the middle, Rahul and Lokesh. Rahul is on strike, and the bowler Praveen, after bowling a very good first delivery, now he's back to his bowling mark to bowl the second delivery of this over. Right arm over the wicket to the right-hand batsman Rahul. This time going down the leg stump, nothing much to do with the delivery. Very good collection behind the stump, but not quite able to stop the umpire to signal the wide. So with that extra score numbers, of course, the first run comes up here for Chowki. Oh, lovely work. Wicketkeeper behind the stump this time did the work, but I think it's a little bit late, and reaction coming from the wicketkeeper behind the stump. It's a very good work, but not quite enough to get the result. And umpire rightly so, Arish at square leg, seeing that the back leg of the batter slightly it's inside the line, so that no question of giving out. It's 2-1 on the board, one without loss of any wicket in the over number first is in progress. Praveen bowls again, a lovely delivery indeed. A little bit extra bounce here for the bowler, beaten by the bounce. The batsman looking for the drive, but missed it completely, and there is no chance at all for any run. The score remains on 1 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Praveen bowling right arm over the wicket to Rahul. Rahul this time places the ball nicely down to a short mid-off region for a single. With that single, Skoban moves on to 2 on the board. It's a very hard combined runs here, and that's only because of Praveen's bowls. Very good line and length in the first over itself is right on the money. Very interesting, and in this particular one more white cricket tournament, and which is organized in this most beautiful Panjarail cricket ground. But here is the temperature is at 25 degrees Celsius. Nicely swept that one. Again, looks like it's going to be one more run added to total. With that single, Lokesh is off the mark, and total score now moves on to 3 on the board. 4 on the board, correction, 4 for the loss without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Praveen bowls Lokesh. Lokesh drives that one nicely down. Good stop there by the fielder at extra cover. Got his left hand to stop that one. So 5 runs came from that first over. After completion of first over, searching for the right track. And Dream 11 Chowki managed to get only 5 on the board without losing any wicket. And even the 32 degrees Celsius, the temperatures which is recorded, but because of some wind and of course some greeneries, huge trees around the ground, looks like it's going to be a fantastic weather condition. Even no one is feeling that much of hot. And just we can see that strong breeze is passing in the middle of the ground, and that shows that this is one of the most beautiful cricket ground, and very good cricket ground, especially the umpires as well as the players will going to enjoy this condition. And that's the beauty of this nature, and especially when you're playing in this particular cricket ground, you are not feeling that much of hot, and because of a strong breeze is passing in the middle of the ground. Bowler Dheeraj brought into attack to bowl the second over. Right arm over the wicket delivers to Lokesh. Lokesh going for the big drive without... this time is gone. But very, very, very interesting to see that the bowler is not really appealing that much of hard. And that's why umpire Arish just waiting for the bowler to make the appeal. Because even wicketkeeper also is not really appealing there. But ball is just striking him right in front of middle stump. And the wicket number, the first which is back into pavilion. Rahul, the batsman, is back into pavilion.
So looking for a big drive, misses the line completely. Then Dheeraj struck him right in front of middle stump. Just wanted to play that one against the line. And just slight a bit of appeal. And umpire rightly so, Arish knows that ball is right in front of middle stump. And wicket number first, which is back into pavilion. The new batsman in is the left-hand batsman, Kritik, one who played a magnificent innings. Ritik is a very tall and very promising left-hand batter, one who played a magnificent innings for his team in the previous match. Will go into face his first delivery. Dheeraj bowling right arm over the wicket. Ritik drives that one, but not quite getting that one middle of the bat. Little bit fumble from the fielder, but no question of second run there. And Ritik is off the mark with a single. With a single score, moves on to 6 on the board for the loss of 2 wicket in the over number. Second is in progress. So scoreboard is 6 on the board, 6 for the loss of 2 wicket. Dheeraj right arm over the wicket to Lokesh. Lokesh drives that one down to long off region for a single. With that single, scoreboard moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket. And slowly and steadily, these two batters try to get some runs on the board for team Dream 11 Chowki. Dream 11 Chowki, they lost their first match in the league matches against Jai Panjaril. This time lofted that one down to deep long of boundary. Magnificent struck. Even the great effort that from the two fielders, which is not quite enough to stop the boundary. One bounce into the fence for 4 runs. And with that boundary, score jumps into 11. Have a look at that one in the replay. The batsman now played that one in the air down to deep long. There is a protection in the long on, but it is wideish long on. After one bounce, the batsman, fielder tried to stop the boundary. He got a ball on his hand, but couldn't manage to stop the boundary. And even that fielder who is in the deep long off region tried to stop the boundary, but he fails to make that stop that boundary. Again, execution is very well from Ritik, just like what he did in the previous match. The same thing is continuing is for his team. But of course, unfortunately, his team has lost the match. Even he batted very well, and in this match also is contributing from the bat. With that couple of runs, Koban moves on to 13 on the board. 13 now again misfilled there by the bowler on his follow through, so that Ritik completed a single. One more over completed after completion of 2 overs, searching for the right track. It's a 14 for the loss of 2 wicket. They're going exactly 7 runs per over. So much productive over going in favor of team Dream 11 Chowki, and very important for Dream 11 Chowki that they need to open the account in a points table. As far as team Samrat United is concerned, they also lost the match, their first match against Shining Boys Jyotinagar. That means very important match for both the teams, because the team which is lost their first match in the league, they're playing each other. And this is a competition between two losing teams. In their the first league matches, both the teams have lost their match, so they're fighting hard to get the first victory for their team. Pushparaj brought into attack to bowl the 3rd over. This time off the flare toes, nicely flicks certain of his legs down to square leg region for a single. With that single, score numbers on to 15 on the board. 15 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Pushparaj back to his bowling mark. The batsman in strike is Loki. Loki came as opener for the side. So far he tried to get some runs on the board. As much runs as possible he wanted to get. Know exactly the winning this match is very important. Again, nicely bowled outside the tip of the bat. They're going for the single. It's asking for trouble. And rightly so. Ritik is not interested because ball went very quickly to that 3rd man region. Of course, because of that, it's very difficult to get the single. And a quick throw coming from the fielder. But rightly so. The batsman, right moment, last moment, he managed to
back into crease so that no damage is done. Score remains on 15 on the board. Again, plays it down to backward point region. Slightly misfield there by the fielder so that the batter Kritik to complete. Of course, Lokesh picked up a single here. 16 on the board. 16. Now we can see that the passenger train, which is just passing behind this cricket ground. Absolutely fantastic view of this cricket ground. And again, now they're going for the big drive and misses it completely. Leg by call by umpire. And some passengers which were sitting besides window, they're just enjoying the game of cricket of this BPL. One of the most beautiful cricket grounds situated in this Kudupu region. So again, far outside the line of off stamp and white call by umpire. One more addition to total addition of that single score moves on to 18 for the loss of 1 wicket in the over. Number 3 is in progress. Pushparaj bowls again, went for the sweep shot. They're going for the single and they completed. And even they're going for the extra run as well. Then completed. Excellent running between the wicket. By call by umpire and frustration for the bowler. Wicketkeeper fails to collect the ball. And the batters grabbing the opportunity to come back for the second as well for the overthrow. Score moves on to 20. Valuable runs coming in this previous delivery, where could be a dotted one, but because of the wicketkeeper misfielded, and they got a couple of runs here. Looking for the reverse sweep, picked up a single there, and with that single, score moves on to 21 on the board. Over number 3 completed. After completion of over number 3, team Dream 11 Chowki is scoring at the rate of exactly 7 runs per over, 21 for the loss of 1 wicket. A short while we are completed the inaugural ceremony, very grand inaugural ceremony of this prestigious cricket tournament. Not only that it's a simple inaugural ceremony, but a very meaningful ceremony. And in that meaningful ceremony, we have witnessed some very talented and of course some achievers for the social service, of course for the feeding for the animals. Rajni Shetty has been honored. Aditi Kudupu is honored at the appearance of the chief guest for this prestigious BPL. The Bhaskar K becoming the chief guest for this inaugural ceremony. Bhaskar K, ex-mayor of MCC and corporator of Pada Ward number 36. With the presence of Uday Kudupu, the proprietor of Durga Parameshwari Transport, with some dignitaries like Devdas Anchan Kudupu, Alban managers Praveen Nadumane and Ajay Mangalanagar. Meanwhile, start of the over number 4, the first ball itself, the bowler strike. Nikhil strikes with the first ball itself. He got a huge wicket of Lokesh, who was looking for the huge stroke, and couldn't manage to get the distance right, and deep long off fielder completes the catch, and disappointment continues here for Lokesh. Is back into pavilion after scoring some very important runs for his team. So new batsman in is Praveen, is walking towards the middle as a number 4 batter for the side. It's a very good weather condition. Even just like mentioned about even 32 degrees Celsius temperatures which is recorded. But in this particular cricket ground, you will not going to bother about that how much degree Celsius of weather. Again, the plum in front of wicket, absolutely plum. Against the line, he wanted to swing that one, misses the line completely. Of course, the short pitch delivery, but batsman little bit early into the stroke, misses the line completely, and umpire not missing to raise his finger. Arish, the wicket number 3 is back into pavilion, and the batter is out for golden duck. Gautam, Praveen is a batter, is back into pavilion for golden duck, and now Gautam walking towards the middle. 21 for the loss of 3 wicket. Good comeback by the bowlers. After that, 2 expensive over. Then Pushparaj bowled a good one. Then Nikhil so far bowled a very
Good two deliveries where he picked up 2 valuable wickets. That means he's on hat-trick. So far there is no hat-trick in this tournament and he's got a golden opportunity to pick the hat-trick. Nikhil, hat-trick delivery. Right arm over the wicket to Gautam. Oh, that's he missed that opportunity. But here is a wicket falling. But that wicket not will going to go. That wicket will not go into the account of the bowler because that was a run out. But at the same time, he just lost the opportunity because he bowled a wide delivery. So that wide 1 run which is added to total. But unfortunately, the batsman is back into pavilion. Ritik definitely wanted to be in the striker's end. And this is the final over. Unfortunately, he's back into pavilion. Shashank is a new batter in. The scoreboard is a 22. The over number last is in progress. Nikhil, right arm over the wicket. Drives that one and down to deep long on. Gautam picked up a single there. Looking for the second. In comes the throw and directed, but umpire looks like it's gone. Absolutely fantastic throw coming from the long on fielder. It's a direct hit. And even batsman doesn't know exactly what really happened. I think the very good presence of mind here from the bowler is not gathering the ball. He is so much confident that ball is hitting the stumps. He just left the ball rightly, so ball hits the stumps. Batsman short of his crease. So wicket number 4 which is back into pavilion. It's a 23 on the board. Gautam will go into face Nikhil. Nice looking drive down to deep. Extra coverage. They go coming back for the second. One more run out taken place. The wickets are falling like a house of cards in this last over. 2 run-outs, 2 wickets. Altogether, the 4 wickets which is back into pavilion in 4 consecutive deliveries. And scoreboard is 24 on the board. Santosh is a new batsman in. Nikhil bowling to Gautam. Gautam knows that didn't got enough runs on the board. Wanted to get some big shot in the last over if they wanted to get a good score here. Beautifully bowled. Wicketkeeper, fantastic work. Absolutely good one there from wicketkeeper behind the stump. Just in a fraction of a second he completes the job. The batter Gautam coming down the track, tried to hit the ball and misses the line completely, but he's well out of the crease. Tried to use his feet to get that one over the deep extra cover. Misses the line completely and wicketkeeper behind the stump. Pushparaj is not missing the opportunity. The 3 wickets in this over for Nikhil and 2 run-outs. Altogether 5 wickets in 5 consecutive deliveries. One is a wide where they got run out. Umpire saying there exceeds the time so that they have to bring 1 fielder inside the ring. As per the rules and regulation of this cricket is concerned, they need to put 1 fielder inside the ring for that last delivery. Joyal is on strike. Again the wide, the second wide of this over. 1 more addition. Scoreboard numbers on to 25. Nikhil. Right arm over the wicket balls. This time lofted at one. Going to be a chance. And 4 wickets in this over for 4 wickets in this over for Nikhil. But altogether 6 wickets is fallen. 2 run-outs. 2 run-outs and 4 wickets for Nikhil in this final over. Absolutely fantastic last over for team Samrat United. After winning the toss, they elected to field first, and bowlers justifying the decision of their captain, restricting the opposition for 25. And they got 7 wickets, 8 wickets. So 4 wickets for Nikhil. And before the next over going to start, it's a time for change in commentary box as well. And it's over to go before the further explanation of the match in our national language, Hindi. And the Samrat United have to get 26 runs to win this match. It's a small total, but wait and see. For the next match,
Seventh match will be going to start between Shining Boys Jyotinagar versus Amazing Kongur Warriors. So that I request both the teams' captain please be reported to the commentary box immediately for the toss. Ali Shining Boys Jyotinagar ಹಾಗೂ Amazing Kongur Warriors ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ So umpires to signal here to start of the match. The time is exactly 12 past 31 and 12 past 31 and it's over to Gopi. Thank you. Dhanyawad Satish. So the match, second session of this tournament is now started, and the target for them is 26. They have to score in the stipulated 4 overs, exactly 6.5 runs per over. They have to score for victory, and the innings now started. First ball, second ball, in fact, just played that one. Again, को खेला square of the wicket अंतिम क्षण में 1 रन के लिए. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हल्के से गेंद को पुश कर दिया. गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर. सम्राट इस वक्त बल्लेबाजी करता हुआ. सम्राट यूनाइटेड ड्रीम 11 चौकी के खिलाफ है और गेंदबाज इस वक्त शशांक का गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, जबकि सामना इस वक्त करने के लिए तैयार धीरज. निक्की नॉन स्ट्राइक रेंज पर और गेंदबाज की यह गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी. ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड. ऑफ स्टंप से काफी बाहर और वाइड की रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर शशांक एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए. ताइना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार. यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ. वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 6 विदाउट लॉस. 6 without loss. इस बार रिवर्स शॉट delicately played and it finds the gap as well and it's gone now the fence for a boundary. Absolutely fantastic shot this time. He just played that one with a twisted bat and finds the gap as well, and because of that he's got a boundary for that. 4 रन उनके खाते में जुड़ता हुआ और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 10 रनों पर बिना किसी नुकसान के. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ धीरज के बल्ले से और इस चौके के साथ 10 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है. और शशांक एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन इस बार गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर. ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक बेहतर सा गुड स्टार्ट फॉर Samrat United. 10 runs they scored, yet to lose any wicket after completion of first over, just chasing the victory target of 26 in 4 overs, and 16 more runs now they have to score for victory in remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs, and the situation equation seems to be much easier for them. और जहाँ तक अगले मैच का सवाल है, just talking about the next match, Shining Boys Jyotinagar will takes over Amazing Kongur Warriors, and in this match Shining Boys Jyotinagar won the toss, and the bowler brought into the attack is Ritik. इस वक्त नई गेंदबाजी शुरू करते हुए और अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबद्ध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद. कोई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर तैनात नहीं. यह गेंद लेग स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर
अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर। एक बिना किसी नुकसान के 11 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद है, ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, अपने घुटनों के बल बैठकर गेंद को उछालना चाहा लेकिन गेंद काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट लेग स्टंप से बाहर कुछ ज्यादा हद तक बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। दूसरा ओवर उनका यहां पर प्रगति पर। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस 12 विदाउट लॉस नाउ। और फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑफ द टोज गेंद को खेला खूबसूरती के साथ वाइड स्लॉग ऑन पर और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। इट्स 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए वाइड अगेन 14 विदाउट लॉस। जस्ट अ सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ऋतिक दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए फुल टॉस स्टीयर किया इस वक्त खूबसूरती के साथ एक रन के लिए शॉर्ट थर्ड मैन पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्डर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 15 विदाउट लॉस। गेंदबाज ऋतिक एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद को स्कूप किया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ते हुए काफी लंबा दौड़ लगाते हुए सीमा रेखा के अंदर जब तक गेंद को फील्ड करते फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। सेंसिबली प्लेड दिस टाइम बाय द बैट्समैन जस्ट स्कूप दैट वन एंड ही गॉट अ कपल ऑफ रन्स फॉर दैट स्ट्रोक। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ऋतिक का दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट गली की दिशा में रनआउट का खतरा। थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो काफी वाइड आ रहा है और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े। दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। थ्रो वाइडर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन प्राप्त करने का। तो 2 रन इस गेंद पर बने और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। जस्ट 7 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 13 डिलीवरीज। और ऋतिक इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट धीमी गेंद ऑफ द टोस गेंद को खेला खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर एंड फंबल इज गोइंग ऑन देयर इन फैक्ट बट द बैट्समैन फाइनली गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर। 2 overs completed and after completion of 2 overs they are looking in a commanding situation. It's 20 without loss after completion of 2 overs for Samrat United against Dream 11 Choki. सो थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स। और गेंदबाज इस वक्त गौतम गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट लेग स्पिन गेंदबाजी लेग स्टंप से बाहर वाइड 21 विदाउट लॉस। और फिर से एक बार गेंदबाज गौतम इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। स्कोर रुक चुका है 21 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 21 विदाउट लॉस। जस्ट 5 मोर रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। गौतम फिर से एक बार तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट फ्लाइटेड गेंद को खेला इस वक्त मिड विकेट पर एक रन के लिए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 22 विदाउट लॉस। जस्ट 4 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। गौतम फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते बेहतर गेंद थी विकेट कीपर चूके शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद। एक रन मिलेगा सिर्फ बाई के रूप में और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार गेंदबाज रिवर्स शॉट गली की दिशा में एक रन मिला। थ्रो जब तक पहुंचे और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर। 24 विदाउट लॉस। जस्ट 2 रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और फिर से एक बार गौतम
गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, और इस एक रन के साथ the scores are now level. Just a single run they have to score for victory in remaining 70 deliveries. और गौतम for the last time in this over गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, रिवर्स शॉट, गेंद को खेला खूबसूरती के साथ. That's it. And a comprehensive victory for Samrat United against Dream 11 Chowki, and they with that victory they registered their first victory in this tournament, and they backed the complete points, defeating Dream 11 Chowki. So the match number 6 has been came to an end, and Samrat United defeated team Dream 11 Chowki and backed the complete points. So man of the match of this match award goes to the player who performed terrifically with the ball, claiming 6 wickets, and also he scored plenty of runs from his bat. Nicky of Samrat United adjudged the man of the match for his wonderful batting and bowling performance. I request Mr. Nicky to please come on to the stage and receive the man of the match award from Mr. Rakesh, one of the organizer of this tournament, BPL Baithurli Premier League 2023. I request Mr. Rakesh, one of the organizer, please hand over the award to Nicky for his all-rounding performance in this match. So match number 6 is now ended just short while ago, and match number 7 is now going to start between Shining Boys Jyoti Nagar versus Amazing Kongur Warriors, and we are just taking a short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English, when the next match will going to start with just short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. Welcome back once again. The match number 7 of the day number 1 of this prestigious BPL Baithurli Premier League 2023 and season 3, and very good day for cricket. So far 6 very good matches which is completed along with the inaugural ceremony, and now we are into the 7th match of the day number 1. Shining Boys Jyoti Nagar takes on Amazing Kongur Warriors, and everything is ready for this match. After winning the toss, captain of Shining Boys Jyoti Nagar elected to field first, and opening batters of Amazing Kongur Warriors are in the middle. Amazing, they won their first match. At the same time, Shining Boys Jyoti Nagar also, they won their first match of the league.
This time a lovely shot driven down to wideish long on region. Before that, long on fielder to run across to his right to field the ball. Ample time for the batter to complete a single. Good piece of fielding there by the fielder at the deep long on. Just moving towards his right quickly and stopping runs for his team. Just a single here, and with that single, Rohit is off the mark and Ashit is on strike now. Left-hand batter is on strike. It's a very young, talented batter for the side. Will go into face Kiran. Kiran again now. Back to his bowling mark. Right arm around the wicket. Looks like it's a no ball. Absolutely no ball. The appeal for run out. But ball which is completely missed out. The bails are off, but not from the ball, but from the hand. The umpire knows that. It's a no ball called by umpire because the ball pitched outside the pitch. So that it's a no ball means it's a free hit delivery for the batter. A free hit delivery for the batters. And the opportunity for the batsman to take the advantage of that free hit delivery. So 1+1, 2 run added to total, and scoreboard now 3 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. So coming back to these two teams, and Shining Boys Jyoti Nagar, they defeated Samrat United in their first match. At the same time, amazing Konguru Warriors are defeated Jai Vasuki in their first match. That means both the teams, they won their league matches. And this is a match between two very good teams in the second match. Right arm over the wicket bowls. And the wicketkeeper stops the ball from his legs. And there is nothing much to do with this delivery. But umpire, rightly so, the ball within the reach of the batsman. Batsman misjudging the line of the ball. And thought it might be a wide. But it's a fair delivery, the dotted delivery. And the scorer remains on 3 without loss of any wicket. Kiran again. Right arm over the wicket balls. There's some drives that one firmly down to long on region for a walkable single. And with that walkable single and Arshit, Rohit is off. Rohit had also picked up his second run from his bat, and the scoreboard now moves on to 4 on the board without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Right arm around the wicket. To left-hand batter, Ashit drives that, not quite getting that much of timing behind that stroke. It's just checking the stroke in the last moment. One more addition to total with addition of that single. Scoreboard now moves on to 5 on the board. The over number first is in progress. Ashit is off the mark. So far it's a very decent over from Kiran. Right arm over the wicket, he delivers. Bowls again. They're going for the run. Chance of run out. Oh, and he's gone. Direct hit. Fantastic throw coming from that short fine leg fielder. The batter Rohit wanted a single where there is no run at all. The beautiful piece of collection and throw from that short fine leg region fielder. Hitting the stumps. The batsman well short of his crease. And the wicket number first is back into pavilion. It's a 5 for the loss of 1 wicket. So Bharat is a fielder down at short fine leg. Fields the ball very nicely. Then observing that opportunity of the run out, and it's a stump. The batsman short of his crease. First wicket is back into pavilion, and new batter in is Dilraj. Dilraj drives that one. Bowler's back drive and misfielded there by the bowler on his follow through. Kiran completes his first over. After completion of first over, they're searching for the right track. Team amazing got 6 runs by losing 1 wicket, and 6 for the loss of 1 wicket. The very good start given there by the bowler Kiran in the first over. Just a 6 run because there's a power play over. Always is a good over when the bowler concedes 6 runs for and 1 wicket in the form of run out. BPL, Baithurli Premier League, the day number 1. The fever of IPL also started in international standard. Of course, IPL, Indian Premier League, yesterday inaugurated the inaugural match. Defending champion Gujarat defeated 4-time champion Chennai Super Kings. And their first match here is BPL is on. The IPL is also on. And here is a first ball, right arm over the wicket. And a dotted delivery to start with. This time pulls that one and handsomely, and he got the distance for that.
The picking that one very nicely, isn't it? It's not a so easy stroke to play in the book because extra bounce. Of course, it's a short pitch delivery from Bharat, but the batsman have to connect that one very well. And he's judging that extra bounce very well, taking his own position quickly, pulls that one handsomely down to deep square leg for a huge 6. Again, frustration and the pressure. Oh my goodness! Again, the wicket keeper. I don't know why he's making that much of urgency. This is the second time he's missing the golden opportunity. Vishal, again, without collecting the ball, he wanted to make the run out. This shows urgency from the wicket keeper. We need to be very careful, isn't it? They need to collect the ball properly. Then you need to try for the run out. The second time is the same thing is happening. Ball which is missed. Bills which is uprooted from the stumps. But ball which is not in the hands of wicket keeper. Right, a over the wicket. Drives that one down to mid wicket region. They're going for the quick single. This time directed, but I don't think the batsman definitely is going to be safe. Is no danger at all for the batter. They complete that quick single very well. One more addition to total with that addition of that single score numbers on to 14 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. Second is in progress. Bharat calling one fielder inside the ring. Of course, even though it's second over of the over, they wanted to keep the wind fielder inside the ring there because 3 protection has been given in the deep in the onside region for the left-hand batsman Ashit. One at fine leg, one at mid-wicket, one at deep long on. Deep long off and wideish. Long off and wideish long off. One more dotted delivery. Good comeback from the bowler's point of view. Bharat after he conceded 6. Then he bowled very good deliveries after that. Again, one fielder has been asked to to come inside the ring and square leg going into deep backward square. A lot of protection is given in the deep. And the defensive field set in the onside region outside the line of off stamp. Misfield there by the fielder so that batsman have to settle for the single. 2 overs completed after completion of over number 2. Amazing Congo Warriors. 15. They're going exactly 7.5 runs per over. And in the projected score, it's going to be a 30 runs. The same run rate they were able to get the runs. They will going to finish the innings with a 30. And wait and see how well these 2 batters will going to get these runs in the remaining 2 overs. Baithurli Premier League most awaited tournament because it's been promoted from last 1 month was 2 months. The organizer did a great job to get the promotion for this Baithurli Premier League. One of the most prestigious belt area cricket tournament is organized in this most beautiful Panjirail cricket ground. The leg spinner is in action this time. Looks like there is opportunities created for the run out, but batsman missed it. Wicket keeper missed it. By call by umpire with that extra score numbers on to 16 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. Third is in progress. Dilraj and Ashit are the 2 batters are in the middle to get some partnership. This time beautifully bowled. Wicket keeper again. They missed the golden opportunity to make the stump out. Batsman out of the crease. And he missed it completely. This time going for the big drive again. Chance of run out. This time he got the ball in his hand. Just like I mentioned, is a learning from the mistakes. Maybe after that 2 missed opportunity in the form of run out. The wicketkeeper Vishal is knowing that the collecting the throw is very important. Then after that he completes the job. And batsman well short of his crease. Ashit departs. And the wicket number 2, which is back into pavilion of team amazing Congo Warriors. The new batter in is Deepak, the hero of the previous match. He played a very good innings for his team. But I think it's a late entry for him. Maybe he's required in the early stage of the innings.
because this is over number 3rd is in progress. Just a bowled him, cleaned him up. Magnificently bowled there by the bowler. Sachin, the man of the match of the previous match, the league match, has been outstanding. Picked up 2 valuable wickets, and correction is a 1 wicket, one in the form of run out, and excellent delivery because Deepak, the danger man, is back into pavilion. Deepak has played a good innings for his team in the previous match. Is unfortunately is back into pavilion. A good bowling display from Sachin so far. Prakash is the new batter in. This time bowler's back drive. Fantastic piece of bowling continues here from Sachin. Not only bowled very well, but he fields very well on his follow through. There is no question of any run. So far it's outstanding over his continues for Shining Boys. Again, the single has been taken there by the batter. Prakash is off the mark with a single. Scoba numbers on to 17 for the loss of 3 wickets back into pavilion. The last over remaining. What a great over there from Sachin. Really good over. Just a couple of runs conceded. One of the best over. Bowled by Sachin. Wow, 1 more wicket. The fielder, the young talented fielder there in the short fine leg division is directly hitting the stumps, and batsman well short of his crease. Fantastic throw came from the fielder. Kiran, the fielder there in the short fine leg. I think the team has got some very good sharpshooters in the side of Shining Boys. Jyoti Nagar has got sharpshooters. They hit the stumps very well. And 1 more wicket is back into people in the form of run out. Vishal again is very frustrated with the wicket keeper, and he is just saying the popular word that in Tulu Pattumbe, but he fails to collect the ball behind the stump, because even Vishal also sometimes as a wicket keeper missed the ball from his hand. So Vishal bowls this time appeal for leg before wicket. Almost is begging for that leg before wicket, but umpire umpire Purushottam knows that ball pitched outside the line of leg stump, so that he is not interested, but he is interested to give the leg by. 19 on the board. Vishal bowls, drives that one down, driven that one down to a wide-ish long on, and the batter picked up a single. With that single, Skobarna moves on to 20, exactly 20 on the board. Vishal bowls, nothing much do with the delivery. The rightly so bowler, the batter shouldering his arm, left the ball into the hands of wicket keeper. 1 more extra. With that extra, Skobarna moves on to 21 on the board. 21 for the loss of 4 wickets back into pavilion. Vishal. It's a very good bowling action, charging in from the far end, bowling medium face off cutters. Again, lovely delivery, chance of run out, easily done by the wicketkeeper behind the stump. 1 more wicket is back into pavilion of the team. Amazing Kongor Warriors are looking in trouble. It's a 21 for the loss of 5 wickets. Very hard to combine the runs against a disciplined bowling performance by the bowlers of all the bowlers of Shining Boys. Jyoti Nagar really doing a fantastic job so far. Vishal to Raju will go into face Vishal. Again, nicely bowled, just a single throw coming from the fielder, the wicket keeper. In fact, they're going for appealing for run out, but that's it. Good over there from Vishal. Altogether, I think it's a very good toss to win from Shining Boys, Jyoti Nagar, and all the bowlers are really justifying the decision of their captain, and they bowled very well and restricting the opposition for just 22 runs, and they will going to get a target 22 to win this match, and wait and see how Shining Boys Jyoti Nagar will going to get these runs, and wait and see how well team
amazing Kongur warriors will going to restrict this small total. It's going to be very interesting. We'll take a short break here, and after the short break, my friend Gopi will going to take over the microphone. Before that, I request two teams captain please be reported for the next match. Jay Wasuki and captain of Temple Square Strikers, please be reported here for the toss. Ali Jai Vasuki ಮತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ. So it's a time for the break as well as a time for Gopi to take over the microphone. Thank you very much. धन्यवाद सतीश. So 23 the target. Shining Boys के लिए 23 रनों का लक्ष्य. 4 overs 23 they have to score for victory, and their innings now going to start. So रोहित starts the fresh proceedings और पहली गेंद उनकी पारी की लेकर इस वक्त तैयार विशाल जो कि सामना करते हुए, और इस बीच लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद और आखिरकार सही गेंद घोषित और रन्स इस बीच नहीं मिला. तो जहां तक का सवाल है इस वक्त अगली गेंद इस बार वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. एक रन बिना किसी नुकसान के. शाइनिंग बॉयज ज्योति नगर इस वक्त एक रन जोड़ चुका है और गेंदबाज इस वक्त तैयार था ना तो ऊपर द विकेट. ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई. अपील अप गोज द फिंगर एंड दैट इज द विकेट नंबर 1. गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, गेंद उनके पैर पर टकराई, उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा और इसी के साथ यह विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है. विशाल की पारी समाप्त और पहला विकेट गिर चुका है 1 रनों के योग पर. इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और जहां तक का सवाल है इस वक्त रोहित विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं और विशाल आउट होकर लेग बिफोर विकेट यानी पगबादा के रूप में आउट होने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए नए बल्लेबाज सचिन द नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रोहित की गेंदों का. तो निस्संदेह अगर 23 रनों के लक्ष्य के अंदर रोक कर रखना है तो यहाँ पर अमेजिंग कुंगूर वॉरियर्स के गेंदबाजों को एक घातक गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी. इस बार लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे. बेहतरीन गेंदबाजी, एब्सोल्युटली गुड पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर रोहित. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, बल्ले का बाहरी किनारा, गली पर मौका और इसी के साथ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर. आई थिंक द बैट्समैन कुड बी इन ट्रबल और यहां पर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और देखना यह है कि तृतीय अंपायर यहां पर क्या निर्धार देते हैं.
ही इज गॉन एंड दिस इज द विकेट नंबर 2 और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है और इस विकेट के गिरने के बाद इस वक्त मुश्किलें यहाँ पर पैदा होते हुए अमेजिंग शाइनिंग बॉयज ज्योति नगर के लिए और जहाँ तक सवाल है 1 रन पर 2 विकेट गिर चुके हैं और अब यहाँ पर नंबर 4 बल्लेबाज का आगमन होता हुआ नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल दीक्षित नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ तो जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका अमेजिंग कुंगूर वॉरियर्स के गेंदबाजों को एक घातक गेंदबाजी यहां पर करनी होगी अगर 23 रनों के अंदर शाइनिंग बॉय ज्योति नगर के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है और गेंदबाज रोहित एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए ये गेंद एक्स्ट्रा बाउंस अपील लेकिन गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर रोहित और अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए कुछ इस वक्त अपनी गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए गेंदबाज और अंतिम पावर प्ले की गेंद लेकर इस वक्त तैयार अंतिम पावर प्ले ओवर की गेंद लेकर इस वक्त तैयार लेग स्टंप पर आती हुई वाइड और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 1 इन प्रोग्रेस और रोहित एक बार फिर से तैयार इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ड्राइव किया इस वक्त मिड ऑन की दिशा में रन्स नहीं मिलेंगे बेहतरीन ओवर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ओवर हैज बीन केम्स टू एन एंड just 2 runs conceded by the bowler Rohit and after first over chasing the victory target of 23 in 4 overs this is an absolutely shackling start for shining boys Jyoti Nagar 2 for the loss of 2 wicket after completion of first over दोनों रन एक्स्ट्रास यानी वाइड के रूप में प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज यानी बल्ले से यानी बैट से कोई रन अब तक प्रदान उन्होंने इस ओवर में नहीं किया है पूरे ओवर में और बेहतरीन गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाज रोहित द्वारा तो दूसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ राजू गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सो राजू स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम दिस साइड एंड और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सो 21 रन रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 18 डिलीवरीज दैट मींस इन 3 ओवर्स और पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध इस वक्त हट चुके हैं ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद बेहतर गेंद थी कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी गेंद को छोड़ दिया इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला है कवर पॉइंट पर लेकिन अब गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद जब तक फील्ड होकर थ्रो की जाए नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेकंड ओवर गेंदबाज की ओर की गेंद इस बार अच्छी गेंद थी अंदर की ओर आती हुई गेंद को इस वक्त हल्के से पुश कर दिया गेंद पहुंची मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेकंड ओवर राजू इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद स्वीप किया मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े नजदीकी मामला हो सकता है लेकिन यहाँ पर थ्रो छूटता हुआ विकेट कीपर के हाथों से और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन तेजी के साथ चुरा लिया और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए अमेजिंग कुंगूर वॉरियर्स के गेंदबाज ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची नजदीकी मामला इफ द थ्रो वाज डायरेक्टली टू द स्टंप्स इट वुड हैव बीन सर्टेन डिजास्टर फॉर द बैट्समैन बट ही सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ दैट वाइड थ्रो एंड एडिंग इन फैक्ट इट्स अ वाइड सो 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू दैट तो वाइड को इस वक्त विड्रॉ किया गया है सिंगल रन ओनली एडेड टू द टोटल and with that single run the scoreboard moving up to 6 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress Raju ugly game that is an absolutely fantastic one gets some extra bounce at the last moment and went into the hands of wicket keeper और इसी के साथ 2 overs completed 6 runs on the board just 4 runs came from this over one more good over in amazing Kungur Warriors point of view captain and just 4 runs came from it 2 overs completed still the problems are continuing for the batsmen of Shining Boys Jyoti Nagar they are struggling 6 for the loss of 2 wickets 17 required in remaining last 2 overs that means in 12 deliveries
दोपहर का वक्त 1:15 यहाँ पर बच चुके हैं। धूप अपना कहर मैदान पर ढा चुका है। इस गर्मी की तीव्रता बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ते हुए और निस्संदेह इस वक्त भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक जो मैदान पर मौजूद है वो भी इस भीषण गर्मी का एहसास यहाँ पर करते हुए लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस मंगलोर का तापमान इस वक्त आज दाखिल हो चुका है। और इस भीषण गर्मी तले यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला बीपीएल बैतुरली प्रीमियर लीग 2023-2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए और हर्षित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ शाइनिंग बॉयज ज्योतिनगर की पारी में 17 रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 12 बॉल्स। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेगता है ना डीप कवर पॉइंट लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए हर्षित दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट इनफैक्ट एंड वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर स्टार्ट्स ऑफ विद अ वाइड और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार हर्षित गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट ढीली गेंद लेकिन गेंद को ठीक तरह से उछालने में असफल। गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर और 1 रन सिर्फ बल्लेबाज को मिला। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट इन फैक्ट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाज हर्षित की ओर की अगली गेंद लेग स्टंप पर आती हुई शॉट फाइन लेग की दिशा में निस्संदेह यहां पर बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी अगर निशाना स्टंप्स पर टकराता। सिर्फ बाई का इशारा और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। बाल बाल इस गेंद पर बल्लेबाज बच चुके हैं और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड विकेट की दिशा में नॉट मोर देन अ सिंगल सो रन्स आर स्टिल कमिंग इन सिंगल्स नाउ। रन सभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए अमेजिंग कंगूर वॉरियर्स के गेंदबाज और हर्षित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद टॉप एज मौका हो सकता है मिड विकेट फील्डर गेंद के नीचे कैच छूट चुका है और गेंद सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई डीप मिड विकेट पर गेंद को रोका गया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था तीसरा रन प्राप्त करने का। So 3 runs added to their total। वहां पर मौका जरूर था। न सिर्फ उन्होंने कैच को छोड़ा बल्कि 3 रन उन्होंने प्रदान किए और इन 3 जरूरतमंद रन इस वक्त जुड़ चुके हैं उनके खाते में। 13 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress। 8 balls left and 10 runs required। 8 balls left 10 runs required। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई नो बॉल कॉल्ड बाय अंपायर और एंड नाउ 8 balls remaining and 9 runs required। तो फ्री हिट गेंद थी फ्री हिट गेंद है इस वक्त और देखना है कि इस फ्री हिट गेंद का बल्लेबाज किस तरह फायदा उठाते हैं और गेंदबाज हर्षित इस वक्त तैयार फ्री हिट गेंद लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए और बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फ्री हिट गेंद ड्राइव के गेंद को इस वक्त गेंद पहुंची मिड ऑफ पर सिली मिड ऑफ पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 नाउ 7 balls remaining 8 runs required for victory। Still the match is in balance और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए और इस ओवर में अंतिम बार हर्षित गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद इस बार मिड विकेट पर अच्छे रनों के लिए और इस छक्के के साथ शाइनिंग बॉयज ज्योतिनगर आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द गेम। सो जस्ट 2 required of last over now।
तो ऑन साइड पर गेंद को डीप मिड विकेट पर फ्लैटर वर्जन पर इस वक्त उछाला। हालांकि डीप मिड विकेट पर फील्डर जरूर मौजूद थे, जितोड़ कोशिश उन्होंने जरूर इस वक्त की अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए, और लेकिन गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलते उनके पहुंच से बाहर, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। फ्लैटर वर्जन पर 6 रनों के लिए इस छक्के के साथ 2 रन अब सिर्फ चाहिए। अंतिम ओवर का 3 रन चाहिए इनफैक्ट। 2 runs required. 2 runs required of last over. तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, द मैच डिसाइडिंग ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। लगभग 6 से 7 फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। ऑफ स्टंप पर आती हुई बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली गुड वन। 5 balls and 2 runs required. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार ड्राइव किया, सीधी मिड ऑफ पर रन आउट का खतरा, लेकिन निशाना चूक चुका है। निशाना चूक चुका है और इस निशाना लग चुका है। इनफैक्ट द बॉल हिट टू द स्टंप्स एंड इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर दिस सिचुएशन। और वहां पर शायद बिल्स ऑफ नहीं हुए हैं मेरे ख्याल से। तो किसके खातिर तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है? तो यहाँ पर जो तृतीय अंपायर के लिए मांग की गई थी, उस मांग को इस वक्त वापस लिया गया है। और 1 रन, वहां पर बिल्स गिरे नहीं थे, तो रनआउट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो स्कोर्स आर लेवल्ड, 4 सिंगल रिक्वायर्ड ऑफ 4 balls। टॉप एज मौका, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना, एक बार फिर से बिल्स नहीं गिरे। So this is going to be a funny things is going on there. Bills are not disturbed in a twice occasion in the last over. लेकिन इस बार बिल्स गिरने चाहिए थे मेरे ख्याल से। तो निस्संदेह शायद ये शक आता है कि बिल्स और विकेट पर फेविकॉल शायद लगाए गए, इस वजह से बिल्स यहाँ पर नहीं गिरे। इतना तेज थ्रो था लेकिन बिल्स डिस्टर्ब नहीं हुए, ताजुब की बात है। और देखते हैं, कुछ भी रहने दो यहाँ पर, कुछ भी रहे यहाँ पर। शाइनिंग बॉयज ज्योति नगर इस मैच को जीत चुका है अमेजिंग कंगूर वॉरियर्स के खिलाफ, और इस विजय के साथ परिपूर्ण अंक दर्ज कर चुका है। तो एक बेहतरीन मैच यहाँ पर समाप्त हो चुका है। So man of the match of this match award goes to Sachin of Shining Boys Jyoti Nagar, who gave a all-rounding performance in this match, and because of that he adjudged the man of the match. I request Mr. Sachin to please come on to the stage and receive the man of the match prize from the organizers, Sachin of Shining Boys Jyoti Nagar. So the next match, Jai Vasuki will take over Temple Square Strikers. The match number 8 of this tournament is now coming up, and that match starts with a short while. और एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। Now it's time for a break. Thank you. I request Mr. Rakesh to please distribute the award to Mr. Sachin, man of the match award. Welcome back.
And good afternoon, cricket lovers. The match number 8 will go into start of the day number 1 of this prestigious BPL 2023 season 3, which is fantastically organized in this beautiful Panjirel Stadium, Kudupu. And all set now for the two teams. And coming back to these two teams, both the teams have lost their the league matches of their first league matches. So that very important match for both the teams. If they wanted to be in the competition, they wanted to open the account in the points table. So after winning the toss, captain of team Temple Squad Strikers elected to field first, so that opening batters, the left-hand batter Giri as well as Suman, the two opening batters will go into open the innings. Umpire Jayant signaling towards our scorer. Praneeth, our young scorer, receiving the signal, and even mentioning the time. It's a 1 past 20 in the afternoon. First ball, Giri looking for off drive, but not quite getting that much of timing in that stroke. But just a single here for Giri. He's off the mark with a single, one without loss of any wicket. Jai Vasuki, their first match they lost against amazing Kongur Warriors in the first match. At the same time, Temple Squad Strikers, they have lost their first match against Totwa Mazi 11s in the opening match. And that means the two both the teams wanted to get their first victory in their league matches. And we will see how well these two opening batters will go into lay the foundation here for Jai Vasuki. Right arm over wicket bounce. This time lofted that one, handsome looking drive. That was a huge one. Magnificent struck. Ball is just hitting the advertising board of one of the best wisher of this cricket tournament, Vasu Dubai, and of Baithurli Friends Club. Ball just hitting that advertisement banner. This time up and over, down to deep long off, one bounce into the fence for 4 runs. Absolutely magnificent struck there from Suman. He's on fire. And he knows exactly where the fielder is. This has been outstanding cricketing stroke. The long off, which is up in the circle in the mid-off, he knows exactly. So that he's just going over the top of that mid-off. One bounce into the fence for 4 runs. And now the bowler is under pressure. And this time good comeback here by the bowler Sunil. Sunil got a first dotted delivery of this over. This time looks like he's mistiming that one. Opportunity, but ball landed safely. Lucky escape here for the batter Suman in that occasion. He wanted to get that one over the top of that deep long off region, but because of that extra bounce, he couldn't manage to control that stroke. But fortunately for him, ball which is landed safely. Going for the drive. Again, that single has been taken. Skobar Namuzan to 13 on the board. 13 for the without loss of any wicket. Good start. So first over completed, a very good start given there by the opening batters of Jai Vasuki. They scored a valuable 13 runs. That's only because of Suman, who's hitting 1-6 and a boundary in that particular over. Second over, nicely driven, copybook style of extra cover drive there from Giri. Right nicely behind the line of the ball with a full face of the bat, beautifully driven down to deep, wideish long off for a single. With that single, Skobar Namuzan to 13 on the board. 14 on the board. 14 without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Second is in progress.
Krishnanand. Full toss and he just couldn't manage. So much mix up. Opposite of run out as well. And he survived. Again, there is opportunity of run there. Again, it's absolutely they're missing the golden opportunity to cross over for runs. But everything is not in a favor of fielding team. The Temple Square strikers got opportunity to make the run out here. The full toss delivery. The batsman Suman a little bit early into the stroke. And missed it completely. Got outside edge of the bat. Some little bit tense moment in the middle. The batsman Giri survives. 14 without loss of any wicket. Krishnanand. Bowls are lofted at one straight down the ground. One bounce into the fence for 4 runs. Absolutely fantastic straight drive there from Suman. A glorious shot. Even the long off and long on fielder in the right orthodox position. But still he managed to send that one between that one because he's placed it very straight. As straight as an arrow. And over the top of the bowler's head. And he got a boundaries. Number 2 from his bat. And Skobar Namozanto 17 on the board. 18 on the board for the loss of, without loss of any wicket in the over. Number 2 is in progress. Krishnanand. Right arm over the wicket to Suman. This time lofted. Looks like it's going to be an opportunity for the long off fielder this time. And Suman's very good innings. A small cameo. Entertainment innings is which is comes to an end. As he's looking for one more big shot, but not quite getting that one from the direction of the wind, what he's looking for. And the long off fielder taken a very good running catch. The wicket number first pitch is back into pavilion after scoring 18 valuable runs for the first wicket. He's back into pavilion, but the most of the contribution which is came from the bat of Suman is scoring 13 valuable runs from his bat. And he's back into pavilion. A very good innings which is comes to an end. Santosh, one more good striker of the ball, came into bat here and driven that one down to mid-wicket region. He's got a runner. The one more single has been added to total. 19 on the board. 19 for the loss of 1 wicket in the over. Number 2 is in progress. Krishnanand. Full toss and Giri, have to say thank you very much my dear friend for this full toss, juicy full toss. Of course in this first delivery Suman missed a juicy full toss, but now Giri is not missing the opportunity here to dispatch that one down to deep square leg boundary for a huge 6, and with that 6 score jumps into 25 on the board. So 25 comes off here, a very quick time and a very expensive over which is comes to an end of Krishnanand. The 6 and a bound in that over, even though he picked up a wicket, but it's a very expensive indeed. Juicy full toss to Giri, and he's just capitalizing that one by hitting the huge 6. This time Santosh plays it down to short third man region. He wanted to make a cover drive, but ball just got a little bit outside edge of the bat down to third man region for a single. With that single, Skobar Namuzan to 26 on the board in the over. Number 3 is in progress. Jagu. To Giri. Giri in this particular match is looking so good after they lost his partner Suman. He's just taking the initiative of getting some acceleration. Again drives that one down to deep long on region. Whitish long on region in fact for a easy single. With that single, Skobar Namuzan to 27 on the board. 27 for the loss of 1 wicket in the over. Number 3 is in progress. Jagu. Right arm over the wicket. They went for the reverse sweep. Wicketkeeper fails to collect the ball. Frustration for the bowler. By call by umpire. One more addition to total with addition of that single. Skobar Namuzan to 28 on the board for the loss of 1 wicket. Very good score in the board for Jai Vasuki against amazing repercussion for Temple Square strikers. Drives that one. Giri up and over down to deep cow point region. Fielder behind the ball.
before the fielder to run back to field the ball down a deep cover point region. Ample time for the batter to complete the single. Couple of runs, little bit correction with that couple of runs. Kobarna moves on to 30 on the board. 30 for the loss of 1 wicket in the over number third is in progress. This time we had another full toss. And Giri once again smashing that one down to deep. A fine leg boundary for one more six. A second sixer which just came from the bat of Giri. And score jumps into 36 with the help of that 6. This is what Giri is all about. Once he gets his eye in, he's always going to be a very dangerous batter. And you can't do the mistake of bowling a full toss delivery. The 2 full toss delivery for Giri. And he's just capitalizing that one by dispatching that one for 2 magnificent strikes. Jagu bowls outside the line of off stump. It's going to be a punishable from umpire. White call by umpire with that excess cover. Now moves on to 37 on the board. Absolutely huge total on the board now. Just that over number third is in progress. Jagu bowls. This time Flum in front of wicket. The batter Giri wanted to play that one against the line by trying to play the switch it. By trying to make a switch it, he misses the line completely. Then, of course, ball pitching in a line will definitely going to hit the midland off stump. And a very good innings which is comes to the end of Giri. Of course, is contributed from the bat with some big hittings. And wicket number 2 which is back into pavilion. So scoreboard is 37 on the board. 37 for the loss of 1 wicket. So new batsman in is Chirag. The new batter came into bat, and Giri is out for 18. They contributed 18 valuable runs with the help of 2 sixes and a white ball. One more extra, and with that extra scoreboard numbers on to 38 on the board for the loss of 1 wicket. Yatiraj bowls again the white ball. Runs are coming in the form of extras in this last over. And with that extra scoreboard numbers on to 39 for the loss of 1 wicket. Again, it's a line plays it down to short mid wicket, chance of run out there. And again that ball misses the stumps. This time they're going for the overthrow as well. I think this time the ball misses the stumps. And the previous match, the 2 occasion, when the fielders hits the stumps, the bails are which is not disappeared. And that's but here is the ball misses the stumps anyhow. Outside the line, next time going to be a wide. Third wide of this over. Yatiraj struggling to get his line and length. Then scoreboard now moves on to 42. The 42, one of the highest total score of this day number 1. Again that ball which is outside the line of off stump, and Santosh wanted to hit the ball across the line. Misses it completely, and there is no chance at all for any run. Again they're going for the drive. They're going for the single, chance of run out, and high throw from the wicket keeper. And they're grabbing the opportunity to come back for the second, but yes, they complete it. The very good running between the wicket. Absolutely sloppy fielding there by especially the wicket keeper. It's high throw, and batsman got opportunity to come back for the second. 44 already on the board. 44 for the loss of 1 wicket. Over number the last is in progress. So many deliveries in this particular over. He bowled 3 wide deliveries. This time a slower one and completely missed out by the batsman because that ball wide outside the line of off stump. One more wide, 4th wide of this over. And scoreboard numbers on to 45 on the board. Again the wide. A lot of afternoon exercise here for Purushottam. Umpire getting some exercise of the afternoon. 46 on the board. One more wide, 47. And altogether, the 6 wides in this over. That means that 1 over extra for team Jai Vasuki. And again the wide, again the 1+1, 7th wide of this over. And the scoreboard now moves on to 49, 1 short of 50.
one of the highest total score of this day number 1 of this prestigious Baithurli Premier League 2023 Season 3. Again, fumble from the wicketkeeper. Everything is going in favor of Team Wasuki. One more by 50 comes up. 50 comes up here for Jai Wasuki, and this is the first 50 of the day number 1 of this prestigious Baithurli Premier League. And Jai Wasuki, they're looking in a commanding position. This time, Risvijit attempt from the batsman Santosh, not quite getting that one from the middle of the bat. Pays the penalty for that. And the wicket of Santosh is back into pavilion. It's a 50 for the loss of 3 wickets. So new batter, Sandeep slowly walking towards the middle. Santosh is out for 7 runs. Driven that one, and widest long on fielder. Fails to collect catch there, but in now fall is taken. They completed a single, a couple there. Opportunity of run out and is gone. So that's it, 51, which is the total score of Jai Wasuki, and set a target of 52 to win this match. So 52, which is the total score, and 53 will going to be a target, and I think it's going to be one of the highest total score of this day number 1, and wait and see how well team Temple Square strikers will going to get this a huge total. It's a monumental, it's a mountain of runs they need to chase, and before the innings will going to start off, Temple Square strikers, I would like to invite one more commentator here, Rahul, to take over the microphone in our international language, English. It's over to Rahul. Thank you very much. Sorry, little bit correction. Roshan is a commentator here for the further explanation of the match. Thank you. Thank you, Mr. Satish. The 8th match is in progress now. At the moment, we have witnessing the match between Jai Wasuki versus Temple Square Strikers. Batting first, Jai Wasuki made a wonderful total here in this ground. Giri blasted the ball, and Suman gave a very solid and a phenomenal start for the batting side. With that, they are able to score. With that, they made 52 runs, and 53 is the target at the moment to win this match for the batting side. So, in the middle of the ground, we have a bowler like Sandeep, who will be bowling the very first over from railway track end. Jagu and Yattu are the 2 men to start the batting side. Here, the very first ball from Sandeep. He bowls in such a way that the ball kisses the ground and doesn't get a time to hit the ball, and batsman may not able to make much advantage of the delivery. Very first delivery was a dotted delivery. Here goes the bowler with the 4 to 5 steps up run up by Sandeep. Bowling from right and move the wicket to the right-handed batsman, jersey number 333, Jagu, down the leg stump. We have to wait for umpire signal. That is the first run in the form of extras. They need another 52 runs in the remaining 23 deliveries to win this match, because we have seen together 3 sixes and several boundaries by Giri and Suman, and a lot of extras contained by. Meanwhile, down the leg stump, again a wide, one more extra, taking the score up to 2 on the board after the single delivery, which was bowled legally by Sandeep. Sandeep will be bowling the second delivery. Two runs on the board. A good piece of bowling once again by Sandeep. 2 dot balls, 2 extras. Score still remains on 2. That means they need another 51 runs to win this match.
Here goes Sunday for the next time this over. 2 right, and Jagu trying for a massive one, magnificent one, but the fielder from square leg runs towards the fine leg region. Suman the fielder and fields the ball, and meanwhile he throws to the wicket keepers, and they add enough of time for 2 runs. With that, score moves up to 4 on the board. The next match will be between Tattvamas 11 versus Samrat United. I request the captain, please come near the commentator box. Tattvamas 11s and Samrat United. Here goes the bowler for the next ball. Wrapping on the pad, but taking a slider inner edge. We are waiting for umpire saying it's leg by, said by umpire. Maybe bat hitting the ground very strongly. Another single takes the score up to 5. Sunday for the 5th time in this over. That brings Yattu on strike. Just taking the inner edge of the bat and just going to a short fine leg region fielded by the fielder. Moving from umpires, moving from square leg, and another single taking up the score up to 6 on the board. Over number 1 in progress for the last time. The power play is in progress. Sandeep 2, Jagu, and a magnificent! What a massive hit. Suman become the just spectators there to see the ball crossing the square leg boundary. And with that, comes up to 12. After the completion of 1 over, 12 without loss. They need another 41 runs to win this match. 18 balls, 41 runs required. Captain of Tattvamas 11s and Samrat United. Please come near the commentator box. That match is supposed to be played at 1 o'clock, but we are now around 1:41, so 40 minutes we are behind. Change bowling. Mr. Giri, left arm. Orthodox spin seamer for Jai Vasuki. Giri to Yattu. Normally, the bowler and the batsman is to open for the side, but this time, wide plus 1, 2 more to the totals, comes up to 14. Bat, I'm sorry, bat. Bat. Comes up to 13. So, it's not so easy to do the empowering in the middle of the ground. But still, we have a long fielding positions like square leg, mid wicket, long on, long off, and a slight extra cover. Backward point, short third man and short fine leg. Not a glorious hit by Jagu, but well fielded by Suman. Score moves up to 14. Giri for the 3rd time is over. Over number 2 in progress. Here goes the bowler. Yattu hits hard straight to the fielder, but they run hard for a very good important single. Takes the score up to 15 on the board now. 15. Still they need a huge target. 38 more to get in remaining 15 balls. 15 balls, 38 runs. They need certain sixes, but Jagu could not make much contact with the bat at all. Again, a single in the form of by 16 runs on the board. 16 runs on the board. That brings Yattu on the crease. Giri to Yattu. From several years, they did not play to opposite in such tournament, but we have to wait for umpire single. They are running out. We know this is a field, and right. Hit it up, been run out. 1 plus 1 to the totals comes up to 18 now. 2 extras. And they need to convert those because they have a huge target, 53 runs. And the team has, Jai Vasuki has done that. 52 runs, the first team to score 50 plus runs in this tournament today. And Jagu can't make much advantage of that delivery. The earlier thought by him to go for a reverse sweep, otherwise
It had been a certain 6 over mid-wicket, but the decision was a little wrong from Jagu. This time trying for a big one, but cleared him very easily and rap system, and with that, Jagu is back in the pavilion. That marks the end of the over. Number 2 score remains on 18 for the loss of a very first wicket. Jagu is back in the pavilion. They still need 35 runs to get into all balls. 35 to get into all. And that Anki, the man, replaced on the place of Jagu. Bowler name? Sukesh. Changing bowling, Sukesh will be bowling the very third over of the innings of Jai Vasuke. Pitch delivery, couldn't make much advantage of that. We have to... that was offered with, and certainly Jagu would have been there, would have been out of the park. Yet would have been taken much advantage of the delivery. 19 on the board. 19 on the board. Sukesh for the next time this over. 34 to get now. Anki. Rubbing on the pad. He allowed loud appeal. Missed by the fielder behind the keeper. Sandeep never makes such mistakes. But today, I do not know. Maybe the hot and bright sun might have disturbed him by that fielding. But otherwise, Sandeep is a great fielder behind the wicket keeper from his childhood days. Here goes the bowler. And that was offered with. And Yattu converts into boundary. That takes the score up to 20. 4 on the board. 29 to get in remaining 9 deliveries. Anything can possible. 29, not a much huge highlighted target because Sukesh, one pitch delivered down the legs. Now we have to wait for umpire signal, but it's a good dot delivery. So, Anki, it's a little difficult running between the wicket. So, here goes the bowler again, hitting into the gap region. Maybe ball will cross the boundary or not. We have to wait and see. And good try from Chirag, but he couldn't stop that boundary because he used to cover a huge ground on that occasion. Score moves up to 29. 29. Last one ball to go. 24 to get. 7 ball 24. And down the leg stump. We have to wait for umpire signal. Another wide. Score moves up to 30 on the board. 23 more to get. 30 on the board. Certainly a 6 is required here. Otherwise, a lot of trouble will be there. And Yattu couldn't make a match. And LBW. So, batsman is not happy because he knew that there was an inner edge. But decision by the umpire is the final one. Maybe... And that is a friction of second to be taken the decision. And Krishna Vilas, the man, replaces him. We have completed 3 overs, 30 runs on the board, 23 to get, and it will be leg spinner. Will be introduced. Bowler name? Chirag. Anki, can you clear him? 6 deliveries, 4 required. The 4 big gates. Definitely, a big man can. Can the big man become a hero for his side? No. First down, 1 run just. Chirag bowled well, just a single. Chirag for the second time. Krishna Vilas. 22 to get in 5 deliveries. Again hit straight to the bowler's end and chance of a run out, and meanwhile is out. 4 balls, 22 to get. Krishna Vilas back in the pavilion without scoring any run for his side. And Yashwant will be the man in on his place. Yashwant. So we are having round 2 matches now at the moment. We'll begin the 3rd round. And that is a huge one. We have to wait for umpire signal, and that is
6 on the comes up to 37. 16 required in 3 bowls. That's a big one! Another one! Back-to-back sixes by Anke. 10 in 2. 10 in 2. Turn into that match is coming into more because Anki was little delayed in his innings. Otherwise, definitely would have been back-to-back sixers because Anki, he knows his responsibility. He's the icon of the team. 2 balls, 2 big hits, 2 ball, 1 boundary, 1 6 is must. 10 required in 2 balls. So can you expect 1 more 6 from Anki now? And there's no, he missed it. Loud appeal, but chance of a run out, and that's a leg by signal by umpire. 1 ball. 9 needed for Temple Square strikers to win this match. Again a dot. With that, won by 8 runs. Man of the match, undoubtedly, Mr. 18 runs, Mr. Giri from Jai Vasuki. तत्वमसी 11 द स्वागत में गिरी मेरे एक मैन ऑफ द मैच प्राइज कोरड बंड केनुंदले मिस्टर स्वागत I request the openers, please go for bat immediately. So the match starts between Tatvamasi 11s versus Samrat United. So in this match, Samrat United, after won the toss, they elected to field first. And we are just waiting for the openers of Tatvamasi 11. The last match ended just short while ago, which won by Jai Vasuki against Temple Square by 8 runs. Temple Square strikers by 8 runs. And with that victory, they back the complete points. Match number 9 of this tournament, Tatvamasi 11 versus Samrat United. So the openers for Tatvamasi 11s is Mithun and Manish. Meantime, the bowler for Samrat United is
Praveen starts up fresh proceedings at the first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद अंपायर ने इशारा किया कि पारी की शुरुआत और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद हल्के से रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में और गेंद को वहां पर फील्ड कर दिया गया। रन से यहां पर नहीं मिलेगा। नवा मैच बीपीएल बैतुरली प्रीमियर लीग 2023-2023 के अंतर्गत यहां पर शुरू हो चुका है। तो मसी 11 और सम्राट यूनाइटेड के बीच अगली गेंद ड्राइव किया इस बार एक्स्ट्रा कवर पर मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। नॉन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज गेंद को बिना देखे रन चुराने की हड़बड़ाहट उन्होंने दिखाई और गेंद सीधे पहुंच एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों पर। एक्स्ट्रा कवर फील्डर का थ्रो पहुंचता हुआ गेंदबाज के हाथों में और आसानी के साथ ये रन आउट करते हुए गेंदबाज और इसके साथ ही पहला विकेट गिर चुका। विदाउट फेसिंग एनी डेयर वरी Manish is now backing to pavilion and the first wicket lost for Tatvamasi 11s. It's not for one in the first over. New batsman, number 3 batsman is now comes out to the middle at the non-striker end. सामना इस वक्त करने के लिए तैयार मिथुन और प्रवीण इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका। तत्वमसी 11 का 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार प्रवीण गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा मिड विकेट फील्डर के पैर पर गेंद टकराई और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर। मिड विकेट पर जो बल्लेबाज खड़े हुए थे जो कि रनर की मदद से खेल रहे हैं उनके पैरों पर गेंद टकराए थे और एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ चुका है। प्रवीण एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और मनु नए बल्लेबाज जो कि जिनका आगमन हो चुका है इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन से बल्लेबाज को नहीं मिला तो 2 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका 1 विकेट के नुकसान पर और प्रवीण ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल एंड इट्स क्रॉस्ड ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। That is an absolutely fantastically sweeps by batsman at the last moment. Finds the gap between square leg and a mid wicket. और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुके हैं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक मंजू के बल्ले से इस वक्त लगता हुआ और मनु के बल्ले से इस वक्त लगता हुआ ये गेंद स्वीप किया एक बार फिर से once again he's got a boundary for that consecutive boundary for Manu and he is looking very confident। इस बार गेंद को थोड़ा सा सीधा स्वीप किया था मिड विकेट और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दरमियान और खाली क्षेत्र चुनते हुए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 1 विकेट खोने के बावजूद एक बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुका है तत्वमसी 11 10 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 10 for the loss of 1 wicket scored by Tatvamasi 11 after being losing the toss and put it to bat by Samrat United in the match number 9 of Baithurli Premier League 2023 season 3। और जहां तक इस वक्त सवाल है गेंदबाजी का द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम दैट साइड एंड पुष्पराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और पुष्पराज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना करते हुए इस वक्त मिथुन और फील्डिंग में जमावट चलती हुई पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार पुष्पराज दाहिने हाथों पर द विकेट फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए दोपहर का वक्त गर्मी की तीव्रता अभी भी बरकरार और जहां तक का सवाल है इस वक्त खेल का तो खेल एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हुआ इस बेहतरीन श्रृंखला प्रतियोगिता टूर्नामेंट के अंतर्गत बीपीएल सीजन 3 2023 के अंतर्गत एक बार फिर से गेंदबाज की ओर की अगली गेंद ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को रोकने में सफल डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बेहतरीन तरीके से और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का। लगभग
काफी तेज रफ्तार के साथ गेंद के इस वक्त मोड़ा था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और फील्डर खड़े हुए थे, थोड़ा सा दौड़ उन्हें जरूर लगाना पड़ा, लेकिन बेहतर तरीके से गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल और 1 रन का इजाफा। और पुष्पराज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद टॉप एज मौका, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। और 3 फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए, जब तक एक फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। पुष्पराज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। Just a single run added to the total, and with that single run, the scoreboard is now moving up to 13 for the loss of 1 wicket। 13 रन बन चुके। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। पुष्पराज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्टीयर किया बैकफुट पर जाने के बाद शॉर्ट थर्ड बैन पर, नॉट फॉर अ रन, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। पुष्पराज फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, मनु जो 2 चौका अब तक झड़ चुके हैं, सामना करने के लिए तैयार, ये गेंद टॉप एज मौका, लेकिन फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं। और स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को चंद टिप बाद आफ्टर कपल ऑफ बाउंसर्स फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज पुष्पराज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, रन नहीं मिला। और इसी के साथ दूसरा ओवर समाप्त हो चुका। 2 overs completed, and after completion of 2 overs, 14 for the loss of 1 wicket. Just 4 runs came from this over. Good over in Samrat United's point of view came to an end. Just 4 runs came from Pushparaj's over. 2 overs gone, and it's 2 overs. After 2 overs, it's 14 for 1. So what a fantastic tournament is now progressing here in the name of BPL Season 3 2023, Baithurli Premier League Season 3 2023, and the 9th match, the first session of the 9th match of this tournament is now progressing here. गेंदबाज निकी इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए, तीसरा ओवर शुरू होता हुआ और निकी का जहां तक सवाल है, पिछले मैच में 4 विकेटें उन्होंने प्राप्त किए थे और उस बेहतरीन गेंदबाजी के कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला था। और यहाँ पर देखना है कि पिछले मैच के सफलता के सिलसिले को यहाँ पर इस मैच में भी दोहरा पाते हैं या नहीं। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार निकी, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। इस बीच ये गेंद मनु के लिए, गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। गेंद तक पहुंच गए थे, गेंद पर अपना हाथ भी अड़ाया, लेकिन गेंद को इस कैच को लपकने में असफल और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई छिटकती हुई सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी है छक्के के लिए। तो इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। लकी 6 इस वक्त जुड़ता हुआ मनु के खाते में और 20 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। निकी एक बार फिर से तैयार, मनु एक बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए 16 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए इस बैटिंग ऑन 16 बाय मनु। और इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार, यह गेंद इस बार स्विंग्स इट, क्लीन हिट, एंड दैट इज अ 6 consecutive success for Manu, and he is looking on fire. Scoreboard is now jumping up to 26 now. और 2 लगातार छक्के इस वक्त मनु झड़ चुके हैं। पहले छक्के में वहां पर अदृष्ट के बल पर, किस्मत के बल पर वो छक्का उन्हें प्राप्त होता है, लेकिन इस बार स्ट्रोक को उन्होंने उछाला था खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर और 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ अब वो काफी आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए। निकी इस वक्त तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, लेग स्पिन गेंदबाजी, बेहतर गेंदबाजी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कमबैक, एक्स्ट्रा क्विकर डिलीवरी एंड इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन। जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से इस वक्त नहीं मिलेंगे, स्कोर रुक चुका है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। एक बार फिर से निकी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा चूके, और यहाँ पर गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुकी है और इसी के साथ यह विकेट यहाँ पर गिरता हुआ बाउल्ड ऑफ स्लैग शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, लेकिन उछाल नहीं पाए, गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई और सीधे लेग स्टंप पर जाकर टकराती हुई
बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ एक बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है मनु का. सो मनु स्कोर्ड 22 runs into his credit, including 2 sixes and 2 boundary, and after being playing a fantastic knock for their side, he is backing to pavilion, and Tatvamasi 11s loses their second wicket. It's 26 for 2. So Harsha, the new batsman, is now comes out to the middle, the number 4 batsman, और इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद ड्राइव किया बैकफुट पर जाने के बाद, not quite meeting it at the last moment, और गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 26 रनों पर. फिर से एक बार गेंदबाज निकी गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अंतिम बार इस ओवर में दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, ढीली गेंद, उछाला इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग से बाहर 4 रनों के लिए. 2 square and hit that one, and he finds the gap as well at last. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर. 30 for the loss of 2 wickets. They are looking in a good situation now. For Tatvamasi 11, 30 runs they scored for losing 2 wickets, and 3 overs completed in their innings. Last over now remaining in their innings. So the last over starts in their innings. Dheeraj, the bowler, brought into the attack. और वो इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए फिलहाल स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज मिथुन, जो कि सिर्फ 2 रन अब तक बना चुके हैं, लेकिन एक अच्छा 7 रन निभाया है मनु का, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. धीरज अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को उछाला ऑन साइड पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद जाती हुई कवर पॉइंट पर, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. He just hit that one 2 square at the last moment, and because of that he's got a couple of runs for that stroke, और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर. It's 32 for the loss of 2 wickets. गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर, फील्डर ब्रिलियंट, absolutely outstanding catch taken by the long on fielder. This is an absolutely stunner. अपने आगे की ओर इस वक्त डाइविंग लगाते हुए गेंद को उन्होंने लपका, इससे पहले की गेंद जमीन पर टिप्पा खाए निस्संदेह, और इस बेहतरीन कैच की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है. That was an absolutely blinder taken by the long on fielder. अंतरराष्ट्रीय शैली में इस वक्त इस कैच को उन्होंने अपने आगे की ओर डाइविंग लगाते हुए, और खासकर मैदान भी उनके इस डाइविंग के लिए काफी लाभदायक इस वक्त हुआ है, क्योंकि घने घास जो आउटफील्ड पर है इस वक्त, इसकी वजह से फील्डरों को डाइविंग लगाने में काफी आसानी यहां पर हो रही है, और यहां पर बेहतरीन कैच इस गेंद पर लपका लॉन्ग ऑन के फील्डर ने. अगली गेंद, इस बार गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर. 33 नाउ, जस्ट 3 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स. और गेंदबाज धीरज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद, इस बार गेंद को साइड पर स्विंग किया, गेंद जाती हुई मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, इनफैक्ट इट्स गोइंग टू बी मोर रन इन द फेस ऑफ ओवर थ्रो. और स्ट्राइकर एंड की ओर अगर थ्रो करते हैं तो शायद वहां पर रन आउट हो सकता था, लेकिन फील्डर ने थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और इस बीच बल्लेबाज 2 रन आसानी के साथ पूर्ण कर चुके हैं. 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड जस्ट अ कपल ऑफ बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स. और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए धीरज, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, यह खतरा, और इसी के साथ विकेट गिर चुका है रन आउट के रूप में. गेंद बल्लेबाज के निचले हिस्से पर, बल्ले के निचले हिस्से पर बॉटम एज पर टकराने के बाद आफ्टर फर्स्ट पॉइंट पहले टिप्पे के बाद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, तो नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज रन लेने की हड़बड़ाहट दिखाई, और इससे पहले कि वो अपने स्वस्थान पर पहुंचे नॉन स्ट्राइकर पर सीधा थ्रो पहुंचता हुआ विकेट कीपर का गेंदबाज के हाथों पर, गेंदबाज ने तेजी के साथ थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट चटका दिए, बिल्स उड़ा दिए, तो रनआउट के रूप में विकेट गिर चुका. द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, और इस बीच गेंदबाज तैयार. धीरज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर काफी पीछे मौजूद, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइकर पर थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो को रिसीव करने में सफल विकेट कीपर, और इस बीच 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ. सो द इनिंग्स इज अप and Tatvamasi 11 finished. They started well, progressed well, and finally finished well with 37 for the loss of 3 wickets. In the 37 for the loss of 4 wickets, in fact, in the stipulated 4 overs, and now the target for Samrat United is 38, and as far as the required run rate is concerned, exactly 9.5 runs per hour they have to score for victory. 38 रनों का लक्ष्य
38 the target in 4 overs for them, and their innings now going to start. और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटी सी ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब सम्राट यूनाइटेड की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. Organizer Vinith Olithinala ide baralu commentary box alli baralu. Vinith, I request Vinith to please be reported here immediately. The organizer ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಪ್ರೀತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ನಕ್ರೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಕಾರ್ಕಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆಟಗಾರ. ಆದರೆ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇವರು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಈತನ ಮನೆಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬ ಭರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಬೈತುರ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಂಘಟಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೂಪನನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ನೆರವಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯವು ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತಮಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು BPL ಬೈತುರ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಇದರ ಆಯೋಜಕರು ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತಾವು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಪ್ರೀತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಾದಷ್ಟು ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. And one more wicket is back into pavilion. 2 wickets back into pavilion in the first 3 deliveries. Mithun bowled the first ball, which is a wicket-taking delivery. Second one is a wide. Third one is going to be a wicket. That means Mithun picked up 2 valuable wickets. 38 is the target for team Samrat United. And this time, what a shot! Magnificent this slacked. The Pushparaj is just breaking the shackle in this over. After that, a shackling start, 2 wickets in the 2 deliveries. And then he's hit the ball down to deep mid-wicket boundary for a youth 6. Again, nicely up and over, down to deep cover point region. But ball is not really having that much of traveling. It is quite understandable because of that grass in the outfield. And the one shot called by umpire, that means only 1 run is conceded, and that was a little bit unfortunate. And Pushparaj will going to get a single for that, and Skobana moves on to 9 on the board. Driven that one nicely down to mid-wicket region. 8 on the board, little correction. Now it's a 9. 9 on the board because one which is a shot is called by umpire, so that scoreboard is a 9 already on the board in the over number. First is in progress. Mithun. Of course, 2 brothers. Even Giri is a brother of Mithun. Very good, talented brothers.
representing different team, and outside the line of off stamp, and good comeback here by the bowler. First over completed, chasing 38 to win this match, and they got a 9 on the board. Samrat United against Tatwamasi 11. Manish will go into bowl the second over. The time is exactly 2 past 15 in the afternoon. The next match will be played between the two very good teams. Dream 11 Chowki versus amazing Kongor Warriors. So that I request both the teams' captain please be reported here immediately for the tossing ceremony. Ali amazing Kongor Warriors tanada ನಾಯಕ ಹಾಗೂ Dream 11 Chowki ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಮೆಗಾಗಿ. Meanwhile, first ball which is a dotted delivery, plays it down to short cow point fielder. There is no chance at all for any run. Score remains on 9 for the loss of 2 wicket. Manish brought into attack. Went for the reverse save. Absolutely perfect execution. Ball running down to deep man boundary. Good stop by the fielder. Absolutely good stop. I think Nagendra, the fielder, there in the short third man region, absolutely fantastic chasing, and he's just winning the race against the fieldsman. Got a little bit footwork, the football which is played there by Nagendra to stop the boundary for his team, and just a couple of runs here. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 11 on the board. Again, that ball is a little bit outside the line of leg stump, and the batsman Dheeraj wanted to hit the ball towards the mid-wicket region, misses it completely, and there is no chance at all for any run. Score remains on 11 on the board. Again, one more delivery, which is going to be a wide, which is little bit going down the leg stump and outside the line of the wide line outside the line of leg stump. Scoreboard now moves on to 12 on the board for the loss of 2 wicket. These two batters, after that shackling start in the first over, 2 wickets have fallen quickly. Then again, nicely bowled appeal for leg before wicket, but something has happened in the middle. Looks like it's a leg by, ball but just deflected from the leg of the batter. One more addition. With the addition of that singles cover, now moves on to double figure 13 on the board. 13 for the loss of 2 wickets. This time went for the switch it, but Manu is underneath it. Manu is underneath it, and it takes a comfortable catch, and Ritik. Kritik is a catcher. The Mano is the wicket keeper, in fact, and it takes a catch at the wicket number 3, which is back into pavilion. It's a 13 for the loss of 3 wicket. So over number 2 completed, good over compared to the previous one. It's a better over there, ball by Manish, and after completion of over number 2, chasing 38 to win this match, it's a 13 on the board for the loss of 3 wicket. ಎರಡು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 13ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ನ ಪತನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 38 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 4 ಓವರಲ್ಲಿ, 14 ರನ್ ಈಗಾಗಲೇ, 13 ರನ್ ಈಗಾಗಲೇ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗಳಿಸಿದೆ. 25 ರನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಉಳಿದಿರುವ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ wow, so what a shot, driven that one, but not quite able to defeat that fielder at deep line-ish long on. They're looking for the second and absolutely absence of mind there from Mithun. A very good running bit in the wicket, little bit laziness from the fielder, grabbing the opportunity. So both the batters completed a couple of runs because they know exactly the required runs
They're definitely going to grab the opportunity and scoreboard numbers on to 15 on the board. The 23 required from 11 balls. Nagendra. Balls lofted, but straight to the hands of extra cover. The batsman looking for the lofted drive, but that was an unorthodox deep extra cover. Not in a deep, not inside the ring, just the middle of that. And the batsman just pays the penalty for that. The wicket number 4, which is back into pavilion. Pushparaj once is looking so good, is very confident after he hit the 6. But unfortunately, without completing the job, he's back into pavilion. G1 replacing him. This time, lovely shot down to deep, long off region. They're looking for the second. Coming back for the second throw, which is not up to the mark. And valuable couple of runs. With that couple of runs, Kobarna moves on to 17 on the board for the loss of 4 wickets. Back into pavilion. 21 required. 9 balls remaining. Needed some big shot. Looking for the big shot here. Looking for the run. Overthrow. Chance of run out. Absolutely golden opportunity in a striker's end. But Nagendra wanted to hit the stump in the non-strikers end. Rohan crossed there in the strikers end. Might be a little bit struggling to reach his home. And one more single score moves on to 18. That means 20 required from 7 balls. And across the line, he wanted to hit the ball down to mid-wicket region. Misses the line completely. And there is no chance at all for any run. Nagendra, final time in this over. 20 required. 7 balls remaining. Badly required 1 big shot in this final delivery of this over. Again he missed it. Wicketkeeper Mano is not missing the opportunity to hit the stumps. And he's back. Jeevan is back into pavilion. It's 18 on the board. The last over, 20 required for the victory. So last over remaining. The Praveen is a new batter in. And wait and see how Praveen and Roshan will going to get this 20 runs in the final over. Do or die situation here for Team Samrat United. If they wanted to win the match, they have to get 20 runs. It's not impossible in cricket. In cricket, anything is possible. Everybody knows the cricket is game of glorious uncertainty. And wait and see how Dhanush will go into bowl the last over. Roshan first ball, driven that one down to square leg region, but not more than a single. Just a single. 5 balls remaining. 19 runs required for the victory. So Praveen is the batter. Dhanush the bowler. Leg spinner. Went for the big shot. Again they're going for a quick single. Looking for the run out. Overthrow comes into play. The couple of runs. With that couple of runs, Kobarna moves on to 21. 17 required from 4 deliveries. Praveen went for the big shot. Lack of placement. Straight to the hands of bowler. Good piece of bowling. Last opportunity. 3 sixes required in remaining 3 balls. Will it go into be 6 number 1? No, it doesn't. Catch has been taken in the second attempt by the long off fielder. And that's it. Shawan the fielder there in the long off region. Of course, it's a straightforward catch. But ball is just slipping out of his hand. The second attempt, I think he's kept the eye on the ball so that he completed that catch. Sujan is the new batter. But I think just a formality is left in this game. Unless bowler can bowl some wides and no balls, it's going to be a formalities left in this game. Because 17 to get from 2 balls, it's highly impossible. Unless after if a bowler will going to make any stupidity. Now they're going for the quick single. Opportunity of run out. And umpire says it's out. Out has been given. So one more wicket is back into pavilion. Last ball. 17 required. Roshan Krasta is the batter. 6 will not going to help him. But 2 no balls and 3 sixes will going to help them to win this match.
but I think it's going to be a difficult one. This time, driven that one right in the gap, but not more than a single here. And a huge victory, the victory of 15 runs. Absolutely huge victory. That will going to get a very good net run rate here for Tatvamasi 11, because 15 valuable runs they won the match against Samrat United. And Samrat United, after their 3 matches, they won 2. They lost first match against Tatmavasi 11. And Tatmavasi 11, they're winning their one more match. 3 matches, they are unbeaten, Tatvamasi. And of course, it's going to be undoubtedly the man of the match, which goes to Manu for his outstanding knock, where he got some important runs for his team. So that I request Manu to please go to the main stage to collect your man of the match award from our chief guest. I request Yatish Acharya to present this man of the match award for Manu for his good innings. ಮನು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 9ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು, ಹಾಗೆ 10ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಚೌಕಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಕಾಂಗೋರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಾನಚಿಮೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಿ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. धन्यवाद सतीश. So the match number 10 is now going to start between Dream 11 Choki versus Amazing Kongur Warriors. And Amazing Kongur Warriors are won the toss and they elected to field first. And the openers of Dream 11 Choki are now comes out to the middle. Pranit ऋतिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि लोकी नॉन स्ट्राइक रेड पर और रोहित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए मैच की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथों पर था विकेट। ये गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके से गेंद को ड्राइव कर दिया बैकफुट पर जाने के बाद, और जब तक गेंद को फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया गया, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रोहित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। स्वीप किया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिडिंग इट, गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है ड्रीम 11 के लिए। 1 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है। रोहित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई मिड विकेट पर लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर, लेकिन इससे पहले कि वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर It's 3 without loss in fact in the open number first in progress। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। स्वीप करना चाहा, गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की और इस बार निशाना लगते लगते बच चुका है और 1 रन इस बीच मिला वाइड के रूप में। निशाना स्टंप्स पर टकरा था स्ट्राइक रेंज पर, तो निस्संदेह बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन निशाना चूका। इस बीच 1 रन वाइड के रूप में मिलता हुआ गेंद को ड्राइव करते हैं मिड विकेट पर, रनआउट का खतरा और इस बार ये विकेट यहां पर गिर चुका है। He's gone this time।
और जहां तक सवाल है, इस वक्त जब विकेटें उखाड़े गए थे शायद बल्लेबाज का बल्ला बैट वॉज इन द एयर और इस वजह से अंपायर ने उन्हें आउट घोषित किया और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज लोकी आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और यहाँ पर पहला विकेट खो चुका है इस वक्त। ड्रीम 11 इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। नए बल्लेबाज गौतम इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए फिलहाल नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद रोहित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, कांट गॉट एनी रन फॉर दैट स्ट्रोक और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर और इसी के साथ पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और रोहित अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त छोड़ दिया फाइन लेग की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं, सिर्फ बाई का इशारा अंपायर का और बाई के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर। It's 5 without loss after the completion of first over and a fantastic over came student from Rohit. He conceded just 5 runs in the first over and after completion of first over Dream 11 Chowki made a steady start. In fact, they made a slower start, 5 without loss after first over against amazing Kongur Warriors in the match number 10 of BPL Baithurli Premier League 2023 और जहां तक सवाल है अगले गेंदबाज का, द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स। राजू इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ गोइंग टू फेस और ओवर की पहली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में 1 रन का इजाफा, वाइड का इशारा और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। 1+2 3 runs now added to the total and with that 3 runs the scoreboard moving up to 8 without loss at the start of the first over, at the start of the second over in fact। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को फ्लिक कर दिया ऑफ द टॉस इनटू द गैप एज वेल, इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री, deflected fine and finds the gap as well between deep fine leg and a deep third man and he finds the gap at last और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ ऋतिक के बल्ले से ये चौका इस वक्त लग चुका है। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, पैरों पर टकराने के बाद फील्डर गेंद को वहां पर फील्ड करते हुए लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर राजू अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए गौतम और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया, मिस जजमेंट बल्लेबाज द्वारा, सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 13 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ा था, ये गेंद उछाला, दिस इज गॉन मेनी माइल्स, in fact it taken, he just played that one against the wind and the ball after lost its speed और गेंद वहां पर लपक ली लॉन्ग ऑन पर। एक वक्त ऐसा लगा कि गेंद सीमा रेखा से कोसों दूर जा गिरेगी लेकिन हवा के रुख के खिलाफ इस स्ट्रोक को खेला था और गेंद अपनी रफ्तार को खोती हुई और लपक ली गई लॉन्ग ऑन पर, अगेंस्ट द विंड इस गेंद को खेला था और इसका भुगतान उन्हें करना पड़ा अपना विकेट गंवाने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए और दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है ड्रीम 11 का। It's 13 for the loss of 2 wickets in the over number second in progress। शशांक का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में और राजू गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, धीमा थ्रो स्ट्राइकर एंड पर लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर 13 विदाउट लॉस।
in the over number 13 for the loss of 2 wicket. In fact, in the over number second in progress. Raju bowls. अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋतिक इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. अगली गेंद राजू दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ड्राइव किया. नॉट क्वाइट मिड विकेट. इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 15 रनों पर और दूसरे ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है. 2 overs completed, 15 runs on the board. Still the batsmen of Dream 11 Choki are now searching for the right track. 15 for the loss of 2 wicket after completion of 2 overs. Prakash, the bowler, is now brought into the attack and the third over starts in the innings. पहली गेंद इस बार धीमी गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में सफल बल्लेबाज ऋतिक गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहते थे लेकिन गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद फील्ड कर ली गई शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर द्वारा. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिना हाथ ओवर द विकेट. रिवर्स शॉट खेलना चाहा इस बीच अपील लेकिन नहीं, गेंद लाइन के बाहर टिप्पा खाते हुए अंपायर ने इस अपील को नकार दिया. तो 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं गेंदबाज प्रकाश और अपनी ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से डॉट गेंद. 3 डॉट बॉल्स इन ए रो and this is turning out to be a fantastic over in amazing Congoos Warriors point of view. और अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार प्रकाश. गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋतिक 3 लगातार डॉट गेंदें खेल चुके हैं. चौथी गेंद फुल टॉस. स्विंग करना चाहा, मौका विकेट कीपर के लिए कॉट बिहाइंड का लेकिन अंतिम क्षण में इस मौके को गवाते हुए 4 बेहतर गेंदें. हालांकि ये गेंद तो बेहतर नहीं था, चाहे तो स्विंग कर सकते थे ऑन साइड पर लेकिन गेंद का फायदा उठाने में असफल बल्लेबाज. और इस बीच अगली गेंद, ये गेंद एक बार फिर से नॉट क्वाइट मिड विकेट. इन फैक्ट इज गॉट ओनली अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक and in fact they come back for the second. This could be in trouble but the throw came quite lately and because of that the batsman completing a second run very safely in the end. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रन. अंतिम गेंद लास्ट टाइम इन दिस ओवर. द बॉलर कम्स. बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋतिक का सामना करते हुए यह गेंद उछाला. नॉट क्वाइट मिड विकेट. चांस बट फेल शॉर्ट ऑफ अ फील्डर एट लॉन्ग ऑफ. In fact they come back for the second but this time Hrithik won't survive. So a wicket lost and a single added. 18 for the loss of 3 wickets and 3 overs completed. So last over remaining, 3 runs came only in this over. Fantastic over in amazing Congoor Warriors point of view. Just 3 runs came from Prakash over. And now they are still searching for the right track. It's 18 for the loss of 3 wicket after completion of 3 overs. Last over starts in their innings. हर्षित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त ड्रीम 11 चौकी की पारी में. और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए हर्षित गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए match number 10 of BPL 2023 season 3 is now progressing here fantastically. और ओवर की पहली गेंद हर्षित की गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया. मिड विकेट पर मौका जी नहीं, कैच छूट चुका है यहां पर और बल्लेबाज के पास मौका. दूसरा रन नहीं मिलेगा. थ्रो पहुंच चुका है. थोड़ा सा मुश्किल सा मौका था लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को लपकने में सफल. डीप मिड विकेट पर सीमा रेखा के पास जो फील्डर तैनात थे फलस्वरूप बल्लेबाज और टीम के खाते में 1 रन जुड़ता हुआ 19 रन बन चुके हैं. और एक बार फिर से गेंदबाज 18 रन बन चुके हैं.
So 18 runs, in fact, the score. Just wanted to loft that one and collected by wicketkeeper behind the stump. So fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Amazing Kungur Warriors. और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद बाएं हाथ राउंड द विकेट ये गेंद बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवर एक्स्ट्रा क्विकर गॉन थ्रू फॉर अ सिंगल एंड दिस टाइम ही लॉस्ट हिज विकेट gone through for an unnecessary single and because of that one of them lost his wicket. One more wicket fallen and the scoreboard stays at 18 for the loss of 4 wickets now. Just 3 balls to go in their innings. So quite cricket is now going on here in the innings of Dream 11 Chowki. And still in overall calculation, it's going to be 3 balls remaining in the innings. 3 गेंदें बाकी और नए बल्लेबाज 0-3 नंबर की जर्सी पहने हुए इस वक्त स्ट्राइकर रन की ओर कदम बढ़ाते हुए जॉयल नए बल्लेबाज और हर्षित गेंदबाजी करके इस वक्त जॉयल को बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई बेहतर गेंद थी मिस जजमेंट रन से नहीं मिलेंगे. One more dot ball. 2 balls now remaining in their innings. और एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े स्ट्राइकर रन पर थ्रो पहुंचा और इसी के साथ यहां पर ये विकेट गिर चुका है. Joel is now run out and a single run only added to the total. It's 19 for the loss of 5 wicket with just last ball now remaining in their innings. Rahul, number 7 batsman, is now coming out to the middle to facing the last delivery of their innings. और इस बीच गेंदबाज हर्षित गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और बल्लेबाज राहुल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. उनकी पारी की अंतिम गेंद का बाएं हाथ राउंड द विकेट ये गेंद ड्राइव करना चाह नॉट क्वाइट मिडल विकेट एंड इन फैक्ट दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर. और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है रनआउट के लिए. तो देखते हैं यहां पर तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं. लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया अमेजिंग कांगारू वॉरियर्स के गेंदबाजों ने. फलस्वरूप इस वक्त ड्रीम 11 को वो कम से कम स्कोर पर रोक कर रखने में सफल हो चुके हैं. ही इज गॉन. So no run added to their total and a wicket lost. 19 for the loss of 6 wickets scored by Dream 11 Chowki. And now the target for Amazing Kongur Warriors is 20. 20 runs they have to score. Last over just conceded 2 runs by Harshit. Absolutely fantastic bowling performance bowled by him. Conceded 2 runs in the last over of their innings. And 20 the target for Amazing Kongur Warriors. और देखते हैं 20 रनों के लक्ष्य तक वो पहुंच पाते हैं नहीं तो उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटी सी ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब अमेजिंग कंगूर वॉरियर्स की पारी की शुरुआत यहां पर होगी. धन्यवाद. 20 टारगेट. So thank you very much, Gopi. And it's absolutely a moderate total of 20 to win this match for Amazing Konguru. And starts with a nice looking drive towards the extra cover region for a couple of runs by the batter
Dilraj has got his first run in the form of couple of runs. Nice looking off drive. And with that couple of runs, they started their journey. Just 20 runs required for the victory. And, nicely bowled there by the bowler in the delegation. And a dotted delivery. Gautam, right arm over the wicket, delivers. Beautifully bowled. Bowled him, clean him up. Fantastic delivery there from Gautam. Batsman going for the expansive off drive. Dilraj misses the line completely. And ball hits the stumps. And the wicket number first, which is back into pavilion of team Kunguru Warriors. Kunguru Warriors, amazing Kunguru Warriors. And coming back to this team, amazing Kunguru. Out of 2 matches so far, they won 1 matches. They lost 1. At the same time, we're coming back to the team 11 Chowki. Team 11 Chowki, of course, so far they are really fails to open the accounts in the points table. They're playing their 3rd match after that 2 loss. Again, nicely bowled, just around the leg stump, outside the line of leg stump, and batter completely missed out dead delivery. There is no chance at all for any run. Prakash is a new batter. Facing next delivery. Full toss! High, and looks like it's going to be a chance here for the mid-wicket fielder. He drops the catch, and absolutely golden opportunity which is missed out by the fielder. Dream 11 Chowki, of course, still if they wanted to make their dreams come true, they need to take this opportunity. And so far, I think it's not a good piece of fielding there from the fielder. Which the golden opportunity is missed out to take the wickets. Good over there from Gautam. Just 3-4 runs came from that over and 1 wicket in that over. But it probably the 2 wickets in this over because of there is no good anticipation there from the fielder to take the catch, and the batter got a life. So 4 conceded in the first over. The 3 overs remaining. 20, which is the target. That means 16 runs required in remaining 18 deliveries. Santosh brought into attack to bowl the 2nd over. Again, straight to the answer fielder. Again, that's what I'm talking about. You need to pull their socks as far as the fielding department is concerned. You can't win the matches if you do that mistake, that much of mistake, because you're depending a small total. You can't do that mistakes of dropping the catch, misfielding. Need to pay the penalty for that. Again, wicketkeeper behind the stump, automatically done. But the back foot of the batter Prakash is inside the line, so that no question of run there. Score remains on 5. Santosh balls to Prakash. Prakash drives that one down to mid-off region for an easy single. With that single scored Namuzan to 6 on the board. That means 14 more runs required for the victory in remaining 15 deliveries. Again, the wide outside the black stamp. It's going to be a really disaster, isn't it? And 1 more extra then scored Namuzan to 7 on the board for the loss of 1 wicket. Again, this time well within the reach of the batter. Misjudgment by the batter. Thought it might be a wide, but well within the reach of the batter, so there's no question of any run. One more, 1+1, 2 more to the total. The disappointment continues here from Dream 11 Chowki. Runs are coming very freely in the form of extras, bonus runs. And Skoboda was on to 9 on the board for the loss of 1 wicket. Again, outside the leg stump, this time well within the reach of the batter. And Prakash completely beaten around his legs. And there is no chance at all for any run. Santosh to Prakash. Prakash drives that one. This time again, opportunity of run out. Oh my goodness, that opportunity run out is non-strikers there. It's a very, very nearest chance for the fielder to hit the stumps. But he's trying for the run out in the strikers, and again, the batsman survives. Completion of over number 2. It's 10 on the board for the loss of 1 wicket.
Just like I already announced that the cricketer Pritham Pujari is suffering from serious head injuries and is hospitalized and of course organizer decided to raise the fund for his medical expenses, so that I request all the cricket lovers to be support, please be support Pritesh Pujari to come out from the dangerous conditions, and we are praying God that is a speed recovery. Pritesh Pujari, who is suffering from a serious head injury, who is met in the accident, and organizer decided to raise the funds for his medical expenses. I request once again each and every cricket lovers to support that concept of the organizers BPL Baithurli Premier League 2023. So next match, the match number 11 will going to start between Jai Vasuki versus Jai Panjiril, so that I request both the teams' captain please be reported for the tossing ceremony. Nicely driven. The down to deep long on for a easy single score numbers on to 14 on the board. Just 6 runs required for the victory. Jai Vasuki ಮತ್ತು ಜೈ ಪಂಜರೇಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ. This time top edge, but ball landed safely between wicket keeper and the fine leg. One more addition to total addition of that singles cover numbers on to 15 on the board. In the over number 3 is in progress. 8 deliveries remaining, and they have to get 5 runs to win this match. The Dream 11 have to bowl 2-3 dotted deliveries if they wanted to back into this game, but just a sensible batting which is required for the team Tatmamasi to win this match. A wide ball outside the line of leg stump, one more extra with the addition of that singles cover numbers on to 16, and 14 runs required for the victory. 4 runs required for the victory, little correction. 4 runs required for the victory. This time again inside edge of the bat going for the quick single. Again the fielding which is not up to the mark of Dream 11 Chowki. One more single has been taken already. Dream Chowki lost their 2 matches of their league, so it's going to be a very important match actually for Dream 11 to win. Again have a look at that fumble from the fielder. Again opportunities created for the run out and misfielded by the fielder. One more addition. Last over remaining, and 2 runs required for the victory for the Tattvamasi 11 to register their second victory of their 3 matches what they played. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೈ ವಾಸುಕಿ ಮತ್ತು ಜೈ ಪಂಜರೇಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ. ಜೈ ವಾಸುಕಿ, ಜೈ ಪಂಜರೇಲ್. Driven nicely down to square leg ridge, and it's going to be a winning run. And boundary comes up now. No ball call by umpire. And no ball, and they crossed 1 run. Just 2 runs in the last ball because of 1 run which is considered in a no ball. They completed single, so that boundary which is not going to be considered because they need to get 2 runs for the victory. They completed that 2 runs before the boundary ball went into the boundary line. So a couple of runs of congratulations for the team Tattvamasi, they winning this match quite comprehensively. A little bit correction, team Amazing Kongoro Warriors, they won the match. Amazing Kongoro Warriors won the match. So out of 3 matches, Amazing Kongoro Warriors won 2 matches. They lost 1, but Dream 11 Chowki, they have lost 3 matches. So man of the match of the previous match, which is goes to the all-rounder Prakash of Amazing Kongoro Warriors. Kongoro Warriors, Amazing Kongoro Warriors ತಂಡದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತರುಣ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ 11 ರನ್ ಹಾಗೂ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್, ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 11, Jai Vasuki versus Jai Panjirail. And the news here is that captain of Jai Vasuki won the toss and elected to field first. Jai Vasuki, out of 2 matches, they won 1 matches and lost 1. And Jai Panjirail, the same result. Out of 2 matches, 2 matches, they won 1 and lost 1. And that means both the teams has got equal in the points table. They got 2 points and going to be a very good match, very interesting match between these 2 teams. For that match, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश. So the match starts between Jai Vasuki versus Jai Panjirail, and it's in this match Jai Vasuki, after won the toss, they elected to field first, and the first ball of their innings is now coming up. First ball of Jai Panjirail's innings is now coming up. और गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए संदीप, किशोर और सचिन आरंभिक बल्लेबाज, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को चिप किया स्ट्राइट ओवर द बॉलर सेट डाउन टू लॉन्ग ऑन. इन फैक्ट ही कंप्लीटेड वन, दे लुकिंग फॉर द सेकंड एंड दे कम बैक फॉर द सेकंड रन. बेहतरीन तरीके से गेंद को इस वक्त स्कूप किया था. गेंदबाज के सिर के ऊपर से 2 रन बल्लेबाज बटोर चुके और इन 2 रनों के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. इट्स 2 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज संदीप इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, नॉट क्वाइट मिड निकेट द लास्ट वन, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. लेग बाय का इशारा और लेग बाय किस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. संदीप गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं. और मैच नंबर 11 बीपीएल सीजन 3 2023 के अंतर्गत यहाँ पर शुरू हो चुका. बैतुरली प्रीमियर लीग सीजन 3 2023 इज नाउ द 11th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले को. और संदीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ड्राइव किया, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, एंड द स्कोर स्टेज एट 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और संदीप एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्क पर जाते हुए और सामना इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज. ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई शॉर्ट फाइल लेग की दिशा में, फिर से रन से इस बीच नहीं मिलेंगे. प्रश्नार्थक तरीके से बल्लेबाज ने अंपायर की ओर जरूर देखा, लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं, सही गेंद घोषित. इस बीच सचिन एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार. और संदीप की गेंद पैरों पर टकराई, प्लम इन फ्रंट, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है. सचिन आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए गेंद को उछालना चाहता, गेंद उनके बैक लेग पर टकराई थी इस वक्त और उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में. पहला विकेट गिर चुका है 3 रनों के योग पर. एंड Jai Panjirail lost their first wicket and the score is now 3 for the loss of 1 wicket. Sandeep, the number 3 batsman, is now comes out to the middle. और बल्लेबाज संदीप इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज संदीप की गेंदों का. तो संदीप के लिए इस वक्त तैयार.
दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा गेंद पहुंची इस वक्त गली क्षेत्र पर नॉट मोर देना सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के 4 विदाउट लॉस after the completion of first over. Good over in Jay Wasuki's point of view came to an end. Just 4 runs conceded by Sandeep in this over and still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining in the innings. So what a fantastic tournament is now progressing here in the name of BPL 2023 Season 3 Baithurli Premier League Season 3 2023 this beautiful greenery Kudupu ground और निश्चित रूप से यहाँ पर हरा भरा मैदान पूरे घास से इस वक्त ढक चुका है और घने वृक्ष इस वक्त मैदान के चारों ओर इस वक्त स्थित इस मैदान की शोभा को और बढ़ाते हुए और मैदान की बाईं ओर जो कि रेल की पटरी यहाँ पर दिखाई देते हुए कुछ समय के अंतर में कई गाड़ियां यहाँ पर गुजरते हुए और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है और गेंदबाज गिरी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दूसरा ओवर शुरू होता हुआ जय पंजीरेल क्रिकेटर्स की पारी में गिरी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते बाएं हाथ राउंड द विकेट पहली गेंद इस बार गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर रन लेना चाहा था वाइड का इशारा लेकिन विकेट कीपर देखते रह गए यहाँ पर फाइन लेग फील्डर की ओर और अंतिम क्षण में गेंद की लाइन से उन्होंने अपने हाथ को अलग करना चाहा गेंद उनके हाथों पर टकराई और बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर वापस लौट चुके हैं तो वाइड का इशारा 1 रन उनके खाते में जुट चुका है और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर एक बार फिर से गेंदबाज तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद इस वक्त सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से गेंदबाज गिरी अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गिरी की ये गेंद इस बार गेंद को उछाला मिड विकेट पर गेंद जाती हुई फील्डर काफी पीछे बल्लेबाज दूसरा रन इस वक्त लेने के लिए दौड़ पड़े स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचा लेकिन इससे पहले के थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास समय था कि 2 रनों के साथ वो अपने अपने छोड़ पर वापस लौट सके बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और गिरी एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए संदीप सामना करने के लिए तैयार और अपनी ओर की अगली गेंद बाएं हाथ राउंड द विकेट ड्राइव किया इस वक्त हाफ स्टॉप फॉलो थ्रू में रनआउट का खतरा लेकिन गेंद को वहां पर टटोलते रह गए गेंदबाज हालांकि आधे पिच तक इस वक्त पहुंच चुके थे बल्लेबाज और वहां पर गेंद को फॉलो थ्रू में टटोलते रह गए रोकने के बाद गेंदबाज तो इस वजह से बल्लेबाज के पास मौका था कि वो अपने क्रीज पर वापस लौट सके बाल इस गेंद पर बचते हुए बल्लेबाज अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार गिरी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस at the last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run और स्कोर रुक चुका इस वक्त 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर गिरी एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए रन के लिए दौड़ पड़े नजदीकी मामला लेकिन निशाना इस वक्त चूक चुका है Wide also called by umpire. 1 + 1 2 runs now added to the total. और निशाना स्टंप्सों पर टकरा था तो निश्चित रूप से यहाँ पर बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी लेकिन अंतिम क्षण में निशाना चूका और बल्लेबाज 1 रन के साथ अब छोड़ बदल चुके हैं 1 + 1 2 runs now added to the total in the face of wide and with that couple of wide runs moving the score to 9 now for the loss of 1 wicket. इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त एक बार फिर से आगे निकला है और विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटका है थ्रो को कलेक्ट करने के बाद लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित अपना बल्ला बैट इससे पहले रख चुके थे और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए और दोनों बल्लेबाज कुछ आपस में बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और गिरी इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए जबकि इस ओवर में अंतिम बार
बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। बेहतर गेंद के साथ ओवर की समाप्ति कर चुके हैं। गिरी 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा द बैट्समैन ऑफ जय पंजरेल स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। सुकेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, तीसरा ओवर शुरू होता है जय पंजीरेल की पारी में। और फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए कप्तान जय वासुकी के, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है लंगोल पर 6 रनों के लिए। संदीप के बल्ले से ये छक्का लग चुका है। पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक, फर्स्ट कॉन्फिडेंट स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ संदीप इन द इनिंग्स ऑफ जय पंजरेल। और इस छक्के के साथ स्कोरबोर्ड अब बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। Absolutely just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style over long offense for a huge one. Just want इस बार रन आउट का मौका, certainly that was another out, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को टटोलते रह गए यहाँ पर जो संतोष थे विकेट कीपर, और यहाँ पर बल्लेबाज सुरक्षित बचते हुए, और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। तो इस बार ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला कवर पॉइंट की दिशा में, और गेंद को इस वक्त सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल। बल्लेबाज तीसरा रन लेना चाहते हैं, दौड़ पड़े और तीसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त, जस्ट प्लेड दैट वाज स्क्वायर ऑफ द विकेट एट द लास्ट मोमेंट, लॉफ्टेड दैट वन इन अ स्टाइल डाउन टू अ डीप एक्स्ट्रा कवर। और जब तक गेंद को रोका जाता सीमा रेखा के अंदर, बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। तो 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज सुकेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, दिस टाइम नॉट सक्सीडेड, शाइन्स एंड वंस अगेन ही सर्वाइव्ड। तो इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर, आई थिंक सो। और देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं। क्या बल्लेबाज विकेटों पर गेंद टकराए, जब बिल्स डिस्टर्ब हुए थे तब बल्लेबाज क्रीज पर बल्ला अपना रख चुके थे या नहीं, यहाँ पर देखना पड़ेगा। नॉट आउट इज द डिसीजन फ्रॉम द थर्ड अंपायर, और बल्लेबाज इस बार बच चुके हैं। तो यहां पर एक और डॉट गेंद, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रनों पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट नाउ। और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े और निशाना चूका। इस बीच 1 रन का इजाफा, बाय डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, 19 द स्कोर नाउ। एंड द थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त सुकेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और तैयार। ये गेंद इस बार firmly struck down to extra cover. In fact, he gets in a single for that, looking for the second but won't get it. In fact, clean pickup by the fielder at deep extra cover, sweeper out there. और बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। सो प्रीटी गुड ओवर इन जय पंजीरेल्स पॉइंट ऑफ व्यू केम 11 रन्स केम फ्रॉम दिस ओवर। और इस ओवर की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ हद तक इस मैच में वापस आ चुका है जय पंजीरेल। अंतिम ओवर उनकी पारी का बाकी इस वक्त। द लास्ट ओवर स्टार्ट्स नाउ इन देयर इनिंग्स। Likhit, the bowler, is now brought into the attack. The first ball of the fresh over of their innings is now coming up. And the last over starts in Jay Panjirel's innings. और ओवर की पहली गेंद लेकर लिखित
गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए लेग स्पिन गेंदबाजी, इस बार उछालना चाहा, गेंद पहुंची पैरों पर टकराने के बाद शॉर्ट स्क्वायर लेग पर रहा। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर रहा, 1 विकेट के नुकसान पर। 21 for the loss of 1 wicket. Slowly and steadily this partnership is now building up. Yeah, this time just wanted to loft it up, not quite middling it. Misjudgment और यहाँ पर इस misjudgment की बदौलत बल्लेबाज 1 रन प्राप्त कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर। It's 22 for the loss of 1 wicket. और गेंदबाज full toss, pulled that one and dispatched it in a style. 6 runs into the account of Jai Panjirel, and a perfect struck came from the bat of the batsman Sandeep. 6 number 2 came from his bat, and the scoreboard is now raising up to 28 now for the loss of 1 wicket. गेंदे इस वक्त बाकी हैं 3 अब उनकी पारी में. Just 3 balls left in their innings. इस बार बेहतर गेंदबाजी, fantastic, and up goes the finger from umpire. So wickets fallen in the face of leg before wicket. 1 more wicket fallen, and now it's 28 for the loss of 2 wicket. And a fantastic innings came to an end from Sandeep. He scored 15 runs into his credit, including 2 sixes. And after scoring 15 runs into his credit, he is backing to pavilion. और 2 गेंदे इस वक्त बाकी उनकी पारी में और नए बल्लेबाज धनु इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। लिखित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए धनु के लिए। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा, ढीली गेंद थी, शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर। 1 रन मिला। 29 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और लिखित एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार गेंद को ड्राइव करने में चूके, बेहतर गेंद थी, वाइड, काफी बाहर निकलती हुई स्टंप से और वाइड का के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर। 30 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और लिखित एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया लेकिन गेंद सीधे डीप मिड विकेट फीडर के हाथों को चीरती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर चले गए 4 रनों के लिए। तो 4 रन यहां पर मिले, कैच छूटा, न सिर्फ उन्होंने कैच को छोड़ा बल्कि 4 रन भी उन्होंने प्रदान किया। 34 नाउ, द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। गेंदबाज लिखित तैयार रहा और ये गेंद इस बार चूके स्टंप आउट अंतिम गेंद पर। दैट्स इट, जय पंजरेल finished with 34 for the loss of 3 wicket in their stipulated 4 overs, and now the target for Jai Vasuki is 35. 35 they have to score in the stipulated 4 overs with a required run rate of exactly 8.75 runs per over, and let's see can they reach the target or not. Meantime, I request the captains of Shining Boys Jyoti Nagar versus Temple Square Strikers please to be reported here. Please come in front of the stage for toss procedure. ಶೈನಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ್ ಹಾಗೂ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಶೈನಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೊ 35 ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಜೈ ವಾಸುಕಿ and their inning starts now with a shot while और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब जय वासुकी की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. Welcome back. And before we are going to the innings of Jai Vasuki, they don't need to get 35 runs to win this match.
And news here is for the next match, the captain of Temple Square Strikers won the toss and elected to field first against Shining Boys Jyoti Nagar. And that is the 12th match of day number 1 of this prestigious BPL, Baithurli Premier League 2023 Season 3. Giri and the Suman are the two opening batters. The very successful opening pair. The previous match, both are played a magnificent innings for the team for the victory. So that wait and see how well they will going to continue in this particular match. Umpire will going to start the match after observing the time. It's at 3:15 and 35 going to be a target here for team Vasuki, Jai Vasuki to win the match. This time, first ball itself, he's on fire and looks like, oh my goodness, ball one bounce landed into the fence for 4 runs. Once it looks like it's going to be maximum for Giri, but ball which is landed just inside the boundary line, and the ball just going over the boundary line down to a deep square leg, and first boundary and first run which is came from the bat of Giri, and he just got that one right from the middle of the bat. This time top edge opportunity for the mid wicket fielder to take the catch, and he completes the catch. So Giri back into pavilion, just not quite getting that one from the middle of the bat, not quite able to reach the pitch of the delivery. Of course, the intention of Giri to hit the ball, but he is not really giving any power behind the stroke, just putting his bat into the line of the ball, and ball is just going into the hands of the mid-wicket, short mid-wicket fielder, making no mistake at all. The wicket number first pitch is back into pavilion of Jai Vasuki. The 4 for the loss of 1 wicket. So new batter in is Santosh. Santosh will going to take the strike. The bowler Arshit. Balls appeal for leg before wicket. Ball just going down the leg stump, outside the leg stump. So that no question of giving leg before wicket. But it's a very good stuff. Very good comeback here by Arshit. After that boundary, then he bowled 2 very good deliveries. Like outside the leg stump, going for the big swing of the bat. But ball is going further away. So wide call by umpire. One more addition. With the addition of that single scorer Namuzan to 5 for the loss of 1 wicket. Ashit again. Right arm over the wicket delivers. This time plays it down to square leg revision because of leg injury. What Santosh has got as for the permission of the opposite teams. He's got a runner, and very difficult for him to get his footwork because of the injury has got into his right and left leg. Driven that one to mid-off, not for run. And Suman, one who played a good innings for his team in the previous match, has now got a responsibility after losing his partner Giri in the first over. So the score remains on 6 on the board without loss of for the loss of 1 wicket. Again outside on back stump, going to be a wide with that extra score. Namuzan to 7 on the board. 7 for the loss of 1 wicket in the over number second in his progress. Again driven that one, not quite getting that one from the middle of the bat, and a bit of before that cow point fielder will go into field the ball. Ample time for the batter to complete the single. Suman will go into retain the strike, and after completion of first over, chasing 35 to win this match, and little bit start for both the teams as far as team Vasuki is concerned. Jai Vasuki is concerned. They got 8 runs, and team at the same time the Temple Squares strikers, little correction, Jai Panjarel has got the wicket of very danger batter Giri back into pavilion in the first over. So 18 balls, they have to get another 27 runs to win this match. 27 required from 3 overs. 18 balls, 27 required. Asking run rate is exactly 9 runs per over.
Anil brought into attack. The 9 runs per hour is the required run rate for team Jai Vasuki to get their second victory. Both the teams has got equal points in the points table. 2 matches. Both the teams won one match. They lost one. They got 2 valuable points. Right arm over wicket balls again. This time quite interesting. Suman without moving his feet, he wanted to play that one away from his body, but couldn't manage to get the proper connection. He plays it back to bowler. Again a lovely delivery, but appeal for leg before chance of run out there. Umpire saying that ball is just missing the line, missing the wicket, and leg by call by umpire. With that leg by Skobar Namuzan to 9 on the board. A loud appeal coming from Anil, and umpire not impressed with that appeal. And here is Santosh facing Anil. Third time in this over. Right arm over the wicket to Santosh. Santosh tried to steer that one down to third man region, but misses the line completely. And so far it's in this over. Anil bowled 3 very good deliveries, where he kept the batsmen very quiet. 3 balls, just a single run. 4 time in this over. Santosh again went for the off drive, misses it completely. The 4 fantastic delivery will going to make the road which is difficult for team Vasuki to win this match. Again went for the reverse sweep, but not quite getting that one as he wanted to play the reverse stroke. But line is so good there from Anil. So far just a couple of runs in this over in 5 deliveries. Absolutely fantastic over, which is progressing here for Temple Square strikers. Rip correction for Jai Panjirel. This time he just got to that one right from the middle of the bat. The right treatment in the right time. The Anil is got a punishment in the last delivery of the over. And because of that, I think Jai Vasuki, not totally, but partially they are back into this game. 16 they got. That means they have to get another 19 runs in remaining 12 balls. The difference between run and ball exactly 7. And asking run rate is exactly 9.5 runs per over. And Suman, which is really kept the hope of winning this match alive by hitting a magnificent 6 in the last ball of the over. Sachin brought into attack. 19 to get from 2 overs. Match is definitely going to be a very interesting. It's going to be anybody's game. Sachin brought into attack. Starts with the wide, but Santosh tried to reach that ball. Tried to steer that one down to third man region. One more single. With that single score Namuzan to 17. 18 required. Again going for the steer. Santosh is looks like he's not interested to go for the big shot. Maybe he's interested to pick the single and wanted to give the strike as much as possible for Suman because of his leg injury. It's feeling difficult to move his feet. And one more single score Namuzan to 18 on the board. Wide outside line of off them. They're going for the single. And they completed. Giri is running towards the danger end. 1+1, 2 more to the total. This is a bonus run for Jai Vasuki. And because of that bonus run, score Namuzan to 20. 15 required for the victory. Sachin. Right, a move wicket to Santosh. Santosh went for the improvisation. Plays it down to deep third man region. Looking for the second, but very difficult to get. Just a single. With that single, score Namuzan to 21 on the board. 21 on the board. 14 more runs required for the victory. Sachin, right arm over the wicket balls. This time he going over, but not quite getting the distance. This is a huge wicket. Absolutely huge wicket here for Temple Square. A little bit correction. Jai Panjirel has got a huge wicket. Jai Panjirel has definitely got a huge wicket because danger man Suman is the one who hit 1-6, who really opened the gate for his team.
but he's just choosing the distance where he wanted to get to the long off, and very difficult to get the distance, and the fielder is underneath it. The big wicket is back into pavilion now. So new batter in his Sandeep is came into middle. 21, which is a total score. 14 more runs required for the victory. 9 balls remaining. The 14 runs required for the victory. Sachin got a very important breakthrough. This time Sandeep struck that one. Ball is in the air, but safely landed. Just a single there. With the single score, now moves on to 22 on the board. That means 13 required in remaining 8 deliveries. It's going to be anybody's game. It's going to be anybody's game, and Sachin to continue, and Santosh is on strike. Again he went for the reverse sweep, but this time just a single for Santosh, and one more single. With that single score, now moves on to 23 on the board, and that means 12 to get from 7 deliveries. Sachin to Sandeep. This time he lofted and he got the distance. The magnificent struck there from Sandeep, and that six brought Jai Vasuki strongly back into this game. The 29 means 6 runs required for the victory in last over. This is the beauty of cricket. Sandeep and of course Suman. They are particularly the two batters hitting at 1-6 each. It's definitely going to be comfortable. So Santosh is on strike now. The 6 required from last over. Kishore, the bowler, has got responsibility for Jai Panjirel to restrict the 6 runs in the last over. So Santosh is experienced campaigner. Just I've already mentioned one over represented for KCCR Kadri because of some leg injuries. He couldn't manage to perform completely. Again, the first ball outside and left stamp. Santosh completely missed out their delivery. The first step which is on by Kishore. The 5 ball, 6 runs required for the victory. Kishore around the wicket, right arm to Santosh. Santosh this time going for the quick single, and the Sandeep now getting a strike. 5 required, 4 balls remaining. 4 for the tie, 5 for the victory. So Sandeep is on strike. Kishore is on attack. And this time outside the line of off stamp, cuts that one down to short third man region for a single. 4 required from 3 balls. Santosh back on strike. The opportunity for the bowler because Santosh is not looking at that much of comfortable in the middle. But he can be the very handy because of his experience behind him. This time, what you're talking about? What you're talking about? His experience always going to be comes into play. Short pitch delivery ball there by the bowler, and Santosh finishes the match in a style by hitting a huge 6 down to a wideish long on region, almost between mid wicket and long on. And Jai Vasuki registering their second victory out of 3 matches. They lost 1, they won 2 matches. But here is Jai Panjirel. They lost their second match, and out of 3 matches, congratulations for the winners. Time to announce the man of the match.
So man of the match, and certainly it goes to the Santosh of team Vasuki, Jai Vasuki, who's man of the match. ದಯಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ದಯಮಾಡಿ ಜೈ ವಾಸುಕಿ ತಂಡದ ಸಂತೋಷ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವೀತು ಚೌಕಿ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ವೀತು ಚೌಕಿ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಸಂತೋಷ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ from the bat, and now we are into the match number 12 between Shining Boys Jyoti Nagar versus Temple Square Strikers, and for that match I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश. So the match number 12 of this tournament, BPL 2023, is now going to start. First ball, and appeal but umpire ruled it not out. और जहाँ तक सवाल है, शाइनिंग बॉयज ज्योति नगर का मुकाबला टेम्पल स्क्वायर स्ट्राइकर के साथ इस वक्त हो रहा है. शाइनिंग बॉयज ज्योति नगर जो कि इस वक्त पहले बल्लेबाजी करता हुआ और अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद को फॉलो थ्रू में बेहतर तरीके से लपक लिया गया इस वक्त, लेकिन गेंद और बल्ले का ठीक यहाँ पर कांटेक्ट नहीं, तो इस वजह से बल्लेबाज बच चुके. तो पहला ओवर शुरू हो चुका. दो बेहतर गेंदें इस वक्त गेंदबाज जग्गू इस वक्त फेंक चुके हैं और विशाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिना तो ओवर द विकेट, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा और वाइड किस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. इट्स वन विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज जग्गू इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, गेंद थोड़ी सी उछाल लेती हुई अंतिम क्षण में बल्लेबाज के पहुंच से बाहर निकली और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. तो फिर से एक बार गेंदबाज जग्गू गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, बाउल्ड ऑफ हिज लेग्स और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है. विशाल की पारी समाप्त. ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता शफल होते हुए, लेकिन गेंद को बल्ले पर ले नहीं पाए. अंतिम क्षण में गेंद थोड़ी सी नीचे रहते हुए और आखिरकार बल्ले को वंचित करने के बाद सीधे विंडो लेग स्टंप पर जा टकराई. गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और विशाल की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है. पहला विकेट गिर चुका है. इट्स नॉट फॉर वन फॉर वन इन फैक्ट इन द फर्स्ट ओवर फॉर शाइनिंग बॉयज ज्योति नगर. तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ. सचिन coming as a number 3 batsman, he now comes out to the middle for Shining Boys ज्योति नगर और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि जग्गू इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए जग्गू. दाहिने हाथ के बल्लेबाज सचिन के लिए ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन विकेट कीपर के पहुंच से बाहर और गेंद को फील्ड कर लिया गया. चंद टिप्पों बाद शॉट थर्ड मैन पर रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है. एक रन एक विकेट के नुकसान पर बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाजी गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया इस वक्त. शॉट थर्ड मैन पर रन से फिर से नहीं मिलेगा. बेहतरीन ओवर की समाप्ति. सिर्फ एक रन इस ओवर में प्रदान किए जग्गू ने और यहाँ पर एक विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया विशाल का. तो बेहतरीन शुरुआत गेंदबाजी के जरिए इस वक्त जग्गू दे चुके. व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर Temple Square given by the bowler Jaggu.
He conceded just 1 run in his very first over and captured 1 wicket. And this is an absolutely fantastic bowling start made by Jaggu for Temple Square. 1 for the loss of 1 wicket. First over completed. और 3 इक्के इस वक्त स्कोर बुक पर दर्ज हो चुके हैं. 1 ओवर 1 रन और 1 विकेट. और गेंदबाज इस वक्त सुनील गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए चरण और दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ. पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं. और ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और 1 रन का इजाफा. और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. फिर से एक बार गेंदबाज सुनील गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ. ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, बेहतर गेंद थी. इस वक्त गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. और इस बीच धीमी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए, धीमी दौड़ के साथ गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर थोड़ी सी मिस फील्ड और जब तक गेंद को दूसरे फील्डर फील्ड करके थ्रो करे नॉन स्ट्राइक रेट पर 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला था कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से और 2 रन बल्लेबाज यहां पर प्राप्त कर चुके हैं. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर प्रगति पर. सुनील अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर और इनटू द गैप एज वेल. 1 बाउंस एंड इनटू द फेंस. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ सचिन चरण के बल्ले से और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. गेंद को इस वक्त उछाला था लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान खाली क्षेत्र चुनते हुए और चौका प्राप्त करते हुए बल्लेबाज. और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर सुनील इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 8 रनों पर. और फिर से एक बार सुनील गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार. ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा. 1 more run added to the total in the face of extras and with that single run the scoreboard moving up to 9 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. This time down the leg side, 1 more wide और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 9 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं और एक बेहतर ओवर साबित होता हुआ शाइनिंग बॉयज ज्योति नगर की पारी में. तो अगली गेंद ड्राइव किया, इस बार गेंद पहुंची मिड ऑन पर. नॉट मोर देन अ सिंगल. रन नंबर 10 इस ओवर में इस वक्त बन चुका है. कुल मिलाकर स्कोर है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, एक लंबा ओवर यहाँ पर प्रगति पर. गेंदबाज सुनील द्वारा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद ऑन साइड पर, गेंद को बोला खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर गेंद जाती हुई फीडर गेंद तक पहुंचते हुए मिस फील्ड इस बीच और बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं. तीसरा रन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है. थोड़ा सा मिस जजमेंट वहां पर डीप मिड विकेट पर फीडर द्वारा और 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं. 13 रन, 12 रन scored in this over, 13 on the board, 1 wicket lost and they are recovered a little bit after being a shackling start in the first over of their innings for Shining Boys Jyoti Nagar. 13 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. किरण है ना किरण So match number 12 of fantastic tournament in the name of BPL season 3 2023 is now progressing here. Baithurli Premier League. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, कृष्ण विलास गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार. चरण जो कि एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस वक्त देते हुए ओवर की पहली गेंद. कृष्ण विलास
चरण के लिए। लेग स्पिन गेंदबाजी, पहली गेंद इस बार ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान थोड़ी सी मिसफील्ड, बल्लेबाज के पास मौका दूसरा रन प्राप्त करने का। स्ट्राइकर रन पर थ्रो पहुंचा और इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ चरण ने गेंद को उछाला था स्ट्रेट बैक द बॉलर और स्ट्रेट हिट एरिया पर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान 2 रन प्राप्त करते हुए बेहतरीन स्ट्रोक। अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार इस बीच गेंदबाज ये गेंद ड्राइव करना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। थर्ड ओवर स्टार्टेड, 16 रन्स ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज क्रिस्टोवेलास गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा शफल होते हुए, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार क्रिस्टोवेलास गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, अपील प्लम्ब इन फ्रंट गिवन एंड 1 मोर विकेट फॉलन। सचिन द मैन डिसमिस्ड और गेंद सीधे उनके पैरों पर टकराई थी, उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। दूसरा विकेट गिर चुका है, इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। Dikshit, number 4 batsman, is now coming out to the middle for Shining Boys Jyoti Nagar और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा और गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर क्रिस्टोवेलास की गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड ऑन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर। इट्स 17 रन्स ऑन द बोर्ड एंड दिस इज द थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। क्रिस्टोवेलास इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ, इस बार पैरों पर टकराई, शफल होते हुए गेंद को उछालना चाहा था, रन लेना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में अपने इरादे को बदलते हुए अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर्स कंप्लीटेड एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स इट्स 17 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट्स एंड नाउ जस्ट अ लास्ट ओवर रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, prestigious cricket tournament in the name of Baithurli Premier League Season 3 2023 is now progressing here on nicely in this beautiful Panjirail Stadium Kudupu और जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है तो 12वां मैच इस श्रृंखला का यहाँ पर इस वक्त प्रगति पर शाइनिंग बॉयज ज्योति नगर और टेम्पल स्क्वायर स्ट्राइकर्स के बीच में। बेद्रा मीडिया पर एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर। ये गेंद इस बार नो बॉल का इशारा, 1 रन मिलेगा, फ्री हिट डिलीवरी फॉर द बैट्समैन और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर, इन फैक्ट 4th एंड लास्ट ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज रविंद्र नायक इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, फाइन लेग की दिशा में, थ्रो पहुंचा, निशाना चूका, 1 रन बल्लेबाज को मिला बाई के रूप में। Only a bye declared by umpire and with that single run the scoreboard moving up to 19 for the loss of 2 wickets now। तो 5 गेंदे अब बाकी उनकी पारी में और रविंद्र नायक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर into the gap as well, it might been considered brilliantly just inside the fence, in comes the throw and just went wide of the bowler and this time run out happened at the striker end। थ्रो पहुंचा और विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट करते हुए विकेट चटका दिए इससे पहले के बल्लेबाज दूसरा रन प्राप्त कर सके। 1 रन मिला, इट्स 20 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड नाउ 2 balls remaining in their innings, 4 balls remaining in their innings in fact। और रविंद्र नायक नए बल्लेबाज के लिए इस वक्त अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, परिवर्तन के तौर पर ऑफ कटर गेंद थी इस वक्त, वाइड का इशारा, ओवर थ्रो और 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल
और 2 रन उनके खाते में जुड़े और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और रविंद्र नायक एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है डीप मिड विकेट पर और 1 रन मात्र मिलेगा। बेहतर कलेक्शन जस्ट इनसाइड द फेंस, ही कलेक्टेड द बॉल बाय द फील्डर एंड द बैट्समैन जस्ट गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। इट्स 23 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एंड नाउ मुझे था 3 balls left in their innings और रविंद्र नायक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े और थ्रो इस वक्त यहाँ पर नो बॉल का इशारा, लाइन के बाहर गेंद थी। 1+1 2 runs added to the total और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। नाउ काफी लंबा ओवर इस वक्त प्रगति पर रविंद्र नायक का, काफी रन इस ओवर में वो अब तक प्रदान कर चुके हैं। 8 रन अब तक वो इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं पहले 3 गेंदों में और अपनी चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए। काफी रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में इस वक्त प्रदान कर चुके टेंपल स्क्वायर स्ट्राइकर्स के गेंदबाज। इस बार गेंद को उछाला लंबा ऊपर और गेंद को फील्ड कर लिया गया, थ्रो पहुंचा इस वक्त लेकिन फील्डर एक बार फिर से गिर पड़े वहां पर गेंदबाज रविंद्र नायक गेंद को रोकने के प्रयास में, लेकिन गेंद को रोकने में सफल और 2 रन इस बीच बल्लेबाज को मिला और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। इट्स 27 नाउ विद जस्ट 2 balls टू गो इन द इनिंग्स। गेंदबाज रविंद्र नायक इस वक्त तैयार और दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स। 1 more wicket fallen in the face of stumped, 4th wicket gone and now they are 27 for the loss of 4 wicket. Last ball now remaining in their innings, अंतिम गेंद बाकी उनके ओवर का। किरण नए बल्लेबाज के रूप में उनके पारी की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त सामना करेंगे रविंद्र नायक की अंतिम गेंद का। So the last ball of their innings is now coming up. ये गेंद इस बार चूके विकेट कीपर इस बार रन आउट का खतरा, लेकिन काफी वाइड थ्रो और 1 रन बल्लेबाज यहां पर दौड़कर पूर्ण कर चुके। विकेट जरूर चटका लेकिन इससे पहले स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज अपना बल्ला रख चुके थे तो इस 1 रन के साथ इनिंग्स इज अप and Shining Boss Jyotinagar finished with 28 for the loss of 4 wickets in the stipulated 4 overs and now the target for Temple Square Strikers is 29. They have to score for victory. 29 Temple Square Strikers have to score with a required run rate of exactly 7.25 runs per over और देखते हैं वो इस 29 रनों के 29 के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं निर्धारित 4 overs में। 29 in 4 overs they have to score. Their inning starts within just short while. So 29 the target and their innings now going to start and we are just taking a short break और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब टेंपल स्क्वायर स्ट्राइकर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. So before we are going to the innings of team Temple Square Strikers, I would like to call upon 2 captains for the toss for the next match. Totvamasi 11s ಹಾಗೂ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಕೊಂಗೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ. ತತ್ವಮಸಿ 11s ಹಾಗೆ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಕೊಂಗೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ
tossing ceremony for the next match. The 13th match will be going to start after this match, and now it's a chasing will going to start. 29 target for team Temple Square against Shining Boys Jyoti Nagar. And Jagu and Yatiraj, the two opening batters, came into middle. And umpire will going to start the match by noticing the time here. And there's a 350. And first ball, they're appealing for something, but umpire says that ball is hitting the bat of the batsman, so that no question of leg before wicket. First run comes up here for team Temple Square. One without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Kiran to Yatiraj. Next ball outside and leg stump, going to be a wide, and with that extra scorer Namozan to 2 on the board. Driven that one down to short mid-on region. Before that mid-on region, fielder to across its right to the ample time for the batter to complete the single. Both the batters are now started to deal with the singles. So no, exactly they're chasing the moderate total of 29 to win this match. 3 on the board without loss of any wicket. Kiran again back to his bowling mark. Right, a moment wicket balls. There's some nice looking drive off stop by the fielder. Chance of run out. Fantastic work. Excellent work done by the fielder at short mid-on. He just stopped the ball from his left hand, and at the same time, is in the second attempt, he's released the ball from his hand. The left hand throw, but it's well enough for him to get the result. It's a very good work there from the fielder. Dikshit is the one at short mid wicket. He's done a great job to get the run out. The wicket number first is back into pavilion, and Jagu little bit unfortunately is back into pavilion, but very good work done by the Dikshit down at short mid down. The new batter Krishna is in non-strikers and going for the off drive. Fantastic delivery there from Kiran, and batter Yatiraj went for the drive but misses the line completely. The kind of start which is required here for Shining Boys Jyoti Nagar. The bowler tried to give that start, and so far again going for the big drive and outside edge of the bat, misfield dive by the fielder down at short third man region. So batter completed the single there. With that single, scorer Namozan to 4 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. Shining Boys Jyoti Nagar so far in this particular day number 1, they are unbeaten. And in the one Temple Square, they're playing the third match. They won 1, and they lost 2 matches, Temple Square Strikers. So that very important here for Temple Square. If they wanted to win the match, of course, they need to put 100% in this game. But so far, I don't think it's going to be a good start. It just 4 runs came from that over of Kiran. The very good start here from Shining Boys Jyoti Nagar opening bowler Kiran. Only conceded 4 runs. 29 is the target, 25 required for the victory in remaining 3 overs. Bharat will go into start the second over. 18 balls. We're talking about the target is a 29. That means 25 required from 18 balls. It's going to be anybody's game. Bharat starts with the delivery, misjudgment by the batter. Batsman thought it might be a wide, but Yatiraj misjudging the line of the ball, and there is no chance at all for any run. Bharat again, right arm over wicket, went for the drive, and misfield there by the fielder, but protection has been given in the deep in the mid wicket. Sachin, the fieldsman there in the mid wicket, fields the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single, scorer Namozan to 5 on the board for the loss of 1 wicket. Temple Square Strikers against Shining Boys.
This time far away outside the line of off stump, so that wide call by umpire. One more addition to that total score that moves on to 6 on the board, and again the ball went to us third man region, misfield by the fielder, and very good stop. Very good attempt there by the fielder. What could be a certain boundary there, and just saving that boundary there. Absolutely good save. And a couple of runs has been taken. With that couple of runs covered, Namuzan to 8 on the board for the loss of 1 wicket. Again, pedal that one. Quite interesting kind of cricketing stroke there from Krishna there. He picked up a single for that. With that single covered, Namuzan to 9 on the board. 9 for the loss of 2 wicket. Bharat bows, drives that one down to deep long on. Just for the single. Runs are coming in the form of singles in this particular over and the previous over as well for the team Temple Square Strikers, but they needed some acceleration of run rate as well along with that partnership. Oh, this again opportunity to run out, and I think it's going to be a direct. It is going to be a opportunity for the run out, but ball misses the stumps. By call by umpire. One more extra, 2 overs completed. After completion of 2 overs, chasing 29 to win this match. Temple Square Strikers are struggling a little bit. 11 on the board for the loss of 1 wicket. And that means 18 more runs required for the victory in 12 balls. And the run rate required is exactly 9 runs per over. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 11 ರನ್. ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. This time, what a shot! The magnificent struck there from the batter. This is the kind of treatment which is badly required here for Temple Square Strikers. And Krishna is striking for the Strikers. Absolutely terrific shot indeed. Just using the face of the bowler and dispatching that one down to mid-wicket boundary for a huge 6. Now he's growing his confidence after that 6. The fumble from the fielder, they're grabbing the opportunity to come back for the second. A couple of runs has been taken. Now Diksha, I think Krishna who's putting his steps into the accelerator, and 19 already on the board. And that means another 9 runs required for the victory, and dotted delivery there from the bowler Vishal. The Vishal is the need to do something special. After that he conceded a 6 there. 8 runs conceded in 3 balls. Scoreboard is 19 on the board. 10 runs required. Correction, yes, 10 required. Vishal. Again, lovely bowling. Good comeback here by Vishal. Still they have to get another 10 runs to win this match. Remaining 8 deliveries. This time Vishal back to his bowling mark. Around the wicket. Full toss. Helping that one. Nicely down the third man region. And I think it's a free mediated switch it is attempted. Otherwise the batsman can hit that one anywhere down the mid wicket and long on because of that full toss delivery. Surprised the batter, and the batsman free meditate switch it is attempted so that he couldn't manage to take the advantage of that ball. 20 on the board, 9 required. Going for the drive, beautiful looking shot there from Yatiraj. The partnership is slowly building up now. Last over remaining in the last and final over. Temple Square Strikers have to get 9 runs to win this match. 6 ball, 9 runs required for the victory. 29 target. Score account. Score part. Score first score part. Baaki the bakka part. Oh, confusion. 8 required. 21, which is the total score. 8 runs required for the victory. 6 ball, 8 runs required for the victory. So here is a last over. And this time, fantastic wicket keeping opportunity here.
Now it's umpire raising his finger, but wicketkeeper is excited that he's taken a caught behind the wicket. But umpire says not out. But that time Vishal has got a presence of mind. So looking for the stump out, and he completed a job. The good athletic work done by Vishal behind the stump. The first he didn't got a result. Quickly realizing that umpire not raising his finger, then he's attempting for the stump out, and he got a success. Now 5 balls remaining, 8 runs required for the victory. So new batter in is Ankit, one who really tried his level best in the previous match. He's a very good striker of the ball. Absolutely is a clinical striker of the ball. Now needed is big innings in this particular over. Not a big innings, but sensible batting which is required. And wait and see how Ankit will going to get that remaining runs, which is 8 required from 5 balls. Sachin bowls, and this time Ankit drives the ball towards the mid-wicket region, but not more than a single. Just a single. With that single, Skobat now moves on to 22 on the board. That means 7 required, and remaining 4 balls. So 4 balls, 7 required for the victory. But here is a Krishna. Krishna, can he do the job for Temple Square? Yes, he does! He does! And he did it with a huge 6. Magnificent strike. Doesn't look like Krishna is holding the bat, but it looks like Krishna is holding a Sudarshan Chakra in his hand. And hitting the ball down to mid-wicket for a huge 6. Absolutely fantastic strike. This is a Krishna all about for you, as he got a magnificent strike. And it takes a total score into 28. Just a single run required for the victory. The scores are level. Here is a winning run there from Krishna. He is a hero. And he just takes the match away from the opposition. And Temple Square Strikers registering the first victory of this league matches, defeating undefeated Shining Boys Jyoti Nagar. And that will give a lot of confidence here for team Temple Square to winning this match. And congratulations for the winner. And we're coming back to the next match at Tatma, 13th match, and for the day number 1. Tutvamasi 11s versus Amazing Kongur Warriors. The toss which is on by Tutvamasi 11s looks like they decided to field first for the next match. Now time for announcement of the man of the match. It's one and only. One really changing the game for his team, Temple Square. It's a Krishna, the one and only. Krishna has got the man of the match award. I request Krishna to please go to the main stage to collect your man of the match award from our chief guest. I requested Tukaram, the chief guest for the presentation of man of the match. I requested Tukaram to go and collect your man of the match award. ದಯಮಾಡಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
धन्यवाद सतीश. So the match number 13 of this tournament is now going to start between Tattwamasi 11s versus amazing Kongoor's Warriors. And in this match, Tattwamasi 11, after won the toss, they elected to field first, and because of that, the batsmen of amazing Kongoor Warriors at the crease are Dikshit and Rohit, the openers. So umpire just signal to start the match, and just have to note the time, stipulated time in fact. And the first ball of the match is now coming up. So it's already 5 past 4, 4 past 5 in fact, in the evening, and the match number 13 of this tournament is now going to begin. First ball outside the off stump, just going for drive, और गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला. तो एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए गेंदबाज यहां पर रख कर चुके हैं, और मिथुन गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं डॉट गेंद के साथ. अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई, गेंद को इस वक्त ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. 1 रन 90 बिना किसी नुकसान के पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है. इस बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज ये गेंद इस बार गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, और थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर. हालांकि स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं था, और आखिरकार 1 रन बल्लेबाज दौड़कर प्राप्त करने में सफल, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रन. 13वां मैच बीपीएल सीजन 3 2023 के अंतर्गत यहाँ पर शुरू हो चुका है, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ लंगॉन पर, फीडर गेंद तक पहुंचते हुए क्लीन कलेक्शन, और बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर. मिथुन 3 बेहतर गेंदें अब तक वो फेंक चुके हैं, और दीक्षित इस वक्त सामना करते हुए इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी, और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन दौड़कर पूर्ण कर दिया, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर. जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली क्विक वन द लास्ट मोमेंट, मिसिंग जस्ट ऑफ द ऑफ स्टंप, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर. मिथुन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहाँ पर गिर चुका है. Just change of pace at the last moment, bowled a slower delivery, और बल्लेबाज ऐसा कहना पड़ेगा just wanted to play that one too early, because of that no contact between the bat and ball cleanly, and it doesn't got that one right from the middle of the bat. The ball got his stoppage, and the wicket keeper behind the stumps made no mistake, just took held the catch successfully. पहला विकेट गिर चुका है, and now the score is 4 for the loss of 1 wicket, and Rohit now departed for 1. So first over, a successful over came to an end from Mithun, which he conceded just 4 runs in this over, and 1 wicket lost in the last delivery of the first over. Second over starts in their innings, और गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. मनीष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दीपक का आगमन इस वक्त हो चुका है. पहली गेंद जस्ट मिसिंग ऑफ द ऑफ स्टंप, 2 for outside the off stump. इनफैक्ट इट्स कॉल्ड अ वाइड, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर, बिना किसी नुकसान के. जबकि दूसरा 1 विकेट के नुकसान पर यह गेंद ड्राइव किया इस बार लंगोट की दिशा में गेंद जाते हुए, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिले 1, तो रन सभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज मनीष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए ये गेंद ऑफ द टॉस गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे गेंद को इस वक्त फील्ड कर लिया, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. एक धीमा शुरुआत यहाँ पर कर चुका है अमेजिंग कंगूर वॉरियर्स, और फिर से एक बार गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. द बॉल रनिंग डाउन टू योर बैकवर्ड स्क्वायर लेग फेंस. इन फैक्ट द बॉल विंस द रेस अगेंस्ट द फील्डर, एंड इट्स क्रॉस ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री एट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग.
delicately swept and he finds the gap as well. पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक यहाँ पर लगता हुआ अमेजिंग कंगूर्स की पारी में और एक बेहतर स्ट्रोक यहाँ पर लगाते हुए बल्लेबाज दीपक और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद स्कोप किया इनटू द गैप लेकिन वाओ मिसजजमेंट यहाँ पर करते हुए और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन प्राप्त करने का। गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट के जरिए स्कूप किया था और वहां पर थोड़ी सी मिसजजमेंट डीप थर्ड मैन फील्डर द्वारा और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद स्वीप किया स्वेप्ट वेल वंस अगेन ही फाइंड्स द गैप एंड वंस अगेन he's got a boundary for that stroke। इस बार एक बार फिर से गेंद को स्वीप किया था खूबसूरती के साथ थोड़ी सी सफल होते हुए और खाली क्षेत्र चुनते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। सो फैंटास्टिक ओवर इन अमेजिंग Kongu's innings is now progressing here. 12 runs came from this over. 1 ball left in this over. और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज 12 runs scored in this over in fact and 1 ball left और गेंदबाज इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए मनीष दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछाला लेकिन इस बार रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद डीप मिड विकेट पर नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 2 overs have been bowled 17 runs on the board 1 wicket lost they are recovered very well after being a slower start in the first over for amazing Kongur Warriors innings 17 for 1 after 2 overs 2 overs left in overall calculation in their innings. Match number 13 of Baithurli Premier League 2023 Season 3 is now progressing here fantastically. And also a fantastic live coverage we are watching here on YouTube from Bedra Media under the great leadership of Mr. Irfan. 17 for the loss of 1 wicket. 2 overs completed. Third over starts in their innings. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए नागेंद्रा गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ उनकी पारी में ओवर की पहली गेंद लेकर नागेंद्रा इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया फर्मली स्ट्रक डाउन टू लॉन्ग ऑफ नॉट मोर ओह फंबल देयर फंबल एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री he just took eyes off that ball at the last moment little bit of urgency made by him and because of that he conceded a boundary because of that misfield और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। तो एक बार फिर से गेंदबाज तैयार ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा गली फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकल चुकी है और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता रन आउट का खतरा और इसी के साथ यहां पर यह विकेट गिर चुका है। जोखिम दूसरा रन चुराने का प्रयास किया था और इससे पहले कि स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाज पहुंचे सीधा थ्रो पहुंचता हुआ गली फील्डर का विकेट कीपर के हाथों में हालांकि थ्रो थोड़ा वाइड जरूर था लेकिन बेहतर तरीके से गेंद को कलेक्ट करते हुए तेजी के साथ विकेट चटका दिया बिल्स उड़ा दिया इस वक्त विकेट कीपर ने और एक बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है यहाँ पर दीपक का और दूसरा विकेट यहाँ पर खो चुका है इस वक्त अमेजिंग कोंगूर वॉरियर्स। He scored 16 runs into his credit by Deepak and after being playing a good knock, fantastic knock of 16 runs including 3 boundaries, he is backing to pavilion. 22 for 2 now. Again, it's bar, lost it and this time straight to feed. Oh, he dropped! He took the catch in his second attempt. पहले ऐसा लगा गेंद उनके हाथों से छूट जाएगी लेकिन अंतिम क्षण में अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को वो लपकने में सफल सीमा रेखा के अंदर और इस कैच की बदौलत एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। It's 22 for the loss of 3 wicket and this is the third over in progress in their innings. इस मैच के बाद 3 मैचेस और खेले जाने बाकी हैं कुल मिलाकर 16 मैचेस आज खेले जाएंगे 16 मैचेस to be played on today and this is the 13th match of this tournament is now progressing here and right after this match 3 matches to be played on today evening और जहां तक सवाल है बल्लेबाज का तो बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद गेंदबाज की गेंद ऑफ स्टंप से आती है नो बॉल का इशारा और लाइन के बाहर गेंद निकलती हुई और नो बॉल के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। फ्री हिट गेंद बल्लेबाज के लिए दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज इस वक्त तैयार ये गेंद इस बार गेंद को उछाला एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाती हुई फील्डर वहां पर मौजूद नॉट मोर देन अ सिंगल
और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर. It's 24 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Good progressing here for amazing Kungur's Warriors innings. Lofted in the air. This could be a chance and taken comfortably. और मेरे ख्याल से मनु वहां पर फील्डर थे जो जिन्होंने इस कैच को लपका और मनु की इस कैच की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है. So it's 24 for the loss of 3 wicket. And the third wicket gone for the in their innings. In fact, 2 deliveries left in this over. और नए बल्लेबाज हर्षित इस वक्त क्रीज पर मौजूद और अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. और गेंदबाज इस वक्त नागेंद्र अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज हर्षित के लिए. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट विकेट कीपर करने के बाद इस वक्त नागेंद्र ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट. गेंद को खेल दिया इस वक्त फील्डर काफी पीछे एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंचती हुई स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचा लेकिन अंतिम अक्षर में अपने कदमों को बल्लेबाज इस वक्त खींच चुके हैं और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित. 25 now for the loss of 3 wicket and 3 overs has been completed. So last over remaining in their innings और इस बचे हुए लास्ट ओवर में देखना यह है कि अमेजिंग कंगूर वॉरियर्स के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं. इस मैच के बाद राइट आफ्टर दिस मैच द मैच विल बी प्लेड बिटवीन जय वासुकी वर्सेस Samrat United, and because of that I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for toss procedure with organizers. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, द बॉलर ब्रॉट इनटू द अटैक. धनुष इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और पहली गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा एंड अब गोज द फिंगर फ्रॉम अंपायर, स्टक टू हिज लेग बिफोर विकेट गिवन and one more wicket fallen. It's 25 for the loss of 4 wicket at the start of the fourth and the final over of their innings. In fact, just 5 balls now left in their innings. और नए बल्लेबाज रमेश का आगमन यहाँ पर होता हुआ. तो शाम का वक्त लगभग 4:20 यहाँ पर बच चुके हैं. रमेश इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ढीली गेंद और इस गेंद को उछाला और he's got the distance. He's got the distance. हालांकि गेंद को उछाला था गेंद तक पहुंचते हुए लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर. इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. और गेंदबाज इस वक्त तैयार धनुष गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा. 1 ही रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रनों पर. इट्स 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट विद जस्ट 3 balls नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स. और गेंदबाज इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद पैरों पर टकराई और जब तक फॉलो थ्रू में गेंदबाज आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ इस वक्त स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर. 2 balls लेफ्ट. बीमर, दैट्स अ नो बॉल, दैट्स अ नो बॉल और फ्री हिट डिलीवरी इस वक्त बल्लेबाज के लिए और 1 रन नो बॉल के रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर. फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद फुल टॉस लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में सफल. गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर, बाई का इशारा. नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैट एंड बॉल और स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका 35 रनों पर. सो द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. धनुष बॉल्स फुल टॉस बट डजंट गॉट द एडवांटेज ऑफ दैट और अपना विकेट बोल्ड आउट के रूप में विकेट अंतिम गेंद पर गिर चुका है. And 5th wicket gone and finished amazing Kongur Warriors innings is up there. Stipulated overs are finished and they managed to score 35 runs on the board for losing 5 wickets. And now the target for Tatwamasi 11s is 36. They have to score in the stipulated 4 overs with the required run rate of exactly 9 runs per over. 36 the target for them in 4 overs. I request once again the captains of Jai Vasuki and Samrat United please to be reported here for toss procedure with organizers.
The captains, please to be reported here for the toss procedure with the organizers. So 36 the target for them, and in 4 overs they have to score for victory, and let's see can they reach the target or not. उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी, और एक तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने अंग्रेजी में सतीश के साथ हाजिर होंगे जब तत्वमसी 11 की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much, Gopi. So 36 the target, and required run rate is exactly 9 runs per over for team Tatwamasi 11 to win this match. This time first ball, and the batter tried to play that one defensively, Mithun, but allowed a field for leg before wicket, but more than confident. I think just an wanted to disturb the attention of the umpire, but umpire is very experienced. Jayant unmoored, rightly so. Again, appeal for leg before wicket. Again, same line and same appeal which is came from the bowler. That means bowler Rohit starts very well. Just testing the temperament of batter in this particular 2 deliveries, which is piston on a good line and just coming into the batter. Again, the batter Mithun wanted to break the shackle, just lost his patience. After that, 2 dotted deliveries, wanted to hit the ball towards the mid-wicket, but misses it completely. 3 fantastic deliveries to start with here from Rohit. And I think the Mithun might be a little bit struggling to get his natural stroke making. And so far it's a bowler winning the race. This time he just break the shackle, lofted that one handsomely. Oh my goodness, ball is just hitting the umbrella of Bedra Media's cameraman down at deep long off. Magnificent struck. I want to see it in the replay. The way that the batter hitting the ball, it's absolutely a glorious shot. Just reaching for the pitch of the delivery, lofted that one handsomely, and he got the 6 for that. Again, looking for one more big shot, but this time the length is not good enough for the batter to go for the big shot, but he just the last moment just adjusting his strokes. Mithun picked up a single for that. With that single score, but Namuzanto 7 on the board, 7 without loss of any wicket. This time looks like it's something is going here. They're appealing for something, whether the ball hits the stump or not. It's a bowled out, absolutely. The ball hits the stump, the batsman back into pavilion. And a very good comeback here by Rohit. They picked up a wicket of Manish, and Manish is out for golden duck. The new batsman is the hero of the previous match, Manu, walking towards the middle. Of course, he's also got injuries. So that he will going to get the runner for Manu. The first over, it's a good start given by Rohit, even though he conceded 6, but I think he got a huge wicket of Manish in that over. The 7 on the board, chasing 35 to win, 36 to win this match. That means the 29 required for the victory in remaining 18 balls. Raju brought into attack, but Mithun, he's got a bat in his hand. Oh, beautifully ball. Perfect start with the from Raju there with the delivery which is outside the line of off stump a little bit.
And the batter completely missed out the delivery. There is no chance at all for any run. This time far outside the line of off stump, so that wide call by umpire. Purushottam, experienced umpire. One more single. With that single score Namuzan to 8 on the board for the loss of 1 wicket. Again, that ball is well within the reach of the batter. Misjudgment by Mithun. Thought it might be a wide, but well within the reach of the batter. So no question of wide there. It's good comeback here by the bowler. 8 on the board. This time again, appeal for leg before wicket. A loud appeal. But I think might be the height of that ball might be the factor that umpire not interested. Leg by call by umpire. One more addition with the addition of that single score by Namuzan to 9 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. Second is in progress. Chasing 35 to win this match. Tatwa Masi 11s trying their level best to win this match. So next match, Jai Vasuki versus Samrat United. So that I request both the teams, captain, please. Toss which is completed already. Samrat United won the toss in the 14th match. And after that match, 2 matches which is remaining. This is the 13th match is in progress and the chasing is going on. 35 to win this match. Second over is in progress. 9 for the loss of 1 wicket. Manu, the very good striker of the ball, will go into face. This time swept that one just over the top of that square leg fielder. But the protection there is a they're coming back for the second. Excellent running bit of the wicket. I think Manish is a batter. He's running towards the danger end. Because Manish, I think, is the runner who got a run. Manu got a runner there, so he's run very well to complete that second run. So with that couple of runs, Manu is off the mark, and total score now moves on to 11 on the board for the loss of 1 wicket. Still, it's a long way to go. 25 more runs required for the victory. The over number second is in progress. This time a lovely improvisation and switch it there from the batter. And here is the batter coming back for the couple of runs. Manu, the very useful cricketer, is a square behind the wicket and square of the wicket is very strong. And he's just rotating the strike very well. And Scuba Namuzan to 13 on the board for the loss of 1 wicket. Again, beautifully places down to backward point region. Again, they're coming for the second run and they made it quite easily. Then the couple of runs, the Manu is on his way. Over completed after completion of over number 2. It's a 15 on the board. And that means a 21 run required for the victory in remaining 2 overs. Asking run rate, 11 runs per over. 10.5 runs per hour in fact, because 20 which is the total score, 15 score is the total score, and 36 which is going to be a target. That means 21 run required, 10.5 runs per over the required run rate. Having Mithun in the middle, having Manu in the middle, I think it's going to be possible. Tatwa Masi 11 might be thinking about the victory here, but amazing Kongura Warriors have to do something special from the bowling, and they brought Arshit into attack. Arshit bowling with a short run up. Left arm bowler. This time short pitch delivery and batsman hammering. Oh, what a save! Magnificently saved by the fielder. Absolutely one of the best save of this day number 1. No ball called by umpire. That means even the fielder will going to get the catch. It will not going to be a... Now umpire asking for the third umpire for the reference for the 6. Whether the fielder is saved that cleanly or not. And they need to wait for the umpire signal. Whether the fielder touches the rope or not. If the fielder touches the rope, then he makes the attempt. That's going to be a 6. If it is inside the rope, he has got a jump. Then it will going to be a save. So third umpire will going to decide.
So along with the technicians of Bedra Media YouTube channel, umpire Arish will going to examine whether the fielder is saved that or not. We need to be see here. It's a 6 signal by umpire. And it's a no ball as well. And that means a 7 runs which is conceded. And that's going to be a huge one. And just like I mentioned, the Mithun, which is a short pitch ball by the bowler, and the batter taking a full advantage of that one. With that, 6 score jumps into 22. Driven that one down to mid-off region for a single now. Mithun quickly realizing that they are strongly back into this game after that 6 runs with the no ball. And scoreboard moves on to 22 on the board. That means 14 runs required for the victory. 14 required for the victory. Arshit, left arm. Balls again. That ball is nicely balled. And dotted delivery, much required dotted delivery. This time, what a fantastic execution. Beautifully done. So Mano played a magnificent reverse stroke. Absolutely fantastic one. You know exactly the third man inside the ring. Once he get past the fielder, it's going to be a boundary. This time, Manu lofted that one. He's such a fantastic striker of the ball. What a player we have got. Absolutely terrific. We are only thinking about he's a very good player in the square of the wicket and behind the wicket. But he can hit the ball in front of the wicket as well. Absolutely terrific shot. It's a highly expensive over. And score jumps into 33 now. 3 runs required for the victory. Again, they're going for the run there. They're going to be a chance of run out. And just the 3 runs required for the victory. Nothing much worried about the wicket here. But Mithun once again played a very good innings for his team. But the man once again leading from the front is Manu. Is getting the acceleration. The 3 runs required for the victory. New batsman Nagendra is in non-strikers end. This one off the backward, plays it. Oh, what a catch! Magnificent catch! What a wonderful catch has been taken there by the fielder. Dilraj is a fielder. This is the second catch of the day where the fielders really enjoying the condition of the ground, isn't it? Because it's the greenery and the grass which is situated. It's an absolutely fantastic catch. The Dilraj is the one who taken a magnificent, a spectacular catch. It's absolutely a stunner, isn't it? Ball looks like we're going to land it safely. He's just diving to his wrong side. It's the left side. And taken a brilliant catch. Absolutely spectacular. The wicket number, one more wicket is back into pavilion, but nothing much worried about the wicket. Just 3 runs away from the victory. Tatvamasi 11s are looking so strong because out of 3 matches they won all 3 matches. They are unbeaten, but winning this match will going to take them into top in the points table. Nagendra is on strike. Prakash to ball.
This time, lovely shot, plays it down to square leg region. They're running hard and looking for the second, and they completed a couple of runs. With that couple of runs, Coburn moves on to 35. The scores are leveled. Just a single run required for the victory of Tatvamasi 11. This time, Nagendra getting that winning run for his team. The fantastic chasing here from Tatvamasi again. Disappoint here for amazing Kongur Warriors. Still not quite able to win this match, even they got a very good total on the board. But one over which is very expensive, the over of Arshit. And that's why, again, they lost this match. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ 11 ತಂಡದ ಮಿಥುನ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಿಥುನ್ ವಾನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, scoring some valuable runs as well as he pulled a very good over where he picked up a wicket for just 4 runs. So congratulations for Mithun for his wonderful innings. Congratulations Tatvamasi 11s. Now we are into the match number 14, Jai Vasuki versus Samrat United. And for that match I request Mr. Gupi to take over the microphone in our national language indeed. Thank you. धन्यवाद सतीश. So the match starts between Jai Vasuki versus Samrat United, and Samrat United after won the toss they elected to field first, and the openers for Jai Vasuki is Giri and Suman. Meantime the bowler starts a fresh proceedings from that side, and from Samrat United is Praveen. First ball पहली गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. एक रन बिना किसी नुकसान के, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था. ना तो ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को स्कूप करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडल विकेट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट. इनफैक्ट दे आर लुकिंग फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट. 2 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के जय वासुकी क्रिकेटर्स का, जबकि उनकी पारी का पहला ओवर शुरू हो चुका है. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और गेंद को छोड़ दिया, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और फिर से एक बार प्रवीण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को खेलना चाह, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और जब तक गेंद को वो फील्ड करे तो 1 रन का इजाफा. इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. इट्स गॉट अ कपल रन फॉर दैट स्ट्रोक. और थोड़ा सा पीछा करने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर
बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के 7 विदाउट लॉस। गेंदबाज के गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया इस वक्त मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। सुमन के बल्ले से यह छक्का लग चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट कॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लॉफ्टेड दैट वन इन अ स्टाइल ओवर डीप मिड विकेट फेंस फॉर अ ह्यूज वन। परफेक्ट स्ट्राइक और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर। स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 13 विदाउट लॉस। दिस इज द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज प्रवीण गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, बेहतर गेंद थे, कुछ ज्यादा तक गेंद स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सही गेंद घोषित रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। प्रवीण एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद उछाला इस वक्त स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान स्ट्राइट हिट एरिया पर जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता जस्ट अ सिंगल द बैट्समैन गॉट। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड 14 रन्स ऑन द बोर्ड एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली टेरिफिक स्टार्ट फॉर जय वासुकी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। 14 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर। और इस मैच के बाद आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। अगले मैच में मैच नंबर 15 में मुकाबला होगा ड्रीम 11 चौकी और टेंपल स्क्वायर स्ट्राइकर्स के बीच में। और उसके बाद आज का 16वां और अंतिम मैच 16th लास्ट मैच ऑफ द डे विल बी प्लेड बिटवीन शाइनिंग बॉयज ज्योति नगर और जय पंजीरेल के बीच में। और यहाँ पर दूसरा ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ पुष्पराज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। डीप मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 15 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। इनफैक्ट पुष्पराज फील्डिंग में कुछ जमावट करते हुए थर्ड मैन फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है डीप थर्ड मैन पर। और गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। सामना करते हुए इस वक्त गिरी और जैसे गिरी बल्लेबाजी पर आए फील्डिंग में कुछ हद तक तब्दीली यहां पर की जा रही है कप्तान द्वारा सम्राट यूनाइटेड के। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, गेंद गई ऑफ साइड पर पॉइंट पर। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और पुष्पराज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और सुमन स्ट्राइक लेते हुए सुमन ने गेंद को उछाला है लेकिन गेंद सीमा रेखा को पार नहीं कर पाएगी। लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर गेंद को लपक लिया गया बेहतर तरीके से, बेहतर जजमेंट के द्वारा फील्डर ने। और यहां पर ये विकेट नंबर 1 गिर चुका है। सुमन की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। इज आउट फॉर 10 सुमन एंड फर्स्ट विकेट लॉस्ट फॉर Jay Wasuki and now they are 16 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. One more good striker of the ball is now comes out to the middle. संतोष हालांकि उनके पैरों में कुछ हद तक चोट आई है लेकिन चोटिल होकर वो बल्लेबाजी करते हुए हर मैच में रनर की मदद से वो खेलते हुए और आमतौर पर केसीसीआर कद्री का प्रतिनिधित्व वो किया करते एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में वो जाने जाते। इस वक्त सामना करने के लिए तैयार संतोष। गेंदबाजी दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला शॉट फाइनल की दिशा में गेंद पहुंची और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा। नो बॉल का इशारा। 1+1 2 runs now added to their total and with that couple run the scoreboard moving up to 18. फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट अगली गेंद रिवर। इस बार गेंद को स्विंग करना चाहा ऑन साइड पर गिरी ने लेकिन गेंद पल्ले पर नहीं आई और फ्री हिट गेंद इस वक्त व्यर्थ होता हुआ और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रनों पर। दूसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट बॉल्ड आउट। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। This is an outstanding delivery, much straighter line. The batsman wanted to play that one, but the ball after defeating his bat stuck to his middle of stump. Bells are disturbed, and that is the wicket number 2. Giri departs, and Jay Wasuki are now lose their 2nd wicket. It's 18 for the loss of 2 wicket. So what a fantastic tournament is now progressing here in the name of BPL, Baithurli Premier League 2023. Season 3 in this
ब्यूटीफुल पंजरेल कुडुपु ग्राउंड। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो चौथा ओवर, दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। पुष्पराज नए बल्लेबाज, न्यू बैट्समैन विनोद इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, वन मोर लेफ्टी बैट्समैन, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज पुष्पराज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, लेग स्टंप पर आती हुई कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। और यहां पर रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन दिस टाइम, पिचिंग जस्ट नियर टू द बैट एट द लास्ट मोमेंट एंड डॉट बॉल टू एंड द ओवर। एंड फैंटास्टिक ओवर इन Samrat United's point of view came soon, and just 4 runs came from this over. And after 2 overs, Jay Vasuki are 18 for the loss of 2 wicket. 2 overs left in overall calculation in their innings. So Dheeraj, the bowler, is now brought into the attack, starting a fresh over. और सामना इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई। शाम के 4:45 यहाँ पर बच चुके हैं और धूप का प्रकोप हालांकि काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप की तीव्रता अभी भी मौजूद है, धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद है। और जहां तक सवाल है घने वृक्षों के परछाई जो सीमा रेखा के पास जो वृक्ष स्थित है उसके घने वृक्षों की परछाइयां धीरे धीरे पिच पर पधारती हुई इस बात का संकेत देते हुए कि इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी कम हो रही है। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज धीरज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लेग स्पिन गेंदबाजी, गेंद को उछालना चाहा, विकेट कीपर चूके गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग की दिशा में, निशाना टकरा चुका है, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। तो जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो संतोष इस वक्त, माफ कीजिए, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार विनोद और धीरज एक बार फिर से फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर के दरमियान एक फील्डर इस वक्त तैनात किया गया है ठीक है सीमा रेखा के पास बाएं हाथ के बल्लेबाज विनोद के लिए। और गेंदबाज धीरज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, लेग स्पिन गेंदबाजी, चिप किया लंगोन पर, मौका फील्डर के लिए, सीधे उनके हाथों में गेंद पहुंची और इसी के साथ विनोद की पारी पर पर्दा गिर चुका है। Just charging down the wicket, just wanted to loft that one over the Longon face, not succeeded, not so power in that stroke, and finally Longon fielder just took the catch just inside the fence, and that is the wicket number 3. Now Vinod departs and now they are 18 for 3. संदीप इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद, सामना करने के लिए तैयार धीरज की गेंदों का, और धीरज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए धीरज दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, बेहतर फील्डिंग मिड विकेट पर, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। धीरज फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। धीरज की ओवर की अगली गेंद फुल टॉस, बीमर गेंद, नो बॉल, और गेंद पर 1 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल, विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और 2 रन यहां पर उनके खाते में जुड़ चुका है। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड धीरज वंस अगेन कम्स, फ्री हिट डिलीवरी फ्रॉम हिम
और दाहिने हाथ के बल्लेबाज संदीप पर सामना करते हुए लूजर वन बट कुडंट गॉट द एडवांटेज ऑफ दैट डिलीवरी। गेंद को इस वक्त उछालना चाहते थे, ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली, और गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आए, सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और इस ढीली गेंद का फायदा नहीं उठा सके बल्लेबाज संदीप। एक बार फिर से गेंदबाज धीरज, ये गेंद ड्राइव किया, जगह नहीं बना पाए, बेहतर गेंदबाजी, एब्सोल्युटली गुड पीस ऑफ बॉलिंग, और फॉलो थ्रू में गेंद को गेंदबाज ने स्वयं फील्ड कर लिया, रन नहीं मिला, तो डॉट गेंद। और एक बार फिर से धीरज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस पुल किया इस वक्त लगोन पर, दिस टाइम ओ ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय द लगोन फील्डर। This is an outstanding catch taken by the fielder Nicky at long on. He just grabbed the ball, just stepping towards to his top side at the last moment, and this is a magnificent catch taken by the long on fielder. अंतिम प्रयत्न में अपने ऊपर की ओर काफी ऊंचा छलांग लगाते हुए इस कैच को लपका, ऐसा कहना पड़ेगा गेंद उनके हाथों में बैठ गई, और इस बेहतरीन कैच की बदौलत इस वक्त विकेट गिर चुका। और अंपायर ने इस वक्त इशारा किया है तृतीय अंपायर के लिए। So he's gone this time. और इसी के साथ इस बेहतरीन कैच की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है। That was an absolutely stunner, and because of that stunner catch, the batsman is now backing to pavilion, and the third wicket gone for Jai Vasuki. So it's 22 for the loss of 3 wicket. तो निकी का बेहतर कैच इस वक्त बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखा चुका है, और तो इस बीच नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, और धीरज गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए इस बार उछालना चाहा, चूंकि अपील इस वक्त लेग बिफोर विकेट के लिए, लेकिन अंपायर पर, और इस बार स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हो चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग इस वक्त हो चुका था कुछ हद तक, लेकिन अंतिम क्षण में अपना विकेट बचाने में असफल बल्लेबाज, और विकेट यहां पर गिर चुका है। So 3.1 over gone, and it's 22 for the loss of 4 wickets. निकी जिन्होंने बेहतरीन कैच लपका था लॉन्ग ऑन पर, नया ओवर इस वक्त शुरू कर चुके हैं और तैयार अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए कप्तान सम्राट यूनाइटेड के, और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, इस बार गेंद को उछाल दिया है, परिवर्तन के तौर पर ऑफ कटर गेंद फेंकी थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 23 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और निकी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट, दिस इज एन एक्सक्विजिट रिवर्स शॉट प्लेड बाय द बैट्समैन, and because of that he's got a boundary for that stroke. तो निस्संदेह गेंद के लाइन पर आते हुए he just played that one with a reverse shot and just wide of the gully fielder and finds the gap as well. Absolutely fantastic struck. 27 the score now with that boundary, the scoreboard moving up to, और निकी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में पहुंची, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, 2 गेंदें बाकी, और निकी इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार उछालना चाहा, पैरों पर अपील, अब गोज द फिंगर फ्रॉम अंपायर, एंड दैट इज द एंड ऑफ द बैट्समैन। संतोष की पारी पर पर्दा गिर चुका है, दैट इज द एंड ऑफ द बैट्समैन्स इनिंग। संतोष द मैन डिपार्टेड, लेग बिफोर विकेट ऑफ द बॉलिंग ऑफ
Nikki, and now it's 27 for the loss of 5 wickets. Last ball now left in their innings. अंतिम गेंद बाकी और कार्तिक इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद मोटे कद के खिलाड़ी और अंतिम गेंद पर देखना है कि मोटे कद के खिलाड़ी किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर करते हैं. उनमें क्षमता जरूर है करारे स्ट्रोक्स लंबे स्ट्रोक्स लगाने के. इस वक्त अंतिम गेंद लेकर तैयार. ये गेंद बेहतर गेंद. Absolutely fantastic one. Gone through for a quick single and he's gone. Run out and the innings is up. And Jay Wasuki finished with 27 for the loss of 6 wicket in the stipulated 4 overs, and now they set a victory target of 28 now. So what a fantastic over bowled by Nikki, the last over, and because of that they restricted the batsmen of Jay Wasuki for just 27 runs in the stipulated 4 overs. And now the target for Samrat United is 28. They have to score 28, the target in 4 overs for Samrat United. And let's see can they reach the target or not. और यहाँ पर उनके पारी की शुरुआत होगी. सम्राट यूनाइटेड की पारी की शुरुआत होगी चंद लम्हों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर सम्राट यूनाइटेड की पारी की शुरुआत होगी. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much, Gopi. So, 28 is going to be a target for the team Samrat United to win the match. Meanwhile, I request the two teams' captain please be reported here for the toss. Captain of Dream 11 Chowke as well as the captain of Temple Square Strikers. Dream 11 Chowke ಹಾಗೂ Temple Square Strikers ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So, opening batters came into middle. Nikhil as well as Dheeraj, the two opening batters are in the middle. Nikhil is in the striker's end, and the bowler Sandeep will go into start the proceedings. Sandeep, the 28 required in 24 balls, and here is the first ball. Right, a over wicket starts with a dotted delivery. No, it's a wide outside the line of off stump and wide signal for umpire. That ball which is going outside the line of off stump. Of course, our commentary box which is in a square angle, so that very difficult for us to judge, of course, and where the ball is pitching and where the ball is moving. And here is the first next ball. Sandeep bowling right arm over the wicket to Nikhil. Nikhil this time outside the next time, but two consecutive wide deliveries to start with that two extras. And the team United, Samrat United has got the good start without any effort from the bat. They got two valuable runs in the form of extra. Sandeep again. Balls, this is a consecutive third wide. The hat-trick wide ball there by Sandeep. 3 without loss of any wicket. For the next match, the 15th match, the captain of Dream 11 Chowki won the toss against Temple Square Strikers. That is the 15th match, and Dream 11 Chowki elected to field first. And this time, sensible batting here from Nikki there. We're seeing that he got 3 valuable runs in without any delivery, so that he's just looking for the rotation of strike. That's picked up a single there. With that single, scoreboard numbers on to 4, and he opened his account with a single. Bowled him, cleaned him up. Sandeep bowls a beauty. Absolutely japper. Just nip back into the batter. The batsman has no clue whatsoever for that particular delivery. Little bit movement of the feet. Try to put the ball into the line of the ball, but ball is just
getting that one into the gap between bat and pad and hits the stumps. The wicket number first pitch is back into pavilion. It's a 4 for the loss of 1 wicket. So new batsman is Roshan. He is promoted up in the order as a number 3 batter. So wait and see how we'll going to justify his promotion in the batting order. The sensible batting which is badly required here for Samrat United. Sandeep, after that shackling start, is ball well. This time appeal for like before, wicket is gone. Flump in front of wicket. No doubt at all in that occasion. Balls nip back into the batter. The batsman's back leg right in front of the middle stump. And batsman got a hesitation in his mind, Harish, to raise his finger. The back-to-back 2 wickets here for Sandeep. After that, 3 back-to-back wide deliveries. Then he bowled 2 back-to-back wicket-taking deliveries. It's a 4 for the loss of 2 wickets. New batter in is G1. So Sandeep is on hat-trick. It's already the 1 hat-trick which is taken place in this particular day number 1 of this prestigious BPL. Can Sandeep will going to get the 2nd hat-trick? No, it doesn't. A full toss. The batsman played it quite carefully. Back to bowler, and there is no chance at all for any run. Very good comeback here by Sandeep. Absolutely good comeback. 3 wide balls, then 2 wickets, and then dotted deliveries. Sandeep. Right over the wicket balls to G1. G1 this time, a top edge. Oh, misjudgment. The mid-on fielder, what could be a sudden catch, is almost charging to the ball, but ball came into him. The ball which came into him, but he's tried to take the catch, thought that it might be well in front of him, but ball is landed safely. So 1 more single has been taken, then scoreboard now moves on to 6 on the board for the loss of 2 wickets. Sandeep bowls, batsman drives that one down to mid-wicket region. They're running hard, looking for the second. In comes a throw from the deep, chance of run out. And this time looks like umpire referring for the 3rd umpire to get the decision. Nicky, can he able to survive or not? Umpire Purushottam asking for the 3rd umpire to give the decision. Whether the batter is safe or not. It's going to be a very close one. It's gone. It's a shot of the crease. A very good work done by Santosh behind the stumps. And 4 wicket number 3rd which is back into pavilion. It's a 6 for the loss of 3 wicket. Samrat United are really struggling. And the scoreboard is 7 on the board. Because they're coming back for the 2nd. They completed first run. They're trying for the 2nd run. They are not taken place. Pushparaj is a new batter in. The bowler, Giri, brought into attack. Giri, of course, fails to contribute from his bat, and he can recover. He can manage in the bowling department as well. He's a very good all-rounder, so that I'll wait and see how he'll going to contribute. The equal battle is on. 28 which is the target. Required run rate which is the 7 runs per hour. The team Samrat United has got 7 runs in the first over, but they lost 3 valuable wickets for that 7 runs. This is one of the biggest problem here for Samrat United. The BPL is
wonderfully progressing here in this most beautiful Panjirail cricket ground here in Kudupu. The day number 1, almost it's a very successful. This time, looks like it's a chance of run out in the non-strikers and going to be very close. If it is directed, definitely going to be a chance here. They're going for the overthrow. The couple of runs has been taken. Frustration for the bowler. There is opportunity which is created for the run out at once. The fielder misses the stumps. Got opportunity for the overthrow for the batters to come back for the second. With that couple of runs, Kobar numbers on to 9 for the loss of 3 wicket. Nicky is on strike. Giri is on attack. Bowling with a short run off. Left arm around the wicket. This time nicely plays it down to mid wicket. Catch it is a call. But there is no fielder in that mid wicket. Of course, that ball is landed safely between a short mid wicket and a deep mid wicket region. Just a single here for Nicky. And with that single score, numbers on to 10 for the loss of 3 wicket. The partnership which is badly required here for Team United if they wanted to win this match. Otherwise, it's very difficult to get the task of target of 28 to win this match. Looking for the improvisation. Wow, lovely improvisation. Defeats everyone. The boundary comes up. Lovely execution here from Pushparaj. Just using the face. Using the pace of the ball and just getting the direction by playing at horizontal bat. Absolutely fantastic. A much required boundary came from the bat of and now scoreboard is 14 on the board. That means half of the job which is completed. They need to complete another half of job. That means 14 required for the victory. The match looks like now, because of that boundary, Samrat United back into this game. Sensible batting, absolutely. Pushparaj quickly realizing that after getting a boundary, they're strongly back into this game. So that he's just looking for the single. And with that single, score numbers on to 15 on the board. 13 required for the victory. The over number second is in progress. That means 14 deliveries remaining. 13 runs required for the victory. Giri. Balls nicely driven. Nicky is playing a sensible knock. Absolutely sensible knock indeed. Plays it quite beautifully. Imperious extra cover drive. And he got a single for that. With that single, score numbers on to 16 on the board. 12 to get. The remaining one more single. This time it's going to be a single. Yes, it is. So with that singles, 2 overs completed. After completion of over number 2, it's a 17 on the board. That means 11 runs required from 2 overs. 12 balls, 11 runs required for the victory. Of course, BPL is going on. Even IPL is also going on. The second day of IPL. The first match. Pushpa, a little bit correction. Yes, the match between Pushparaj is on strike. Of course, he is in a striker's end. But here in the IPL, we are talking about Punjab, Kings 11 Punjab versus KKR. 175 so far. The report came in. The last over remaining of the innings of Punjab Super Kings is 176 for the loss of 5 wickets against KKR. That is in IPL, but here in his BPL, as still the battle is on for the victory. The 17 on the board, 19 led the correction, 19 on the board, and 9 more runs required for the victory. 9 required. What a match. 10 balls remaining. Driven, set runs a fielder. No chance at all for a run out, but there is a single run. So both the batters are playing as per the condition required. Both the batters are playing as per the condition required. This is what the United wanted to do here, because it's a must-win match for them. As far as the performance in this day number 1 is concerned, they needed victory badly. Samrat United, they won so far
They only won one matches. This time, once again, it's going to be a boundary. So what an innings is playing here, Nicky, for his team. Absolutely delicately plays it down to find a boundary for 4 runs. And that boundary will take the match away from the opposition. The scoreboard is 24 on the board. 4 runs required for the victory. Just 4 runs. There's an appeal for leg before wicket. Umpire says not out, rightly so. It looks like leg by. One more single. With that single, scoreboard now moves on to 25. Just 3 runs away from the victory. And the Samrat United definitely will going to enjoy this victory because they played against one of the formidable team. This time, hits that one down to mid square leg region. But I don't think we're going to get the boundary. The fielder is underneath it. And before from the mid-wicket region fielder to collect that one, ample time for the batter to complete that couple of runs. So with that couple of runs, they're coming very close to the victory. 27, 1 required in 1 over. One required from 1 hour. Dream Chowki, Dream, a little bit correction, Samrat United. It's very close to the victory. Jai Vasuki, after they lost their first match, then a consecutive 2 wins. Again, they're going to face the defeat here. This time they're going for the single and they completed. A very good victory for Samrat United, and all goes to the batter Nicky as well as Pushparaj. They got a very good partnership, and that partnership takes the match away from Jai Vasuki, and Samrat United registering their second victory of their league matches. And with that victory, and they're grabbing 2 points. And now time to announce the man of the match of this match. The man of the match for this match is the all-round performance by Pushparaj, who scored valuable runs as well as picked up 2 valuable wickets. So that I request Pushparaj to go and collect your man of the match award from our chief guest. Tarun, one of the organizers, will go in to present the man of the match award for Pushparaj of Samrat United for his fantastic all-round performance. One who picked up 2 valuable wickets and 10 valuable runs. Dhanyawad Satish. So the match number 15, the second last match of the day 1 of BPL Baithurli Premier League 2023 is now going to start between Dream 11 Chowki versus Temple Square Strikers. Dream 11 Chowki are won the toss.
and they elected to field first. The first ball of the match is now coming up. पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और इस बार प्लम इन फ्रंट गोचित. हालांकि ऐसा कहना पड़ेगा गेंद लाइन पर टिप्पा खाई थी और स्टंप्स को कॉन्सेंट्रेट कर आती हुई और क्रॉस एंगल पर हमारा कमेंटेटर बॉक्स रहने की वजह से हमें ठीक से मालूम नहीं पड़ा कि गेंद लाइन के बाहर है या अंदर है. तो यहाँ पर लाइन पर गेंद टिप्पा खाई थी मिड स्टंप को कॉन्सेंट्रेट कर आती हुई और इसी के साथ ये पहला विकेट पहली गेंद पर गिर चुका है. तो पहला विकेट गिर चुका है. इट्स नॉट फॉर वन. जग्गू की पारी की समाप्ति हो चुकी है और शशांक यहाँ पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ कृष्ण विलास इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शशांक दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए स्वीप करना चाहा. गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर वाइड का इशारा. लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. टेम्पल स्क्वायर स्ट्राइकर्स का एक रन एक विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से शशांक का गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्वीप करना चाहा. गेंद पैरों पर टकराई. एक बार फिर से अपील जरूर की गई लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और अंपायर ने इशारे से कहा अपने हाथ को दाईं ओर दिखाकर कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है. इस तरह से बल्लेबाज के लिए कोई क्षति नहीं और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथों पर विकेट रिवर्स शॉट लेकिन गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर और जहां तक सवाल है रनों का तो रन से इस वक्त नहीं मिलेंगे. स्कोर इस वक्त रुक चुका है. एक रन एक विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट शशांक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. स्वीप किया इस वक्त करना चाहता लेकिन नहीं कर पाए और विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट के जरूर चटका लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए. स्कोर रुक चुका है. एक रन एक धीमा शुरुआत यहाँ पर कर चुका है टेम्पल स्क्वायर स्ट्राइकर्स और अगली गेंद ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद लेकिन स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका. 2 रन एक विकेट के नुकसान पर पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. ये गेंद स्वीप करना चाहा. स्वीप किया बेहतर तरीके से इनटू द गैप एज वेल. He's get a single. In fact, they come back for the second. This could be in trouble. This could be in trouble. And now it's going to be a third umpire. तो यहाँ पर काफी नजदीकी मामला हो सकता है और देखना यह है कि जब विकेटें उखाड़े गए थे विकेट कीपर द्वारा तब बल्लेबाज क्रीज तक पहुंच चुके थे. अपना बल्ला क्रीज पर बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं. तो देखते हैं तृतीय अंपायर यहाँ पर क्या निर्धारण देते हैं. He's gone. He fell just short out of his crease. And that is the wicket number 2. और निस्संदेह यहाँ पर रनआउट के रूप में विकेट गिर चुका है. दूसरा विकेट गिर चुका है 3 रनों के योग पर और ऐसा कहना पड़ेगा टेम्पल स्क्वायर स्ट्राइकर्स कुछ हद तक संकट की स्थिति में यहाँ पर नजर आती हुई. They are looking in trouble a little bit. 3 for the loss of 2 wicket in the over number first in progress. और नए बल्लेबाज नंबर 4 बैट्समैन is now comes out to the middle और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज से कुछ बातचीत करने के बाद स्ट्राइकर की ओर इस वक्त जा चुके हैं और सामना करने के लिए तैयार. अंकित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. नए बल्लेबाज के रूप में शशांक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त गेंदबाज की बाईं ओर से लेकिन मिड ऑफ पर गेंद पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इसी के साथ ओवर नंबर 1 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड फर्स्ट ओवर absolutely a slower start for Temple Square strikers managed to score only 3 runs on the board for losing 2 wickets after the completion of first over and still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining in their innings. 3 ओवर का खेल बाकी और दूसरा ओवर उनकी पारी में इस वक्त शुरू होता हुआ बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट बिद्रा मीडिया पर इस वक्त किया जा रहा है. यूट्यूब पर जनाब इरफान इनके सारथ्य में और इस ढलती विशाम में इस बीपीएल बैतुरली प्रीमियर लीग सीजन 3 2023 मेगा श्रृंखला के अंतर्गत मैच नंबर 15 की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है. प्रथमार्ध इस वक्त प्रगति पर. दूसरा ओवर शुरू हो चुका है. संतोष
गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ओवर। इस बार गेंद को ड्राइव किया, रन के लिए दौड़ पड़े, मिसफील्ड वहां पर और इसमें स्पीड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन प्राप्त कर लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया गया है इस वक्त और मिड ऑन फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है लॉन्ग ऑन पर। डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद और लॉन्ग ऑफ भी इस वक्त मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई वाइड अगेन और वाइड के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। संतोष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए कवर पॉइंट फील्डर को इस वक्त पीछे भेजा गया है और एक बार फिर से दोनों बल्लेबाज कुछ हद तक बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और संतोष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, रन इस वक्त ना मौका, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को कलेक्ट करने में असफल गेंदबाज और डॉट गेंद यहां पर उनके खाते में जुड़ता हुआ और इस डॉट गेंद के साथ स्कोर बोर्ड यहां पर रुक चुका है 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और संतोष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर फाइन लेग पर कहना पड़ेगा। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर अपनी अगली गेंद लेकर संतोष इस वक्त ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई एक और वाइड और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से संतोष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, बेहतर गेंद थी और गेंद को सीधे विकेट कीपर ने अपने हाथों में कैद कर लिया विकेट के पीछे और स्कोर रुक चुका है। अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, बिल्कुल जमीन के सहारे रन लेना चाहा लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित और एक बार फिर से बल्लेबाज को रन नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुका हुआ है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज ने गेंद को ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति, 2 overs completed, one more good over and Dream 11 Choki's point of view came to an end. 6 runs came from it, 2 overs and after 2 overs still the batsmen of Temple Square Strikers searching for the right track. It's 9 for the loss of 2 wicket after completion of 2 overs. Two overs remaining in overall calculation in their innings और तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। गेंदबाज ऋतिक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर तब विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिड लेग, गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर यानी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ऋतिक फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस पुल किया है इस वक्त, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर गेंद को लपक लिया गया और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। फुल टॉस गेंद को लॉफ्ट किया था इस वक्त लेकिन स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और लॉन्ग ऑफ फील्डर ने गेंद को इस वक्त लपक लिया तो इस वक्त यह विकेट गिर चुका है। इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। Temple Square Strikers are now looking deep in trouble. Just a third over started in their innings. 11 balls left in overall calculation. In fact, it's a 10 ball left in overall calculation in their innings. Still they got 7 wickets kept intact. 7 wickets still they got out in their hand. यशु नए बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। इस बार उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर।
रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, कोशिश तो जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। अगली गेंद ऑन साइड पर, गेंद को उछालना चाहा सफल होते हुए, लेकिन उछाल नहीं पाए और गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड कर ली गई। रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 11 रनों पर, 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार ऋतिक, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, इस बार उछाला गेंद को कवर फील्डर के सिर के ऊपर से, 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर यशस्वीतम पूर्ण कर चुके हैं। He just scooped that one square of the wicket at the last moment, just over the cover point, fielder said, and because of that he's got a couple of runs for that stroke. Scoreboard moving up to 13 now. और ऋतिक अगली गेंद, इस बार बेहतर तरीके की विकेट कीपिंग, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अपना पैर क्रीज पर रख चुके थे, सुरक्षित क्रीज पर वापस लौट चुके थे और इस वजह से कोई क्षति नहीं। एक और बेहतर ओवर, वन मोर फैंटास्टिक ओवर in Dream 11 Chowki's point of view came to an end. Just 4 runs came from this over. 3 overs completed and a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Dream 11 Chowki. And because of that, Temple Square strikers batsmen are struggling. It's 13 for the loss of 3 wickets after completion of 3 overs. Just a last over remaining in their innings. So last over starts in their innings और अंतिम ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाज गौतम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए ओवर की पहली गेंद, यह गेंद ऑन साइड पर, गेंद को स्विंग करना चाहा, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का अंतिम ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। गौतम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, फुल टॉस, गेंद को उछालना चाहा, इस बीच नो बॉल का इशारा स्क्वायर लेग अंपायर द्वारा, बीमर के तौर पर यह गेंद थी और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। 15 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, फ्री हिट डिलीवरी फॉर द बैट्समैन और गेंदबाज इस वक्त तैयार। इस बार चूके और विकेट कीपर भी चूके, 1 रन मिलेगा बाई के रूप में। Just using his feet at the last moment, just wanted to loft that one after being comes down the track, missing the line completely. Wicketkeeper also misses, and because of that, the batsman got a single in the face of bye in this delivery. अगली गेंद, ये गेंद उछालना चाहा, bowled out, बेहतरीन गेंदबाजी और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 1 more wicket fallen, 16 for the loss of 4 wickets. So next one, bowling to the new batsman and he misses और डॉट गेंद यहाँ पर जुड़ता हुआ। स्कोर पोस्ट is at 16 for the loss of 4 wickets now. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, गौतम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर यह गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार रही। मिड ऑफ पर जब तक गेंद फील्ड हो, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 17 रनों पर। 2 गेंदे इस वक्त बाकी अब उनकी पारी में और गेंदबाज गौतम जमीन के सहारे गेंद ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पर, फील्डर थोड़े से पीछे, थोड़ी सी मिस फील्ड और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और गेंदबाज गौतम इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार गेंद को उछाला डीप मिड विकेट पर, बेहतरीन प्रयत्न, एब्सोल्युटली डेस्परेट अटेम्प्ट मेड बाय द फील्डर बट वोंट took the catch और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। The ball fell just short of a fielder at wide east long on and a fantastic effort made by the fielder और इस बीच 2 रनों के साथ the innings is up and the innings of Temple Square strikers are completed. Their stipulated overs are completed. They managed to score only 20 runs on the board for losing 4 wickets in their stipulated 4 overs and now the target for Dream 11 Chowki is 21. 21 the target for Dream 11 Chowki in 4 overs. They have to score for victory with a required run rate of exactly 5.25 runs per over. With the help of 10 wickets, they have to score. The present equation shows for them. And let's see can they reach the target or not. Meantime, next match will be the last match of the day. Day 1 of BPL Season 3 2023 is now going to
play between Shining Boys Jyoti Nagar versus Jai Panjirel. And because of that, I request the captains of these two teams please to be reported here for the toss procedure with organizers. Shining Boys Jyoti Nagar ಹಾಗೂ ಜೈ ಪಂಜಿರೇಲ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇಂದಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ. So the innings of Dream 11 Chowki is now going to start, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English. Thank you. Dhanyavad. Thank you very much, Gopi. So, Dream 11 Chowki, the bowler did a great job to restrict the opposition for just 20 runs, and target for them is just 21 to win this match. And Dream 11 Chowki has got two opening batters already. They made the way to the middle of the pitch. Ritik is one of the top left-hand batter. Is a very tallest player as far as this cricket tournament is concerned. Will go into face his first delivery, and Loki is one more opening batter. He is in non-strikers, and copybook style defensive stroke plays it down to mid off. Following that push, he picked up a single, a little bit misfield by the bowler on his follow through, so that the batter Ritik has managed to complete his first run. One without loss of any wicket. Just a 20 target. 21 is a target to register victory here for the team Dream 11 Chowki. Right arm over the wicket balls. This time nicely plays it down to backward point region. Off stop by, very good stop there from the fielder. So no ball called by umpire straight away. Umpire called it's a no ball. And I think 3 fielders outside the circle. So that absolutely absence of mind, isn't it? Power play is on. You can't keep 3 fielders outside the circle. And this is really going to be disaster. You need to see that you are playing your 4th match, but you doesn't know the rules and regulation of the power play. That's absence of mind from bowler, I think so. Even the captain of the side. So free hit delivery for the batter. The batter Ritik here, can he able to take the advantage of that one? 3 on the board. Bowler bowls. Jagu balls, and ball is nicked it, but no danger of getting out because of that free hit delivery. The batter definitely going to be safe here. He got a single for that. With that single, scored numbers on to 4 on the board without loss of any wicket, chasing 21 to win this match. Coming back to the Dream 11 Chowki. In the first match, opening match, they lost the match against Jai Panjirel. And they came in a second match also, and one more dotted delivery. Second match also, they faced the defeat against Samrat United. And again, they played against amazing Kongur Warriors. Again, they faced the defeat. Now they're playing their 4th match, and they wanted to win the match. Especially, they wanted to end the day number 1 with a victory. And I think this bowler really set a stage here. They set a very good stage here, platform for the batter to complete that 21 runs to win this match against Temple Square Strikers. Again, ball is in the air, and it's a huge wicket. It's a huge wicket here for Temple Square Strikers because the danger man Ritik departs. They tried to looking for improvisation, but he got a top edge, and a short fine leg fielder making no mistake at all. It's a too much defensive frame of mind. Of course, you are chasing a 21 to win this match, but you need to play your natural stroke making. It's absolutely, it's your body language. You cannot play that improvising cricketing stroke. And he is back into pavilion. Gautam is a new batter for team Temple Square Strikers. Just coming back to the Temple Square Strikers in this particular tournament. Temple Square, as of they faced their first match this time,
It's a very good delivery. It's a good over there from Jagu. Wicket taking over. Just 5 came from that over. And completion of first over. Chasing 21 to win this match. And Dream 11 Chowki, the managed to get 5 for the loss of 1 wicket. That means 16 runs required in remaining 3 overs. Temple Square, they lost their first match against Totwamasi 11s in the opening match. And afterwards they came to play the second match against Jai Awasuki. There also they faced the defeat. And then they won the last match against Shining Boys Jyoti Nagar, and they opened the points table. Now here they're playing the fourth match, and wait and see how well they're going to defend this small total of 20-21 to win the match for the opposition team Dream 11 Chowki. The last match, after this match, Shining Boys Jyoti Nagar takes on Jai Panjiril. Already toss which is completed. The captain of Jai Panjiril won the toss. And the decision which is pending, the captain have to tell the decision immediately after the toss. This is actually the discipline what we wanted to see, because you are coming to the toss with some game plan, and after tossing you are making game plan means you are not ready. So that's very important for the captain. After winning the toss, he need to tell the decision immediately. So scoreboard is 6 on the board for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket, beautifully bowled. That was a perfect leg spin display here from the bowler Gautam Krishna. The Gautam is on strike. Krishna, right arm over the wicket, bowls to Gautam. Gautam drives. Oh, what a good piece of fielding there by the fielder, but not quite able to stop the single from this to batter. It's a very good attempt there from the fielder. Of course, everyone enjoying this cricket ground, isn't it? If it was necessary or not, but they try to dive to get some enjoyment in diving in this special cricket ground, greenery cricket ground here in Panjirel. Beautiful delivery, perfect lecatary again there from Krishna. The kind of over which is required here for the fielding team. And the Temple Square strikers are really fighting hard to save this match. This time, full toss delivery, appeal for leg before wicket, and is gone. Absolutely flum. Of course, it is a full toss, but I think that ball is hitting him right in front of middle stump, and ball is just going digging down, and that was a right decision, I think so, from umpire Purushottam. That the ball, the full toss, of course, over number 2, which is completed. After completion of over number 2, it's a 7 on the board for the loss of 2 wicket. The match now evenly poised. There is a slow full toss and a low full toss. The batsman just misreading that full toss, looking for the big shot, missing it completely. Once the ball is a miss the bat, and finding himself right in front of a middle stump. The new batter in is Sashank. Now 2 overs remaining, 12 balls remaining. They have to get another 13 runs. I think, yes, 13 runs to win, 14 runs to win this match. 7 is the score, 14 required. 12 balls, 14 required for the victory. Match is evenly poised. Sunil brought into attack. They're going for the drive, but there is a possibility of a single there. Again, the batsmen are not interested. So, one more dotted delivery. Each and every dot ball will going to create the problem here for Temple Square, for Dream 11 Chowki. A good piece of fielding there by the fielder, but not quite enough to stop the single there. Coming back for a second. Good running between the wicket, and umpire says it's not rightly so. The couple of runs has been completed. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 9 on the board. 11 required for the victory in remaining 10 balls. One more run completed. That means 10 runs on the board. 11 required for the victory. Remaining 9 deliveries. It's going to be anybody's game.
10 runs completed, 11 required for the victory. 21 is the target. 9 ball remaining. 9 ball, 11 runs required for the victory as the Sunil balls. Right arm over the wicket balls. Beautifully ball. Perfect leg cutter. Now problem has started to create here for Dream 11 Chowki after the bowler did a great job, but the batters are nearly not justifying the effort of their bowler. And each and every dot ball is going to be a problem here. But still it's possible for Dream 11 Chowki. They need to play sensibly. 8 ball. 11 required for the victory. Driven that one down to deep long on region for a easy single. They're looking for the second, charging for the second, and it's going to be out. The batter lost his bat from his hand, trying for the second run, where this is very difficult to get. Throw coming from the field and the deep long on. The batsman finding himself short of his crease. So 11 on the board. Still they have to get 10 runs. 10 runs for the win for the victory. Seven balls remaining. 10 runs required. 7 ball 10. One big shot will go into change the complexion of this match. Is that Praveen is a new batter, is walking towards the middle. Shashank is in striker's end. Again, beautifully balled, but the ball just going down the leg stump further away. Wide call by umpire. One more addition with the addition of that single scoreboard. Namuzan to 12 on the board. 12 means 9 required. Driven that one down to deep long off. Just a single. Looking for the second. Oh, he misses the ball. The golden opportunity to make the run out, but bowler is really struggling to catch the throw from the fielder in the long off. The couple of runs which is completed, a very important couple of runs, and scoreboard numbers on to 14. That means 7 required in the last over. Still the match is in balance. Still match is in balance. It's going to be anybody's game. Dream 11 Chowki, still they're searching for their first victory of their league match. So 7 required from last over. The last over, the bowler will go into start the proceedings. Arjun will go into bowl the last over. So 7 required for the victory for Dream 11 Chowki. Balls out. Oh, going for the big one. Misses it completely. Absolutely bad miss. The Arjun bowled a beautiful delivery. And Praveen looking for the mighty stroke where it is required some sensible batting. The 5 balls, 7 runs required for the victory. Arjun looking for the magical over. Driven that one towards the mid wicket. Not more than a single. Just a single. That means a 6 required for the victory. 6 required and remaining 4 deliveries. Shashank back on strike. Arjun so far bowled 2 very good deliveries, but a job which is not yet over. Even Shashank wanted to get the winning runs for his team. Third time in this over. Balls, oh, huge wide. That was going to be a bonus. Good piece of fielding there by the fielder. Otherwise, it's going to be all over. That was a good piece of fielding from the fielder. The couple of runs, wide +1, 2 more to the total. Then scoreboard moves on to 17. 4 required. 4 deliveries remaining. 4 runs required for the victory. Again outside the line of off stamp, going to be a wide. Now Dream 11, Chowki. Can they complete their dream of winning the first match here? Of course, why not? Now they're in the right position. Scoreboard is 18, 3 required, 4 balls remaining. Arjun bowls. There's some Praveen drives towards the mid wicket. They're looking for a second. In comes the throw.
Not required. Not required. But I think that will not going to make any impact, maybe, because just a couple of runs required for the victory. But coming to the new batter coming to the middle, it might be the opportunities created for the fielding team, because one dotted delivery will going to create the problem for Chowki, because still they have to get another 2 runs to win this match in remaining 3 deliveries. ಮೂರು ಎಸೆತ ಎರಡು ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿನಗರ್ ವರ್ಸಸ್ Jai Panjarel. The captain of Jai Panjarel won the toss, selected to field first for the final match of the day number 1. Now 2 to get. From 3 balls again, that ball is a wide. Now the scores are leveled. Dream 11 Chowki leveled the score. 1 run required for the victory. 3 balls remaining. Arjun fails to control that over. Ball so many wide deliveries. And now Temple Square strikers are looking. Only they can tie the match if he bowls 3 very good deliveries. Otherwise, Dream 11 Chowki. This time 1 ball, which is a dotted delivery. Now 2 balls remaining. 1 run required for the victory. The bow batter is a new batter, a little bit under pressure, looks like. Santosh is a young cricketer. Need to play sensibly. But even Arjun wanted to get that 2 good deliveries. But have a look at the fielding set. It's absolutely closing fielder. Doesn't look like it's a 4 overs match is going on. The scenario of test matches. Absolutely everyone is very close. This time going for the single. Wicket keeper missed it. And that's it. No signal. I think it's a bye. Yes. So that's it. 21. At last, Dream 11 Chowki managed to win their first match in the day number 1. Congratulations, Dream 11 Chowki defeated Temple Square Strikers by 6 wickets. And now time to announce the man of the match. So man of the match goes to Shashank. Shashank of Dream 11 Chowki for his the very good all-round performance in this low-scoring game. I request Yashpal of Jai Panjarel to present this man of the match award for Shashank for his all-round performance. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೈ ಪಂಜರೆಲ್ ಇದರ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಡ್ರೀಮ್ 11 ಚೌಕಿ ತಂಡದ ಶಶಾಂಕ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಈ ದಿವಸದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶೈನಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೈ ಪಂಜರೆಲ್ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಜೈ ಪಂಜರೆಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So that means Shining Boys Jyotinagar will go into the bat first. So that final time for the day number 1, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you.
Dhanyawad Satish. So the last match of the day one of BPL Season 3 2023 is now going to start between Shining Boys Jyoti Nagar versus Jai Panjirel. And in this match, Jai Panjirel, after won the toss, they elected to field first. And because of that, their fielders are now spread out on the field. And the openers for Shining Boys are Vishal and Charan, the openers. The first ball of the last match of the day one of Baithurli Premier League 2023 Season 3 is now coming up. Charan the striker, Harshit the Charan the striker and Harshit the bowler. And the first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर पहुंची. नो बॉल का इशारा, रन के लिए दौड़ पड़े, खतरा हो सकता है यहाँ पर. और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास और रनआउट के रूप में विकेट गिर चुका है. नो बॉल का भी इशारा हो चुका है और एक रन के साथ उनका खाता शुरू हो चुका है और एक विकेट भी पहली गेंद पर गिर चुका है रनआउट के रूप में. इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड द बैट्समैन चरण इज नॉट डिपार्टेड. और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, तो सचिन का आगमन यहां पर होता हुआ और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार विशाल. और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए. हर्षित फ्री हिट गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा. वाइड गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर. फ्री हिट बरकरार और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर. एक विकेट के नुकसान पर 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. हर्षित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और गेंद को खेलने में चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन बल्लेबाज को नहीं मिला. 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द फर्स्ट ओवर. अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. हर्षित गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑन साइड पर उछाला. गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद. एक रन बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले कि लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे फील्डर. बल्लेबाज के पास समय था 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल सके दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. गेंदबाज हर्षित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और फाइन लेग की दिशा में शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची. रन के लिए 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए थे लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद वहां पर फील्ड की जा चुकी है शॉर्ट फाइन लेग फील्डर द्वारा. हर्षित एक बार फिर से तैयार. ये गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को कट करना चाहा और वाइड इस वक्त देते हुए अंपायर ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और वाइड के रूप में 1 रन उनके खाते में जुट चुका है. अभी भी अपनी सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए गेंदबाज हर्षित. और इस बीच ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को खेला. इंप्रोवाइजेशन करते हुए थर्ड मैन की दिशा में गेंद बढ़ती हुई. दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और दूसरा रन यशस्वी तम यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं. और एक बेहतर स्ट्रोक इस रिवर्स शॉट के जरिए इस वक्त खेला था. गली फील्डर की बाईं ओर से गेंद निकली और डीप थर्ड मैन पर जब तक दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करते फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. अगली गेंद के लिए तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा स्क्वायर ऑफ द विकेट. ऑफ साइड पर इनसाइड आउट क्रिकेट खेलने का प्रयास किया था चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन से नहीं मिला. हर्षित फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में नॉन स्ट्राइकर पर थ्रो लेकिन बल्लेबाज 1 रन पूरा कर चुके हैं. वाइड का इशारा. 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. एक लंबा ओवर इस वक्त प्रगति पर हर्षित का. अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट. गेंद को खेलना चाहा, अपना संतुलन को खो बैठे, वहीं पर बैठ गए और लेकिन रन बल्लेबाज को इस गेंद पर नहीं मिला. ओवर की समाप्ति. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड. प्रोलॉन्ग ओवर केम टू एन एंड फ्रॉम हर्षित. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर मिक्स स्टार्ट for Shining Boys Jyoti Nagar against Jai Panjirel. And the last match of the day one of BPL 2023 season 3, they made 8 runs
ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ा खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची, फील्डर वहां पर गेंद तक पहुंचते हुए दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला इस वक्त स्ट्राइकर रन पर थ्रो पहुंचा। अब जब तक विकेट कीपर इस वाइड थ्रो को कलेक्ट करते हुए विकेटों को इस वक्त गिरा है और बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन प्राप्त करने का। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ सुनील गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट सचिन के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज को वंचित करने के बाद रन्स नहीं मिला बल्लेबाज को और इस बीच अगली गेंद लेकर सुनील दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद स्वीप करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और सुनील अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, मिड विकेट के फील्डर को इस वक्त शॉट एक्स्ट्रा कवर पर तैनात किया जा रहा है और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ऑन साइड पर उछालना चाहा और इस बार प्लम इन फ्रंट और गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद उनके पैर पर टकराई, उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में और इसी के साथ दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। विशाल की पारी समाप्त, दूसरा विकेट गिर चुका है 11 रनों के योग पर। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दीक्षित इस वक्त गेंदबाज का सामना करने के लिए तैयार नए बल्लेबाज के रूप में और गेंदबाज सुनील गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। नए बल्लेबाज दीक्षित इस वक्त सामना करते हुए ओवर की अगली गेंद सुनील की, राइट आर्म ओवर द विकेट। हियर ही बॉल्स इस बार चेक द शॉट, जस्ट चेक द शॉट एट द लास्ट मोमेंट, अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था और गेंद को खेल दिया इस वक्त सीलिंग मिडाउन पर जहां पर खुद गेंदबाज गेंद को आकर फील्ड करते हुए। लास्ट बॉल लेफ्ट और रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर सुनील इस वक्त तैयार। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, फील्डर मौजूद, क्लीन कलेक्शन, एकमात्र रन मिलेगा। Just a single he got in the final delivery of the second over and over completed 2 overs completed and after completion of 2 overs still the batsmen of Shining Boys Jyoti Nagar searching for the right track. It's 12 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. 2 overs left in overall calculation in their innings. शाम के 6 इस वक्त बज चुके हैं। इट्स ऑलरेडी 6 o'clock इन द इवनिंग और धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है मैदान से, लगभग अंधेरा सा यहाँ पर छाता हुआ और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी मैदान पर कम होती हुई और इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट बीपीएल बैतुरली प्रीमियर लीग 2023 सीजन 3 का 16वां और अंतिम मैच 16th एंड फाइनल मैच ऑफ द डे नंबर 1 ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। In fact, the score is 13 now. 13 for the loss of 2 wicket, 2 overs completed. और तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद पहली गेंद है सचिन की, गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक फॉर द बैट्समैन और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स नाउ इन द ओवर नंबर 3rd इन प्रोग्रेस और गेंदबाज सचिन ने एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और वो ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार सचिन के लिए। तो सचिन गेंदबाज और सचिन बल्लेबाज, तो सचिन के लिए इस वक्त अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया, इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और थोड़ी सी झिझक के बाद जब तक गेंद को फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ
15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। सचिन फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट बल्लेबाज दीक्षित के लिए, और इस बार बेहतरीन गेंद, and he just got the rid of the batsman. So third wicket fallen, and it's 15 for the loss of 3 wicket now. Dixit departs. तो सचिन एक बेहतर गेंद के जरिए, एक बेहतरीन गेंद के जरिए विकेट प्राप्त कर चुके हैं दीक्षित का, और तीसरा विकेट गिर चुका है इस वक्त, जबकि स्कोर है 15 रन। नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ, नंबर 333 की जर्सी इस वक्त पहने हुए, 3 टिक्कियों की जर्सी इस वक्त पहने हुए, वेयरिंग नंबर 333 जर्सी। ही इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, अगेन ऑन साइड पर उछालना चाहा, गुड वन फ्रॉम द बॉलर, और गेंद पर स्ट्रोक्स लगाने में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 1 more run added to the total in the face of extras, and with that single run the scoreboard moving up to 16 for the loss of 3 wicket. शशांक द स्ट्राइकर, और सचिन ने गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, केप्ट लोअर एट द लास्ट मोमेंट, इनफैक्ट इट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, 2 for आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और इस बीच वाइड घोषित करते हुए अंपायर, और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और अपनी ओर की अगली गेंद सचिन, इस बीच bowled out, absolutely fantastic delivery, pitching right on the block hole, and this is an absolutely perfect Yorker length delivery bowled by the batsman. He just got the rid of the batsman, and the score is now 17 for the loss of 4 wickets. So the score is now 16 on the board, and 4 wickets lost, and so lofted this time into the gap, not very well. In fact, he's got a single for that stroke, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। It's 17 for the loss of 4 wicket at the start of, in fact, second over has been came to an end, third over has been came to an end. 3 overs completed, 17 runs on the board, 4 wicket lost, and last over remaining in their innings. So last over is now going to start in their innings, और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए हमसे दूर वाले चोट से किशोर गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हुए, और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त शाइनिंग बॉयज ज्योति नगर की पारी में, और जय पंजरेल की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए किशोर। फर्स्ट बॉल, एंड दिस टाइम बीमर डिलीवरी, and it's a no ball, free hit delivery for the batsman now, and the scoreboard moving up to 18 with that single run. और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद इस बार flighted, just gone for off, not succeeded, the ball stuck to his leg, in fact it's a leg by declared by umpire. Single run added to the total, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 19 for the loss of 4 wicket, 5 deliveries now remaining in their innings. Dilly again, dispatched in a style over long on fence for a huge one. Sachin, the batsman, who hit a 6 in this delivery, just rocked on the back foot, and just transferring his weight onto his back foot at the last moment and hit that one firmly, and he's got the distance at last. 6 रन इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं सचिन, और इस छक्के के साथ
स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर. इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. और किशोर अपनी ओर की तीसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. इस वक्त गेंद बाय बॉल्ड आउट. इस बार सफल होते वन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई सीधे मिड लेग स्टंप पर जा टकराती हुई, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ यह विकेट सचिन का यहां पर गिर चुका है. तो 3 गेंदे फेंके जा चुके इस ओवर में, 3 गेंदे और फेंके जाने बाकी उनकी पारी में. 25 आता. So 3 balls remaining, and again here the bowler bowls. Next one, lofted in the air. This could be a chance for the fielder, and he took the catch. In fact, the bowler himself took the catch going towards to seal it off, and because of that good catch, 1 more wicket is now back into the pavilion. It's 25 for 5. It's 25 for the loss of 6 wicket, and it's going to be 2 balls remaining. Hat-trick गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज किशोर तैयार. Kishore is on a hat-trick now. Hat-trick deliveries comes from him. Driven down to long on, और फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा. दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित 1 रन के साथ संतुष्ट हो चुके हैं, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर. So the last ball of their innings is now coming up. Kishore bowls to the right-handed batsman. ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा. 27 now. The scoreboard is now moving up to with that single. Still the last ball remaining. और किशोर गेंदबाजी करते हुए अंतिम गेंद, बेहतर गेंद, absolutely good one, and run out happened at the striker end. So the innings is up, and the stipulated 4 overs completed of Shining Boys Jyoti Nagar. 27 they managed to score in the stipulated 4 overs. 28 the target for J Panjirel. They have to score for victory in the stipulated 4 overs with the required run rate of exactly 7 runs per over. 28 in 24 delivers. That means in 4 overs they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं जय पंजिरेल के बल्लेबाज 28 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं. 28 the target for them. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई, तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आज अंतिम बार for the last time in this day, I'd like to invite my close friend Mr. Satish in English to continue the commentary procedure in the last session of today. और एक छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम उपस्थित होंगे. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much, Gopi. So we are coming back to the last innings of the day number 1 of this prestigious BPL Baithurli Premier League 2023, which is proudly organized in this most beautiful Panjirail Stadium, Kudupu. And tomorrow will be the second day of this cricket tournament and decider day of cricket tournament. And we will start tomorrow also in the same time. And tomorrow, amazing Konguru Warriors takes on Temple Square Strikers in their first match, so that I request both the teams to be reported in a time. The 7:45 they need to report. 8 o'clock will going to start the second day and final day of this cricket tournament. Hello, check mic, check. So 28 is going to be target. The first ball outside the line of off stump and going for a little bit correction. That ball is missing everyone because of that wide outside the line of off stump and wide signal by umpire. Couple of runs has been taken. And coming back to these two teams, as far as the team Shining Boys, Jyoti Nagar, of course, they're chasing, they're defending the total, and Jai Panjirel, they're chasing 28 to win this match. Again, outside the line of off stamp, going for the drive,
They missed it completely because that was a one more wide. Back-to-back two wide deliveries. And coming back to the team, Shining Boys, Jyoti Nagar. Of course, Shining Boys, Jyoti Nagar. They're playing. They almost they're shining very well because of three matches. They won two matches. They lost one. They're playing their fourth match. This time again the white. This is not a good start. This is not a good start here from Shining Boys Jyoti Nagar because the bowler little bit struggling to get his line and length, and Kiran bowled three consecutive wide deliveries. As far as Jai Panjarel is concerned, and they won their first match. Second match they lost. Even third match also they lost against Jai Vasuki, and they're playing their fourth match, and it's going to be a more important match here for Jai Panjarel. But Jai Panjarel, I think. Jai Panjarel, the bowlers did a great job, and batters have to complete the job. Again, the fourth wide of this over, absolutely disaster. This is a wide number 4 or 5, wide 4, or altogether 5 runs, which is scored. Lucky there. And this is a slow throw, Gopi, but a previous one, when you has got a mic in your hand, I observing that one fielder is hitting the stumps very hardly, but still belts which is not uprooted. That means I think disaster continues here in this particular non-Saiga Zen. This time it's going to be a chance, and the fielder not missing the opportunity. At last, Kiran has just got a breakthrough here after that a shackling start in the first over. The 4 consecutive wide deliveries. Then is bowled 2 very good deliveries to follow that. 3 good deliveries. And over number first is in progress, chasing 28 to win this match. It's 6 on the board. 6 for the loss of 1 wicket. The wicket number first, which is back into pavilion. Kishore trying to hit the big shot, but under in this light condition evening, there's no wind at all in the ground. It's very difficult to get the distance, especially in the in front of the wicket. Long off and long on. Balled him, cleaned him up. What a fantastic comeback here by the bowler. Kiran nip back. That ball is nipped back into the batter, and batsman has no clue whatsoever. Absolutely, it's a zapper. Right, that ball is in the line, and the slightly deviating coming into the batter. And even that was more than the deviation, I think, beaten by the quickness of the ball. Absolutely got a great deal of pace in that ball. And batter has got no clue at whatsoever. Clean him up. The wicket number 2, which is back into pavilion. The good comeback from the bowler point of view. 6 for the loss of 2 wicket. Balls beautifully balled. Perfect. Oh, what a fantastic feat of fielding. Just like I mentioned about, this is a ground is meant for some diving fielder who got some gymnastic work, athletic work, and they are definitely going to enjoy that. The condition of this cricket ground, absolutely greenery, the grass which is covered, and very much suitable for diving. And again, outside the line of off stump, and beautifully bowled, and over number first completed after completion of first over, chasing 28 to win this match. Team Jai Panjarel are 6 on the board, and Gopi, very interesting in this particular over, I want to mention, because before bowling 1 legal delivery, he conceded 4 runs in the form of wide, but after that he conceded only 2 runs and picked up 2 valuable wickets. That means a good comeback as far as the bowler's point of view.
एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर पहले 4 वाइड जब उन्होंने फेंके थे तब ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि कम से कम 10 से 12 रन वो प्रदान करेंगे, लेकिन उसके बाद बाकी के 5 गेंदों में उन्होंने बेहतर कमबैक किया और सिर्फ 2 रन प्रदान किया और पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर है। और सतीश, ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त मैच का जहां तक विजय का सवाल है, मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है यहाँ पर। Well, Gopi, absolutely. It's evenly poised because of bowler strongly back into this game and in the first over. And the start of the over number second is a similar start in the second over as well. The problem continues even for Bharat as well. He starts with the wide, the warm-up delivery of the evening. One more addition. Scoba Namuzan to 7 on the board for the loss of 1 wicket. Again, that ball is well within the reach of the batter. Misjudgment by the batter. He thought it might be a wide, but that ball well within the reach of the batter, so that maybe umpire asking wicketkeeper to not gather the ball in front of stumps. And here is again right arm over the wicket ball. So driven that one, nice looking drive down to extra cover region, but there is a protection. The longer fielder have to run across his left to field the ball. Ample time for the batter to complete that couple of runs. With that couple of runs, Koban moves on to Scoburn moves on to 9 on the board. Sachin got a very important couple of runs from his bat. Bharat, right arm over the wicket balls. This time, very good delivery. Oh, both of it looks like there's a little bit hesitation for the run there. And the ball just passing around his legs of Sachin. Good comeback. And Manoj Krishna Bharat bowls with some extra pace in his bowling. And the much important dotted delivery bowled. Again, wicket keeping absolutely fantastic, but the line which is not good enough. The ball which is bowled by the bowler, of course, he's got fantastic delivery, which is with a lot of pace, but line is not good, and umpire rightly so called it wide. With that wide, Scoburn moves on to 10 on the board, 18 more runs required for the victory, and over number second is in progress. Bharat once again searching for the right track. Absolutely one of the best tournament, I want to say, BPL, Baithurli Premier League 2023 Season 3, which is organized in its most beautiful venue. That is Panjirail Stadium here in Kudupu. This time he lofted and he got the distance. And that was a magnificently struck there by Sachin. Little bit wind which is blowing in the direction of square leg and mid-wicket region, and with the direction of the wind, ball travels towards a mid-wicket boundary for a 6, and with that 6 score jumps into 16 on the board. That means just 12 more runs required for the victory. That 6 will really change the complexion of this game, and Sachin desperately wanted to get that runs what is required, because just like I mentioned earlier, Jai Panjirail is a very important match for them after they lost to 1-1 match. Oh, that was a good one, but it's a too late. It's a too late, might be, because after that 6, it looks like the Panjirail are back into this game. And 2 overs completed after completion of over number 2, chasing total score of 28 in this match. It's 17 on the board, and Gopi 1-6. It really changed the complexion of this game, isn't it? And what a shot that came from the bat of Sachin, especially in the evening. It's not so easy, but he's got height. At the same time, a little bit wind is blowing in the mid-wicket region, and he got the distance for that cricketing stroke. Exactly, सतीश, यहाँ पर जो छक्का सचिन के बल्ले से लगा था वो छक्का निस्संदेह यहाँ पर जय पंजरेल को इस मैच में वापस ला चुका है। 11 रन इस ओवर में बने सतीश, 11 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, और मैं कहूँगा बिकॉज ऑफ दिस ओवर दे आर बैक इनटू दिस मैच, और यहाँ पर कैच होने की संभावना और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है, और स्ट्रोक को अंतिम क्षण में उन्होंने चेक किया था और गेंद हवा में उछली और मिड ऑन फील्डर गेंद को इस वक्त लपकते हुए और यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है। तो सतीश, इस वक्त द ओनली वे रिमाइंस, यहाँ पर एक ही रास्ता बचा हुआ है इस वक्त विकेट उखाड़ने का और डॉट गेंदें फेंकने का। इस वक्त जहाँ तक सवाल है गेंदबाजों का, शाइनिंग बॉयज ज्योति नगर का, और यहाँ पर उन्हें कम बैक करना है, तो इस वक्त डॉट गेंदें ही फेंकने और विकेट उन्हें उखाड़ने होंगे। Absolutely, Gopi. If you want to shine, the shining boys have to pick the wickets, and rightly so. And he is a man, I think Vishal, he got ability of picking up wickets because it's a different bowling action. Of course, he can produce some wicket for his team. And just like you mentioned, the only way is left here for shining boys to pick the wickets and put some break on the run. Beautifully bowled. That was beaten by the pace and perfect delivery to ball to the fresh leg.
because whenever the new batters coming to the middle, I think is the right time for the opposition team to tighten up the screws. Again, Vishal bowling right arm over the wicket, balls went for the save. One more dotted delivery, much required dotted line. Now the equation 11 required in 9 balls. This has been a fantastic. Now Panjarel, after they got a 6, looks like they are completely controlled over this match. But Vishal wanted to take this control over the opposition so far. Right arm over the wicket balls. This time I went for the big shot. This time they're going for the single. And they will going to get very easily in that single. The leg by call by umpire with that single score Namuzan to 18 on the board. That means that 10 required from 8 balls. 10 required from 8 balls. It's going to be anybody's game. Still is a shining boys are really trying to shine in this dark condition. Of course, not that much of huge dark. Still, the condition of light is so good, but the condition of the game is looks like it's a very interesting and excitement is still left in this game. Right arm over the wicket balls. Divan bowler's back drive down to deep longer, but not more than a single. Sachin is looking so confident, and you know exactly his appearance. Sachin is back into pavilion already, and Ganesh as well as the batter. Sandeep, the 2 batters out there in the middle, try to get some runs for their team. So now it's a good over there from Vishal. The last over remaining. Total score is 20. That means 8 runs required for the victory. And Gopi, it's a good over. And Vishal, absolutely, we are mentioning about, you are also mentioned about the one way left for the team of Shining Boys is that need to bowl 1 good over. And I think Vishal has produced that good over. Now, last over remaining, 8 runs required. And in this condition, Gopi, इन गेंदबाजी की सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए. ही कंसीडर्ड जस्ट 3 रन इन दिस ओवर. 8 रन बनाने 6 गेंदों में. और जैसा कि आपने कहा सतीश, इट्स कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन. और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. ये गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और कैच को लपकने में सफल. और यहां पर सतीश अब ऐसा कहना पड़ेगा, द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग. 8 रन चाहिए 5 गेंदों में और चंद और डॉट गेंदे इस वक्त जय पंजीरेल को इस मैच पे अपनी पकड़ मजबूत करने पर मजबूर कर सकते हैं. और यहां पर कमबैक करना है तो एक करारा स्ट्रोक चौका कम से कम इस वक्त लगाना होगा यहां पर बल्लेबाजों को. Absolutely, Gopi. The slowly turning around because of that catch. I just mentioned his condition is not that much of suitable for the batter to get the big shot because that distance, which is I think it's not easy, especially in the evening. Sachin, right arm over the wicket, ball to new batter. One more dotted delivery. Now definitely it's going to be a pressure situation here for the batter because 8 required from 4 balls. Sachin, right arm over the wicket, balls. This time outside the line of off time, going to be a punishable from umpire. So one more extra in this condition, producing a wide, producing extra delivery means he was asking for trouble. The scoreboard moves on to 21 on the board, 7 required and remaining 4 balls. Sachin, right arm over the wicket, balls. Once again the wide. What Sachin is doing here. Actually, the batter need to be a little bit pressure, Gopi. But here is unfortunately the bowler is feeling the pressure. I don't know why, because after bowling a very good 2 deliveries, he started to feel the pressure and he bowled 2 consecutive deliveries. Now 6 required in 4 deliveries. Sachin bowls again. Appeal for leg before wicket. Umpire unmoored. They're going for the single in the form of leg by. 5 required. 3 balls remaining. The batter back on strike. Sandeep is a good striker of the ball, and wait and see how we'll go into face Sachin. So far Sachin bowled very well, excluding that 2 wides. Yes. But a job which is not yet over. Here is Sachin again. Right arm over the wicket, balls to Sandeep. Sandeep drives that one. Again, opportunity for Vishal. Absolutely athletic work. You know exactly he wanted to get the wicket in the form of run out. And he got the wicket as well. That wicket brought Shining Boys strongly back into this game because the total score is
23 means 5 runs still required from 2 balls, and Gopi, that run out will take fielding team Shining Boys back into this game. एग्जैक्टली सतीश, बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए शाइनिंग बॉयज ज्योति नगर के अब 2 गेंदों में 5 रन बनाए। हालांकि 2 वाइड जब फेंके थे सतीश, तब कमबैक कर सकते थे उसके बाद के 2 गेंदों में, लेकिन बल्लेबाजों ने कमबैक यहां पर नहीं किया बाद के 2 गेंदों में और सिर्फ 1 रन बनाने में सफल। अब 2 गेंदे 5 रन। अब ऐसा कहना पड़ेगा जय पंजीरेल को इस वक्त कम से कम 1 चौका यहां पर लगाना होगा इस मैच में कमबैक करने के लिए। फिलहाल तख्ता इस वक्त भारी लगता हुआ शाइनिंग बॉयज ज्योति नगर के सतीश, लेकिन मौका जरूर इस वक्त जय पंजीरेल को इस मैच में कमबैक करने का। 5 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 2 बॉल्स। देखते हैं क्या होता है सतीश। Absolutely, there is one ball which is extra ball there in that region. I request umpire to please take that one. We will go into confusion if the ball is coming that direction. Fielder have to see which ball he need to pick, and that's what umpire have to take that ball. Now left-hand batsman is on strike now. Prashant is a left-hand batsman. Can he able to do the job here for Panjarel? Oh no, not. Wicketkeeper fails to collect the ball. It will go into big miss because the 4 required for the last ball, and the last option here for the batter Sandeep. His jersey number is 4, Gopi, and his team is required 4 for the victory. Can he able जर्सी नंबर भी 4 है जिस तरह आपने बताया, और उनको चाहिए भी 4 रन। और अंतिम गेंद पर देखते हैं बल्लेबाज चौका लगा पाते हैं नहीं। Here we go, the last ball comes of their innings. Absolutely. Now, last delivery, decided delivery, do or die situation here for Sandeep. Sachin have to ball 1 good delivery and 1 big shot which is required. Rewarded one, doors of mid-wicket region. They complete a single, looking for the 2. In comes the throw. Vishal, no, it's going for the 3rd. This is a running race. This is a running race between wicket keeper as well as the batsman. At last, Vishal winning the race against the fieldsman. Shining Boys winning.